ಅನಿಲ್ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ರೂವಾರಿ ಅವರ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ. ಸ್ಯಾಂಡಿ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಹಾಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾನೆ ಲಾರಾ ಡಿಜೆ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ the two teams will going to play the inaugural match, Sarvagni cricketers as well as band house. So my request before the start of this match is going to be an inaugural ceremony. Anil, the corporator of Panjimugeru, will going to inaugurate this match tournament. ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ವಿಶ್ವಂಬರ ಮೂರ್ತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಶುಕ್ಲಂ ಭರದ್ರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನ ವದನ ಜಾಯತೆ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತ. ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅನಿಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯ. ನಾಯಕರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೌಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. The introduction of the players of band house. They will going to play inaugural match. ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ. ಇದೀಗ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಉರ್ವಾ, ಯತಿನ್ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So all the best for both the teams. Please play with the true spirit of the game. And before that, Anil Kumar will go into inaugurate. Here is officials. Of course, leading from the front, Harish Padel, Zampire, Suresh Modabidri, and Shriniket, Satyaprasad, and myself, Satish, and along with me, Gopi, in our national language as a commentator. So here is the first ball, the inaugural delivery. How nicely played, beautifully played that one. And a straight drive, one of the most beautiful stroke to play as Eloisius D'Souza bowls to Anil. Lofted that one quite beautifully over the head of the bowler. And very good start there by Anil. Thank you very much, Anil. Now Anil will go into ball to Eloisius D'Souza. Quite nicely played, defensively played by Eloisius D'Souza. Wide outside the line of off time, going for the cut shot. Down the legs and try to flick that one. So thank you very much.
Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. I request two teams captain. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ನ ನಡುವೆ ಬರಬೇಕು. ಅನಿಲ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೌಸ್ Godwin, all the best Godwin, and captain of Sarvagni Cricketers, please come forward. So before going to this match, I would like to remind you the rules and regulation of this particular cricket tournament. 6 hours format of the games. Each team will going to play a 6 hours match. Please play with the true spirit of the game. Captain Yatin, Sarvagni. Captain. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಾಯಕರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಯಾಕೆ ನೀಡಬೇಕಂದ್ರೆ 11 ಮ್ಯಾಚ್ ನಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಬೇಕು. ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. 5 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ 2 ವೀಲರ್ಸ್, ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಹ 2 ವೀಲರ್ಸ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
Hello. So all set now for the first match of the day, number one of this most prestigious cricket tournament in the name of Jacks Trophy 2022, and two captains are in the middle, and in the present of the chief guest for this cricket tournament, Anil Kumar, along with the two umpires, they will go in to toss the coin. The three umpires are in the middle: Harish Patel, Suresh Mudabidre, and Sriniket. And captain of Sarvagni cricketers, Yatin, is out there, and the captain of Bandhouse, Godwin, is present in the middle of the pitch. After explaining the rules and regulation of this cricket tournament, all set now for the tossing ceremony of the inaugural the match. So shaking hand here, the best wishes for both the teams for the start of this cricket tournament, and each and every team wanted to start with the positive start they wanted to get. All the best for both the teams, and after explaining the rules and regulation of of this cricket tournament, and yes, the toss is going on. Toss is won by captain of Sarvagni cricketers. Captain won the toss, I think so. Yatin won the toss, and wait and see what he will going to decide, whether he going to bat or field first. So Yatin won the toss, and I think he will going to decide to the field first. 6 overs format of the games. Certainly the winning team wanted to chase the total rather than depending the total. I think it's a best option. So thank you very much. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಪಂಜಿಮುಗೇರ್ ವಾರ್ಡಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ Anil, the corporator of Panjimugeru, who spent his important time for this inaugural ceremony of prestigious Jacks Trophy 2022. So this cricket tournament is played under the great leadership of Aloysius D'Souza. Done all hard work to make this possible in this most beautiful venue, and the ground which is covered with the nature beauty. We can see that behind this cricket ground, the Cooler Bridge is passing here. The rivers, Gurupura River, which passing behind this cricket ground. Looks to be very fantastic view of this cricket ground, with greenery out here in the both the side around the grounds. And we are hoping for one more successful cricket tournament in this most beautiful venue. Jacks Trophy Panjimugeru 2022. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದಂತಹ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಸೆರೆಮನಿ. ಸೊ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ Aloysius D'Souza as well as on behalf of all organizers and cricket lovers, we would like to give special thanks to Anil Kumar. And Aloysius D'Souza will go in to present the memento for Anil Kumar, being the chief guest for this inaugural ceremony. Thank you very much, Anil Kumar, and we are hoping for your support for throughout the tournament. Thank you. So all set now for the day number one, first match. Two umpires walking towards the middle. Harish Patel, along with him, Suresh Mudabidre, two most experienced umpires out there in the middle. Excellent officials panel for this cricket tournament.
I request extra player from both the teams, please report here in commentary box immediately. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತನದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಯುವರ್ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದೆ 12th ಮ್ಯಾನ್. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ತಮ್ಮ ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ತಾಗಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಜೀವನ್ ಗುಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ Anish will going to take the strike. Pass ball right on the money, beautifully bowled, equal well played by the batsman. All along the push, went for the single, directed, appealed for run out, but no damage done. Suresh Mudubi, the umpire, knows that batsman quite easily completed that single. Even the direct hit, the batsman completed that quick single. So good start, a positive start from Anish. He's picked up a single. Anish picked up a single, and that brings Prakash D'Souza. Prashant D'Souza, in fact, will going to take the strike. There is a fieldsman there in the short backward point, short cover point, short mid off, deep long on, deep long off, deep backward square leg. This time beautifully played down, chip that one quite deliberately, quite safely down to deep long off before Sujit will going to collect the ball down at deep long off. Batsman got ample time to complete the single. 2 without loss of any wicket. Prashant also off the mark with a single. Jivan. Right arm over the wicket. This time again outside the line of off time. Batsman going for the off drive. Hits the ball pretty hard into the ground. So that before that short cover point fielder will going to collect that one. The batsman got ample time to complete the single. Both the batsmen are dealing with the singles. 3 without loss of any wicket. Jivan balls. Drives that one powerfully. Oh, this time chance of run out. Again the throw is not up to the mark. The left hand fielder there in the short mid-on region collects the ball, try to hit the stumps, but both the batsmen has got a very good understanding between the wicket. Anish and then Prashant has got a good understanding between the wicket, so that no hesitation at all to complete the quick single. So 4 deliveries and 4 singles. Jivan bowls. Again, one more single. Good cricket from both the batsmen. The perfect start from opening batsmen. The 5 deliveries and 5 singles. So Bandhouse got a positive start in the 5 deliveries of 5 singles came. Last delivery of the over. First dotted delivery of this over as Jivan bowled little bit outside the line of off time. Batsman going for the cover drive. Missed it completely. The first over completed after completion of first over. After winning the toss, Sarvagni cricketers captain elected to field first. Bandhouse, they got a steady start with the 5 without loss of any wicket. So welcome to the Jacks Trophy 2022. Not only the cricket lovers here in this most beautiful cricket enjoying the game of cricket, but even through live telecast, Mangalore media having the very good live telecast of this cricket tournament. And those who are missing to come here to watch this cricket tournament, they can watch in your mobile by subscribing the Mangalore media. You will get live telecast of this Jacks Trophy 2022, one of the most prestigious and
quality YouTube channel Mangalore Media having a live telecast with some very good technicians and cameramans doing their great job for the success of this cricket tournament. Second over, right arm over the wicket, balls. Appeal for leg before wicket, but looks like quite optimistic appeal coming from wicket keeper behind the stump. No, exactly, the ball is going down the leg stump. Ball is doing too much. Nip back into the batsman, try to push that one on the offside region, missed it completely, and batsman picked up a single for that. Vijay is the bowler. One more very talented, energetic player for the side of Sarvagni cricketers. Vijay bowling right arm over the wicket. Oh, what a delivery that one. Quite a different one. Good collection there from Yatin behind the stumps. Extra bounce in that occasion. And Hanish tried to play that one on the offside region, but not quite able to get the ball to his bat. And because of that extra bounce there from Vijay. Bowling right arm over the wicket, past the umpire. Down the leg stump. It's a little bit experiment there from Vijay. Of course, not an easy job. Yesterday played a 30-over format of a game representing Hanuman cricketers at UCG cricket ground. So that the fitness level always going to be challenging. Now he's bowling right arm over the wicket. Past umpire Arish Padil. Beautifully bowled. Excellent delivery. Good line. Again, batsman Hanish not quite able to judge the line of the delivery. And now I think he is in trouble. Prashant, this is a little bit correction. Prashant D'Souza, the batsman. Vijay having a problem. Hamstring injury is always the big problem for the players in the present cricket when you're playing regular cricketers without any rest. And it's not definitely going to be a big challenge. Right arm over the wicket. Oh, beautifully bowled. That was excellent delivery there from Vijay. Right on the money, right on the target in that occasion. But Prashant not really going to the pitch of the delivery. Looking for the big shot. Lost his patience. Tried to break the shackle, but not quite able to read the line of the delivery. Missed it completely. And Vijay strikes with beautiful delivery. The first wicket is back into pavilion of Bad House. Prashant is a batsman, is back. Out for two. Little bit struggling after ball played 2-3 dotted deliveries. All in sudden, the batsman started to feel the pressure. That's all happening in cricket. Because this is a 6-over format of the games. No other option at all for the batsman. And at least they have to rotate the strike if they wanted to get the good score on the board. Once he played 1 or 2 dotted delivery, then all in sudden the batsman looking for some big shots, and that is the right time for the bowler to bowl a very good delivery, good line and length. That's the real result that came for Vijay as he picked up a big wicket. So new batsman in is Lishant. Oh, mix up, chance of, oh, bad throw, absolutely bad throw. Where could be a chance of run out because of the fielder as making a little bit urgency. That one converted into 2 now for the run out chances. Missed out. Looking for the direct hit. And 2 more runs to the batsman as well as for Bandhouse. And scoreboard moves on to 9 on the board for the loss of 1 wicket. Vijay again. Oh, what a delivery. Right on the block hole. Again, the fielding is not up to the mark. The misfield there by the square leg fielder. The 2 opportunities is created in that last 2 deliveries in the form of run out, but fielding is not up to the mark of Sarvagni. So that very good over there for Vijay. Successful over. The wicket in that over. So altogether 2 overs completed. And after completion of 2 overs, Bandhouse are 10 for the loss of 1 wicket. The run rate progressing exactly 5 runs per over. And wait and see how many runs they will going to score in this remaining 4 overs. For the latecomers, you are watching this most beautiful, most prestigious trophy, the Jacks Trophy 2022, wonderfully organized by Jacks Panjimugeru under the leadership of Aloysius D'Souza. And after that inaugural ceremony inaugurated by Anil Kumar, the corporator,
of Panjimugeru inaugurated this cricket tournament, and you are watching this day match number 1, the inaugural match of the day number 1 of this Jacks Trophy 2022. Lishant and Anish, the batsmen are in the middle. Ganesh will go into ball a third over of the innings of Bad House. Ganesh bowling. Pass on by Suresh Murbe balls. Ball starts with a big wide. And one declared might be, I think so, 1+1. Umpire 1+1, right? Yes, 2 runs added to total because that was declared area behind the stumps. Ganesh balls. Batsman going for the big shot again, not quite getting hold of that one properly. The intention is to clear the mid wicket. But as the fact that the ball is not really coming into the bat of the batsman, is a little bit early into the strokes, mistiming it. Addition to the total, and with that single scoreboard moves on to 13 for the loss of 1 wicket. Ganesh again. Bowling with a short run up. Pass umpire Suresh Murabidri. Balls again the wide. This is a really highly indisciplined bowling performance there from Ganesh, struggling to get his line and length. They all are the bonus run for a Band House. They will going to enjoy this extra runs. So important in limited over matches to contain these extras. The wides and no balls will going to play a big role in the result of a game. As much as you bowls extra, then problem always going to be created when you're going to chase those runs when you are batting second. Definitely these all runs are be counted. Ganesh again searching for the right track. Bowling right arm over the wicket bounce. Going for the big shot outside edge of the bat. Declared area. Might be a 1. The batsman have to retain the strikes because that ball went in the declared area behind the wicket. One more addition to total. Runs are coming very freely in this over. Already 5 runs came from that over of Ganesh. The 15 on the board for the loss of 1 wicket. Oh, this time lofted that one. Didn't quite getting hold of that one. Fielder underneath it. And Sujit couldn't manage to take the catch because of the direction of the wind is opposite. So that's why it's a very, even though the batsman Lishant hits that one, Hanish hits that one firmly, but not quite able to time against the direction of the wind. He hits that one. That's why he didn't got that much of distance what he was looking for. Dotted one there from Ganesh. Good comeback. Alright, on the middle stump, batsman looking for extra cover drive. Quickly, that ball is nipped back into the batsman so that he couldn't manage to get that timing what he's looking for. Ganesh again. Right arm over the wicket, he bows. This time he's lofted. Again, the ball is landed in the no man area. Looking for the second. Oh, that was a clever piece of running between the wicket. Excellent thinking. Saying that the fielder in the deep long off, Sujit, little bit slow to move towards the ball. And non-striker quickly realizing that there is opportunity of couple of runs. And he runs quickly. And because of that, they made that couple of runs quite easily in the end. 19 for the loss of 1 wicket. Ganesh again. Bowling right arm over the wicket. This time chance of run, and again not quick enough to stop the single. One more addition to total. And scoreboard moves on to 20 now after completion of over number 3. So 3 overs completed. After completion of 3 overs, it's 20 on the board. Bandhouse looks very good, comfortable in the middle. The 3 overs they got a 20. And run rate is almost a 6.33 runs per over. And wait and see how many runs they will go into score in the remaining 3 overs. And before that over will go into commence, it's time to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language. In the welcome, Gopi, and good morning to you. And after a long break, I think so. And after that, third wave of COVID-19, Gopi, it's once again good news to
for the cricket lovers. Once again, the activities of cricket activities is almost taking a charge, and after that long break, it's nice to see the cricket, and especially in Jack's Trophy 2022, which is wonderfully organized by uh, Aloysius D'Souza, and it's a wonderful opportunity for the talents out here in Panjimugeru to lift the prestigious cricket tournament, Jack's Trophy 2022. Welcome, Gopi, and good morning to you. बिल्कुल सतीश, जैसा जैसा कि आपने फरमाया, सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला जैक्स ट्रॉफी 2022 2022 के अंतर्गत, और इस श्रृंखला का पहला मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ। उछाला इस वक्त मिड विकेट पर, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन आखिरी मौके पर गेंद को वो लपकने में असफल। मेरे ख्याल से धनराज फील्डर थे वहां पर, जिन्होंने जीतोड़ कोशिश जरूर की थी गेंद तक पहुंचने की, लेकिन आखिरकार गेंद को वो पकड़ नहीं पाए। और जहां तक का सवाल है रनों का, तो इस गेंद पर रन्स मिले 2 बल्लेबाज को, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 22 रनों पर। यह गेंद उछाला है डीप मिड विकेट, सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। हनीश के बल्ले से यह छक्का इस वक्त लग चुका है, ऐसा कहना पड़ेगा। जस्ट कॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एंड लॉफ्टेड दैट वन इन स्टाइल ओवर डीप मिड विकेट फेंस फॉर 6 रन्स। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्ट्रक, और इस छक्के के साथ वो अपने इरादों को और यहां पर बुलंद कर चुके हैं, और स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 28 रनों पर। बेहतर गेंद थी, इस बार गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए, और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन से यहां पर नहीं मिलेंगे। और गेंदबाज की यह गेंद अच्छी गेंद थी, गेंद को इस बार फिर से खेला जरूर, लेकिन बैक टू द बॉलर की दिशा में है। रन एक बार फिर से बल्लेबाज को नहीं मिला, और एक बेहतरीन वापसी छक्का प्रदान करने के बाद यहाँ पर गेंदबाज कर चुका है। ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा इस बीच नहीं, वाइड को वापस ले लिया गया है। आई थिंक इट्स गॉट अ बैड ऑफ दैट, बल्ले का शायद बाहरी सिरा वहां पर टकराया था, और रन इस वक्त रुक चुके हैं 28 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। तो एक बेहतर साझेदारी दूसरे विकेट के लिए यहाँ पर बनती हुई हनीश और लेशांत के बीच, और खासकर हनीश जो कि एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर देते हुए इस ओवर में एक छक्का भी वो झड़ चुके हैं, और एक बेहतर स्थिति में इस वक्त नजर आता हुआ। बैंड हाउस कुलूर 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज एक बार फिर से, ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस वक्त गेंद को खेलना चाहता, चूंकि गेंद सीधे टकराई स्टंप्सों पर, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए, आखिरी मौके पर गेंद को खेलना चाहता, और चूंकि और गेंद सीधे उनके मिडल और लेग स्टंप पर जा टकराती हुई, तो एक बेहतर पारी पर पर्दा यहां पर गिर चुका है हनीश का, और दूसरा विकेट यहां पर खो चुका है बैंड हाउस कुलूर। कुल मिलाकर 17 रन हनीश ने बनाए एक छक्के की मदद से। एक बेहतर पारी खेलने के बाद वो पेविलियन वापस से यहां पर लौट चुके हैं, और 28 रनों पर दूसरा विकेट यहां पर खो चुका है बैंड हाउस कुलूर। नए बल्लेबाज मंजुनाथ एज ए नंबर 4 बैट्समैन फॉर बैंड हाउस कुलूर is now at the crease, और जीवन तो जीवन इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, 2 ओवर का खेल बाकी उनकी पारी में। पहली गेंद, इस बार गेंद को खेल नहीं पाए ठीक तरह से, और विकेट कीपर यतीन ने गेंद को दाईं ओर जाकर फील्ड कर लिया, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। और ये गेंद इस बार उछालना चाहा आगे आकर, लेकिन आखिरी मौके पर गेंद को कनेक्ट करने में असफल। 1 रन उन्हें जरूर मिला, लेग बाई के रूप में गेंद उनके पैरों पर टकराई थी, और 1 रन के साथ स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट।
एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर होता हुआ इस वक्त बैंड हाउस कोलूर। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, जीवन की गेंद है, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए रन के लिए दौड़ पड़े, रन आउट हो सकता है लेकिन थ्रो काफी धीमा, और इस बीच वाइड का भी इशारा और 2 रन एक्स्ट्रास अतिरिक्त के रूप में उनके खाते में जुड़ते हुए 31 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। रन्स इस वक्त आसानी के साथ बनते हुए बैंड हाउस कोलूर के लिए, और जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, एक बेहतर स्कोर की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ बैंड हाउस कोलूर। जीवन एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद उछालना चाहा, गेंद मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, 1 रन मिलेगा जब तक शॉर्ट कवर पर गेंद को फील्ड किया जाता, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 32 रनों पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स नाउ। जीवन एक बार फिर से ये गेंद अंदर की ओर आती हुई गेंद को खूबसूरती के साथ इस वक्त निकाला है मिड विकेट पर, ऑफ द टॉस, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यहां पर रन आउट हो सकता है, और यहां पर विकेट कीपर का निशाना बिल्कुल स्टंप्सों पर सही बैठता हुआ, और इसी के साथ रन आउट के रूप में तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। जोखिम भरा रन, दूसरा रन पूरा करना चाहा था लेकिन नागरी मौके पर दूसरा रन पूर्ण करने में असफल, और मेलविन आउट होकर पेविलियन वापस यहां पर लौटते हुए, और कुल मिलाकर 32 रनों के ऊपर तीसरा विकेट खो चुका है बैंड हाउस कोलूर। तो नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद जीवन की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। जॉय इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में, तो मंजुनाथ माफ कीजिए नए बल्लेबाज, और जीवन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार अंदर की ओर आती हुई गेंद को मोड़ा इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में गेंद जाती हुई, और गेंद इस वक्त 1 रन बल्लेबाज को इस गेंद पर मिला, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर यहां पर पहुंच चुका है 34 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 34 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस इन बैंड हाउस कोलूर इनिंग्स। जीवन एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, इस बार पैरों पर गेंद टकराई, प्लम्ब इन फ्रंट, और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। मंजुनाथ की पारी समाप्त। थोड़ी सी सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहता, गेंद लाइन पर टिप्पा खाकर मिडल स्टंप को केंद्रीकृत कॉन्सेंट्रेट कर कराते हुए, और अंपायर सुरेश मूडबिद्री को कोई दिक्कत ही यहां पर महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। तो विकेट नंबर 4 यहां पर गिर चुका है 34 रनों के ऊपर। एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट मैंगलोर मीडिया द्वारा यहां पर किया जा रहा है इस श्रृंखला का, और कुल मिलाकर इस श्रृंखला का पहला मैच यहां पर खेला जाता हुआ यतिराज और मैदान की बाईं ओर जो कि कैंटीन इस वक्त लगा दिया गया है, और मेरे दरख्वास्त है सर्व खिलाड़ी और क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से कि वहां पर वो अपना उपहार ग्रहण कर सकते हैं पैसे चुकाकर। और ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। अंतिम ओवर यहां पर शुरू हो चुका है उनकी पारी का। तो गेंदबाज ये गेंद उछालना चाहा, गेंद बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े, एंड मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचने में सफल। हालांकि 3-4 कदम आगे जरूर दौड़ आए थे, लेकिन एंड मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए देखा कि गेंद गेंदबाज की दिशा में पहुंच चुकी है, और गेंदबाज का थ्रो पहुंच रहा है स्ट्राइकर एंड पर। रन से बल्लेबाज को यहां पर नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 34 रनों पर, 34 फॉर द लॉस ऑफ
4 विकेट्स। और गेंदबाज ये गेंद उछाला लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन नहीं, 3 फील्डरों के बीच इस वक्त गेंद टिप्पा खा चुकी है और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट मिड विकेट बट द बॉल फेल इन द सेफ एरिया। और जहां तक सवाल है रनों का, तो 2 रन यहां पर बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 36 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। लिस्टन इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए, ये गेंद उछाला है लॉन्ग ऑन पर और आसान सा कैच लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथों में। गलत प्लेसमेंट और भुगतान उन्हें करना पड़ा और 5वां विकेट यहां पर गिर चुका है। इट्स 5 विकेट्स डाउन, इट्स 36 फॉर 5। NFC Kuppepadau will takes over Bandar 11 in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ NFC ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಹಾಗೂ ಬಂದರ್ 11 ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು। जॉय का आगमन हो चुका है इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर। यह गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को छोड़ दिया इस वक्त ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकल रही थी और इस बीच वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 37 रनों पर। 37 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। ये गेंद अच्छी गेंद, बेहतर गेंद थी, अपील, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से कुछ हद तक बाहर की ओर निकलती हुई नकार दिया सही तरीके से पर हरीश पटेल ने और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर। 38 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अंतिम गेंद उनकी पारी का लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार रहा। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। ये गेंद ड्राइव किया मिड ऑन पर, फील्डर वहां पर मौजूद, डाइविंग स्टॉप, लेकिन 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े लेकिन नहीं मिलेगा, रन आउट हो चुका है और इसी के साथ द इनिंग्स इज अप फॉर Bandhaus Kulur. They finished with 39 for the loss of 5 wickets in the stipulated 6 overs. And now they set a victory target of exactly 40 for सर्वाग्नि उरुवा और सर्वाग्नि उरुवा को इस वक्त बनाना है 40 रन निर्धारित 6 ओवर में। और जहां तक रिक्वायर्ड रन रेट का सवाल है exactly 6.66 runs per over. They have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और देखना यह है कि सर्वाग्नि उरुवा के बल्लेबाज इस 40 रनों के लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं। 40 द टारगेट फॉर देम। और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर चंद लम्हों बाद होगी। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ एक बार फिर से, जब सर्वाग्नि उरुवा की पारी की शुरुआत यहां पर होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू।
So thank you very much, Gopi. So welcome back for the innings of Sarvagni Urva. The target exactly 40 to win the match. The next match, NFC Kuppipado takes on Bandar 11. This is the second match of day number 1. So that I request the captain of NFC Kuppipado as well as Bandar 11. Please report to the commentary box immediately to sign the official chart. ಅಲ್ಲಿ NFC ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಹಾಗೂ ಬಂದರ್ 11 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್. ಸೊ opening batsmen came into middle for opening batter for Sarvagni cricketers. Pradeep and Dhanu, the two opener for the side of Sarvagni cricketers. 6.666 runs per over required on that. The first ball itself, positive start there from Pradeep there. Quite beautifully driven down to mid wicket there. Looking for the second, in comes a throw. And Dhanu is one of the excellent runner between the wicket, quickly charging for the second, calling his partner and responded very well by his partner as well. Even though that ball is went straight to the hands of mid wicket, but still they are able to complete that couple of runs. And especially the Dhanu is running towards a dangerous end. He's a very athletic and energetic player for the side, and not really missing the opportunity. Very slowness in the field, outfield. He will going to grab the opportunity to convert single into 2. This time beautifully driven that one. What excellent shot. Down to deep backward square leg. Long chase here for the fielder. They're looking for the third as well. Dhanu coming from the third. In comes the throw. What a good run in between the wicket. Once again, look at that way Dhanu is running here. Absolutely fantastic running between the wicket. Nicely driven there by Pradeep. And the bowler doing a little bit wrong line to ball around the legs of the batsman, dripping down the leg stump, and batsman takes the full advantage of that one. Quite beautifully driven down to deep backward square leg for a 3 valuable runs. So 2 deliveries, and they got 5 valuable runs from the far and Roshan balls. This time again, that was a sensible batting there from Dhanu there, coming back for the second. My goodness, can you believe this? He is unstoppable. I'm just talking about his energetic level is always very high. So Dhanu, famously known as a black tiger, very energetic, athletic, very gymnastic as well. And any slowness from the fielder, he will going to grab the opportunity to convert a single into 2, 2 into 3, and improvisation. That was a really good one there from Dhanraj again. Just a single this time. That was a declared area, so that the batsman have to retain the strike. So with that, single scoreboard moves on to 8 on the board. Very good start from this opening batsman. The first over itself, as Roshan tried his level best to stop the flow of runs, but altogether we can see that both the batsmen are really batted sensibly. Left arm over the wickety balls. This time going for the off drive. Again, not quite. There was a little bit collusion between the fielder. Fielder not really seeing that mid-off extra cover fielder, the mid-off fielder. But anyhow, just a single is taken there by the batsman. So with that single, scoreboard moves on to 9 on the board. This time, wow, what a shot. That will going to be a first boundary of the tournament. Yes, it does. Look at the way the Pradeep is hitting the ball. That was an absolutely brilliant shot indeed. Again, Roshan is not learning from the mistake. Every time he's tried to bring the ball around the legs of the batsman. And Pradeep is so strong off his legs. No way to miss the opportunity to dispatch that one to deep backward square leg boundary for 4. So with that, boundary score jumped into 13 on the board without loss of any wicket. A very good positive start there from opening batsmen of Sarvagni cricketers Surva. Especially the Pradeep is leading from the front, scoring 9 out of 14 runs. And then Dhanraj responded very well from other end. Is batting on 4. The bowler name please. Kevin brought into attack as after that expensive over ball by Roshan. Right arm over the wickety balls. Starts with the morning warm-up delivery.
far outside the line of half time. Nothing much to do with the delivery as Danu watching the ball still the last moment, and wicket keeper behind the stump did the rest. Umpire Arish Padil signal as a wide. One more wide. Nothing much change in that delivery. At the same line that far outside the line of off stump. Second wide of this over. Kevin a little bit struggling to get his line and length. This is the third wide. This time 1+1. Two more to the total, and Dhanraj will going to retain the strike because that was a declared area. So runs are really coming freely without bowling a single delivery. Kevin bowls conceded 4 valuable runs, and with that 4 or total it's 17 on the board for Sarvagni cricketers. Going for the slash. No need to run for that because that was a declared area. Outside the line of off time, got a thickest outside edge of the bat. Went towards the deep third man division for the declared area. One more addition to total scoreboard. Moves on to 18 on the board. That was a scoop he's trying for Dhanraj. But very interesting to see that for that scoop shot he will get only single, not more than a single. So with that single scoreboard moves on to 19 now. Oh my goodness, total misjudgment there from that fielder at cow point. And before that backward point fielder run back to field that one. The batsman got ample time to complete that couple of runs. Full toss outside the end of off ramp. Pradeep slashing that one. But fielder at cow point region I think is moving to his right instead of he's moving to his left. Misjudging the catch, resulting couple of runs. Appeal for leg before wicket. Looks like ball is going down the leg stump, missing the leg stump as well. So one more addition to total in the form of leg by. The runs are really coming very freely, and they're cruising towards a victory. Total score moves on to 20 now for the without loss of any wicket. Very good start given there by the two batters. 21 on the board for the loss of one wicket. Kevin. This again Pradeep looking for the second this time, and they made it quite easily before the deep backward square leg fielder. So run across towards the deep fine leg region, and with that couple of runs scoreboard moves on to 23. And I'm really impressed with Pradeep. It's not only the batting here middle, but he's just keeping the mind the run, how many runs they scored. And this time misjudgment. Pradeep thought that it might be a wide, but it's well within the reach of the batsman as Kevin finished that over. At last he managed to find the line what he was looking for in this particular over, but it's too late because they got already some runs in this over as well. Sarvagni cricketers are looking in a driver's seat. They're really in a commanding position, chasing 40 to win the match. Half of the job is completed in just 2 overs by these two opening batsmen. Really a positive start given by the two batters of Sarvagni cricketers, Pradeep and then Danu. 23 on the board. That means 17 more runs required for the victory in remaining 4 overs. Equation 24 deliveries. Arun brought into attack. The most senior, experienced campaigner for the side. They needed some breakthrough badly for Bandhouse if they wanted to back into this game. Oh, that was a beamer. No ball called by umpire straight away. Rightly so. Not only the no ball, but it's going to be a free hit delivery for the batsman. Batter, little bit correction. So wait and see how Danu will go and take the advantage of that free hit one. This time lofted, high up in there. Fielder is underneath it, but he will be going to be a safe. Coming back for the second. Oh, chance of run out, missed out. Arun, little bit absence of mind. Arun thought it might be a chance of run out in the non-striker's end, but he's not really observing the batsman in the non-striker's end. He's already left his crease for second, but Arun wanted to return that one into the hands of wicketkeeper. That's why Danu is survived. Oh, that was off the back foot. That punching that one, chance of run out, and rightly so. Umpire not interested. The Pradeep just made his ground in the right time. One more addition to total. With the addition of that single, scoreboard moves on to 26 on the board. And then 14 more runs required for the victory. Arun bowls. Danu, clever cricket there from Danu.
premeditated sweep shot before he delivers the ball. He's a little bit shuffled across the line of the delivery, allow the ball to coming into his bat, then closing his face of his bat, and picked up a single. 27 on the board. Arun searching for the wicket. Pradeep slashing that one right, not quite getting timing behind that cut shot, but picked up a single anyhow. No problem whatsoever as the rotation of strike is concerned. Runs are coming very freely as Arun once again back to his bowling mark. Right arm over the wicket. Pedal that one quite beautifully by Danu. Just a single, looking for the two. Look at that. That's why Danu is so special. Now the fielder is arguing that that was a declared area, so that no question of second. And Danu is just thinking about, I'm simply wasted my energy to get back for the second. He will get only single for that anyhow. The scoreboard moves on to 29 for the without loss of any wicket. This time again, wicket keeper. I think it's a great move there for wicket keeper. Seeing that batsman going for the sweep shot, he's quickly moving to his left to stop that single, diving, but still he not reached that ball. Batsman picked up a single. One more good over going in favor of Sarvagni cricketers. Urva are looking in a commanding position. They are exactly 30 on the board, and that's just a 10 required for the victory in remaining 3 overs. I think some miracle bowling required here for Band House if they wanted to back into this game. And Gopi, it was a positive start from the opening batters of Sarvagni cricketers, Danu and then Pradeep. So very impressed to see that the two different kind of batsmen. Pradeep is looking a little bit aggressive, and Danu is looking in a defensive. This is what the kind of opening pairs required, isn't it? Just like in early cricket, then Virendra Sehwag starts with Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar a little bit in a defensive frame, and Virendra Sehwag is in an offensive frame of mind. And these two batsmen, I think, done a good job in first 3 overs. Absolutely, Satish. These two batsmen are playing very well. और जहाँ तक सवाल है, जिस तरीके की आरंभिक शुरुआत की ज़रूरत थी, वो बेहतर आरंभिक शुरुआत यहाँ पर दे चुके हैं प्रदीप और धनु, और निश्चित रूप से अपनी टीम को मंजिल की ओर वो अग्रसर करते हुए, जैसा कि एक बेहतर उदाहरण आपने दिया, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग जिस तरीके से आरंभिक बल्लेबाजी किया करते थे भारत के लिए, उस तरीके की बल्लेबाजी का प्रदर्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है प्रदीप और धनु के जरिए। और जहां तक का सवाल है, इस वक्त दबाव पूरी तरह गेंदबाजों के ऊपर, और इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला डीप एक्स्ट्रा कवर पर, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। बेहतर स्ट्रोक प्रदीप का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर। 34 नाउ फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट। इस बार पुल किया, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पुल दिस टाइम, बट आई थिंक नो बॉल, और बीमर के तौर पर यह गेंद फेंकी थी इस वक्त। नो बॉल इस वक्त अंपायर द्वारा घोषित। 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल, एंड द स्कोर बोर्ड इज नाउ 36 for the loss of no wicket. 36 without loss. This is an absolutely outstanding progressing year for them. ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड 47। NFC ಕುಪ್ಪೆ ಪದವು ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ದಯವಿಟ್ಟು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ से बाहर, वाइड 38, just 2 to get now। एक बेहतरीन आरंभिक साझेदारी यहां पर बनते हुए ये गेंद उछालना चाहा, और गेंद स्टंप्स को इस वक्त टकरा कर निकल चुकी है, और इस बीच फ्री हिट गेंद थी, तो इसकी वजह से यहां पर बल्लेबाज बच चुके हैं और 1 रन उनको मिल चुका, और इस 1 रन के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड। जस्ट 1 to get now for Sarvagni Urva, 39 without loss। That's it. Comprehensive victory by 10 wickets for Sarvagni Urva, defeating Bandhouse Kulur in the inaugural match of Jacks Trophy 2022, which proudly organized by Jacks Panjimugeru. And with that victory, they are through to the next round of this tournament. और जहाँ तक अगले मैच का सवाल है, NFC कुप्पे पदों का मुकाबला होगा बंदर 11 के साथ अगले मैच में, और वो मैच चंद लम्हों बाद यहाँ पर शुरू होगा। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक
हम हाजिर होते हैं खुद मेरे साथ जब अगले मैच की शुरुआत होगी एक छोटे से अंतराल के बाद. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू. धन्यवाद. ಅಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಒಂದನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಣವನ್ನು ತೆತ್ತು ತಮ್ಮ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಲ್ಲಿ NFC ಕುಪ್ಪೆಪದವು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಡೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ದಯವಿಟ್ಟು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕಡೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು
NFC ಕುಪ್ಪೆಪದ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ NFC ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಹಾಗೂ ಬಂದರ್ 11 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ದಯವಿಟ್ಟು.
ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುತ್ತಾ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಬೇಕಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 10 ಕೈಗಳು ಸೇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಕೂಲೂರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನರೇಂದ್ರ ಕೂಲೂರು ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜ ಇವರು ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ಕೂಲೂರು, ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ರೂವಾರಿ ಇದೀಗ ನೆನಪಿನ ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸೊ congratulations, thank you very much Narendra Kulur for your cooperation for the success of this cricket tournament, and Aloysius D'Souza is welcoming him for this wonderful cricket tournament, and we are looking for your same support throughout the tournament. So Bandar 11 takes on NFC Kupepadau. The second match of the day, number 1 of the prestigious Jacks Trophy 2022. The first match, which is won by Sarvagni Urva, comprehensive victory over Bandhouse. Chased down 40 runs quite easily without losing any wicket. And we are inching towards the second match between NFC Kupepadau versus Bandar 11. Thank you. I request two teams captain, please report in front of dais for the tossing ceremony. I request the captain of Bandar 11 as well as captain of NFC Kupepadau. Please report here for the toss.
NFC ಕುಪ್ಪೆಪದ ಹಾಗೂ ಬಂದರ್ 11 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎರಡು ತಂಡದವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೋತ್ ಟೀಮ್ಸ್. I request the captains of Bandar 11 and NFC Kuppevada to please report to the stage immediately for toss. SFC ಪಕ್ಕಲ್ಪಾದೆ ಹಾಗೂ ಅಮರ್ ಜ್ಯೋತಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಮರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಗೂ SFC ಪಕ್ಕಲ್ಪಾದೆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಆಕಲು ఆయన తెత్తది గొబ్బేరా ఫస్ట్ పనుపు నమ్మ గొబ్బుజ పంతేరు ఐదు ఆరు చేసి బండి 5 నిమిషాలు ಅಲ್ಲಿ NFC ಕುಪ್ಪೆಬದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಡೆ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕಡೆ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು NFC ಕುಪ್ಪೆಪದ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
So NFC Kuppe Badav, after won the toss, they elected to field first against Bandar 11, and the match number 2 of the tournament. In fact, match number 2 of Jack's Trophy 2022 is now coming up live and exclusively just in front of you within just a short while. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಮರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಗೂ SFC ಪಕ್ಕಲ್ಪಾದೆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರ್ 11 ತಂಡದ ಇತರ ಸದಸ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು.
So Shahrukh, the striker, and the first ball of the match is now coming up. डाउन द लेग साइड, लेग स्टंप से बाहर और वाइड के इस रन के 7 रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। बंदर 11 के लिए 2 रन बिना किसी नुकसान के इन वाइड के 2 रनों के साथ, और स्कोर इस वक्त 2 रनों पर रुक चुका है। और एनएफसी कुप्पेपदो ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है, और बल्लेबाज इस वक्त बंदर 11 के बल्लेबाजी करते हुए गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ, गेंद स्पिन होते हुए डीप कवर पॉइंट पर जब तक गेंद को फील्ड करे फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन न प्राप्त करने, ऐसा कहना पड़ेगा। नॉट क्वाइट मिडलिंग इट द लास्ट मोमेंट, और लेकिन भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की गेंद खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए, और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। गेंदबाज ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त लिमिट ऑफ पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर। तो दोनों बल्लेबाज अपना खाता खोल चुके हैं, शाहरुख और अफरीद, जबकि आसिफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, एक बार फिर से वाइड घोषित अंपायर द्वारा, और 2 रन, 1 + 1 2 runs now added to the total. Official umpires श्रीनिकेत और हरीश पटेल जो कि इस मैच के लिए अपना अंपायरिंग का किरदार यहां पर निभाते हुए, और गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त नॉट क्वाइट मिडविकेट, रन के लिए दौड़ पड़े तेजी के साथ, रन मिलेगा जरूर। इससे पहले कि शॉर्ट कवर के फील्डर अपने आगे की ओर आकर जब तक गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन न प्राप्त करने का। 7 रन बिना किसी नुकसान के, निस्संदेह एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त जरूरत है बंदर 11 को। ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, गेंद पहुंची सीली मिड ऑफ पर, और इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। बाएं हाथ के बल्लेबाज शाहरुख इस वक्त सामना करते हुए आसिफ की गेंदों का, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए शाहरुख के लिए रिवर्स शॉट गेंद को खूबसूरती के साथ निकाला 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर राउंड की पारी का यहां पर प्रगति पर, और शाहरुख एक बार फिर से बल्लेबाजी यहां पर करते हुए आसिफ की गेंदों का सामना करते हुए, ये गेंद, ओह दैट इज एन एब्सोल्युटली गुड वन, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, गेंद की रफ्तार को समझ नहीं पाए, और गेंद लगभग ऑफ स्टंप से कुछ दूरी पर निकलती हुई आखिरी मौके पर बेहतर गेंद के जरिए ओवर की समाप्ति यहां पर कर चुके हैं गेंदबाज, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक बेहतर शुरुआत बंदर 11 कर चुका है 8 रन बिना किसी नुकसान के, 8 विदाउट लॉस ऑफ कंप्लीशन ऑफ first over scored by Bandar 11 after being losing the toss and put it to bat by NFC Kuppepado in the match number 2 of Jacks Trophy 2022 in this beautiful ground। और जहां तक का सवाल है दूसरे ओवर का, तो देखना यह है कि दूसरा ओवर यहां पर कौन शुरू करने वाला है। तो जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया, गुरुपुर नदी के तट पर यह मैदान जो कि यहाँ पर काफी सुंदर सा मैदान यहाँ पर, और एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला यहाँ पर खेली जाती हुई जैक्स ट्रॉफी 2022 के नाम पर। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, यह गेंद अच्छा बेहतर स्ट्रोक नहीं, लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिलेगा। गेंद लगभग बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद शॉर्ट थर्ड मैन पर जब तक फील्ड हो, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। और जैक्स पंजीमगेरू ने इस बेहतरीन श्रृंखला का यहाँ पर आयोजन किया है, और यह श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करते हुए मैंगलोर मीडिया पर एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है इस श्रृंखला का। यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, लेकिन 1 रन बल्लेबाज को जरूर मिलेगा इससे पहले किसी लिमिट ऑन पर जब तक गेंद को फील्ड कर लिया जाता, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, 10 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर, और गेंदबाज दाहिना तो ऊपर विकेट, यह गेंद ऑन साइड पर, गेंद को उछालना चाहता आखिरी मौके पर, चूके पूरी तरह, और गेंद लगभग टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। अफ्ताल एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, इस बार बेहतर गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद, और गेंद को छोड़ा
कि शायद ये वाइड हो सकता है, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। ये गेंद उछाला इस वक्त मिड ऑफ पर, फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद निकलती हुई इस वक्त, और जब तक गेंद को पीछे की ओर जाकर वो फील्ड करे सीमा रेखा के अंदर, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। गेंद को उछाला था इस वक्त और मिड ऑफ 20 गज के दायरे के अंदर जो फील्डर थे अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए उन्होंने गेंद को लपकना चाहा, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर रहा और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर रहा, गेंद को उछालना चाहा और इस बार फॉलो थ्रू में गेंद को लपकने में सफल अपनी दाईं ओर जाते हुए गेंदबाज आफरीद थोड़ी सी सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, लेकिन गेंद आखिरी मौके पर उनके टॉप एज पर टकराई और अपने फॉलो थ्रू में अपने दाईं ओर जाते हुए इस कैच को लपका गेंदबाज अफ्ताल ने, और इसी के साथ ये पहला विकेट यहां पर गिर चुका है बंदर 11 का 12 रनों के ऊपर। 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एंड द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस फॉर बंदर 11. And just talking about the next match, Amar Jyoti will take over SFC Pakalpade in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. और यहाँ पर नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ अफरीद नए बल्लेबाज के रूप में, और इस वक्त वो सामना करने के लिए तैयार रहा और गेंदबाज अफ्ताल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है। सुबह के 10:45 यहाँ पर बज चुके हैं और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी इस मैदान पर बढ़ती नजर आती हुई, भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए। तीसरा ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ उनकी पारी में 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 12 रन, एक बेहतर ओवर पिछले ओवर में अफ्ताल ने फेंका था, सिर्फ 4 रन उन्होंने प्रदान किए थे, एक विकेट भी अंतिम गेंद पर उन्होंने प्राप्त किया। बातिश गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए, फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए, और अफरीद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। बातिश की गेंदों का दाइनात राउंड द विकेट, पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर। इट्स 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर इन फैक्ट। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाइनात राउंड द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप से एक बार फिर से बाहर की ओर गेंद फेंकी थी गेंदबाज ने, और इस बीच वाइड का इशारा एक बार फिर से अंपायर द्वारा। 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर इन फैक्ट व्हाट आई टोल्ड यू बिफोर। और अगली गेंद लेकर इस वक्त बातिश तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार गेंद को चिप किया, गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर पर, कोई फील्डर वहां पर नहीं, और जब तक वाइडिश लॉन्ग ऑफ से फील्डर दौड़कर आगा डीप एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर। एक बेहतर प्रगति यहां पर करता हुआ बंदर 11 टॉस हारने के बाद एनएफसी कुप्पे पदव द्वारा पहले बल्लेबाजी पर उतर आता हुआ 16 रन अब तक जोड़ चुका है। तीसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला, विकेट गैप पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यहां पर रनआउट का खतरा, और इसी के साथ मैं समझता हूं यहां पर विकेट गिर चुका है। तो यहां पर देखने वाली बात है कि गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी थी, 1 डिक्लेयर्ड के रूप में या नहीं। वन डिक्लेयर्ड, और इस बार बल्लेबाज बच चुके हैं और 1 रन घोषित इस वक्त किया गया है, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 17 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 1 डिक्लेयर्ड, 17 for the loss of 1 wicket in the over number 3rd in progress. तो दाहिने हाथ राउंड द विकेट बातिश एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, और अफरीद
सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार ऑफ द टोस, एब्सोल्युटली परफेक्ट वन, ड्रिवन दैट वन ऑफ द टोस टर्न टू डीप मिड विकेट। कलाइयों के सारे खूबसूरती के साथ गेंद को मोड़ा था अफरीद ने, और जब तक गेंद को डीप मिड विकेट पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज इस वक्त तैयार, बातिश अफरीद ऑफ द स्ट्राइक इस वक्त हो चुके हैं। शाहरुख इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए, और इस बार कुछ ज्यादा हद तक लेग से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी गेंद, और सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा, सही निर्णय, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 18 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। एक साझेदारी पार्टनरशिप की इस वक्त सख्त जरूरत है बंदर 11 को, अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो। और बातिश दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद थी, परिवर्तन के तौर धीमी गेंद, और गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहता चूंकि, और इस धीमेपन पर चकमा खा गए बल्लेबाज, स्ट्रोक्स खेल नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। बातिश एक बार फिर से तैयार शाहरुख के लिए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त मिड ऑन की दिशा में, रन मिलेगा 1, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर। तो पहले ओवर में 8 रन बने, दूसरे ओवर में 4 रन, और तीसरा ओवर जो अभी भी समाप्त हो चुका है जिसमें 7 रन बने। कुल मिलाकर 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति। आधा सफर यहां पर तय हो चुका है। 3 overs completed, 19 for the loss of 1 wicket after halfway, scored by Bandar 11, and now in overall calculation it's going to be 3 overs remaining in the innings। 3 ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं इन 3 ओवर के खेल में उनकी पारी में क्या क्या होता है। और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Gopi. So 19 on the board. Bandar 11 are looking pretty strong in the middle. As far as the run rate is concerned, they're going just over 6 runs per over. And they got 9 wickets in hand. And from the far end, it's going to be a start of the over number 4. Starts with the delivery, which is outside the line of half time. Wicketkeeper fails to collect the ball. And by call by umpire, rightly so. So one more addition to total. With the addition of that single, scoreboard moves on to 20 on the board. And 20 for the loss of 1 wicket. Quicker one in the negation there from the bowler Asif. Asif has got one fielder in the short third man, one at deep cover point, one at short mid off and long off. Deep long on wide mid wicket, the deep backward square leg down the leg stump, going to be a wide. This is a really a bad line to bowl. Asif far away down the leg stump. Not only the extra run, extra delivery has to bowl. 1 + 1, 2 more to the total. With the addition of that 2, scoreboard moves on to 22. That ball went in the declared area so that the batsman will going to retain the strike. Afreed, the very young talented player for the side of Bandar 11. Afreed, very young talented, very energetic player for the side, and he will going to face next delivery there from Asif. Asif bowling round the wicket with a short run up past the umpire Arish Padil. Right arm around the wicket he bowls. Beautifully played that one off the toes. He flicks that one off his legs down to square leg region for the single. A nice looking flick there from batsman Afreed in the negation, because that ball little bit dripping down to his legs, and immediately the wrist work comes into play to flick that one for a single. This time, chance here for the fielder to... Oh my goodness, he dropped the catch. This is a straightforward catch. The catches win the matches. It's a great slogan in cricket. If you miss the catch, you have to miss your chance of winning the match as well. This is what you need to be very careful. Dropping the catch, giving life to the batsman's always going to be a trouble. Went for the reverse sweep. This time, of course, ball just passing under the bat of Afreed, so that there is no question of any run. No contact with the bat. Score remains at 24 on the board for the loss of 1 wicket. Asif bowls. That was a sensible, absolutely sensible batting there from Afreed. Just timing the ball. Oh, chance of run out is gone. Afreed is gone. This is unnecessary. There is a very difficult to get a couple of runs in the negation, because Afreed, of course, they plays the ball very well. But fielder in the deep cover point is very quick to react to that throw, which is very quick throw coming from the fielder in the deep. That's why Afreed
He's a little bit short of his crease. And umpire Shiniket at square leg has got no hesitation in his mind to raising his finger. The wicket number 2 of Bandar 11 is back into pavilion. Quite unfortunate for Afrid after scoring 6-5 valuable runs. Is back into pavilion. 6% correction is back into pavilion. And scoreboard is remains at 25 on the board for the loss of 2 wicket. So new batsman. Just number 99, Arif. So very hot morning, very bright sunny morning out here in this most beautiful Panjimugeru cricket ground. Here in Kulur. We can see that the vehicles are passing in a very historical bridge, the Kulur bridge. And Gurupura river is passing behind this cricket ground. One of the most beautiful view of this cricket ground. Even though very bright shine, but you can see that strong breeze out here as well as giving some kind of relaxation for the fielders, players. This time again opportunity is created for the run out, but short mid off fielder not up to the mark in that occasion. He missed the ball completely from his hand and batsman got ample time to complete the single. So Asif completes a good over actually. Of course he bowled some extra, but still he managed to tighten up the screws in this over. So after completion of over number 4, it's 26 on the board, Bandar 11. 26 for the loss of 2 wicket. 6.25 runs per over is the run rate progressing here for Bandar 11. They need to be very careful, Bandar 11, how much runs they wanted to get in the remaining 2 hours. Setting a target is so important when you're batting first, because they're just seeing the result of the previous match. The 40 runs is chased down quite easily by Sarvagni cricketers under 4 overs. They scored that runs. But different side, you cannot say anything. You cannot compare that the result of the previous match, because all depends upon your bowling department. How much could you have bowling and fielding department? The first ball is nicely bowled, beautifully bowled. Quicker one outside the line of off time. Perfect delivery for the right-hander batsman. Just nip back into the batsman with a great deal of pace, and there is no possibility of any run. This time sensible batting. And quickly batsman realizing that it's very difficult to play the strokes on this particular delivery. Then he's just implementing that strategy of playing the sweep shot down to short fine leg division. And with that single scoreboard moving now 27 for the loss of 2 wickets. Beautifully that one, played that one, slashing that one outside the line of off stamp. They're running hard, looking for the second. In comes the throw, but they completed a couple of runs quite easily in the end. Very difficult to get the distance, especially in this particular ground, because in the morning to afternoon, the opposite direction, the wind is passing. So in front of wicket, it's getting a big shot. It's always going to be not that much of easy for the batsman. Again, this time opportunity. The throw is not good. One more opportunity is missed out by the fielding side. NFC. Kupe Padau is not really getting that much of the bowlers not getting that much of help from the fielding departments. So many opportunities missed out in the form of run out. And one more addition to total scoreboard moves on to 30 on the board now. Oh, wicket keeper done a fantastic job. In a fraction, he collects the ball, completes the job. Really good work there from wicket keeper behind the stump. At the same time, an excellent piece of bowling there from the bowler. Aftal generating a lot of pace. Understandable, because he's getting some help from the direction of the wind. He's passing towards river side, so that he's getting some extra pace in his bowling. Again, quicker one. This time batsman flicks that one off his legs for a easy single, but there is no contact with the bat. By call by umpire Shiniket. And with that single, scoreboard moves on to 31 on the board.
31 for the loss of 2 wicket. Completion of over number 5. Just over 6 runs per over. The run rate is progressing here. So now Fall is brought into attack. The new bowler, the fourth bowler, has been introduced. Shahrukh is a batsman still there in the middle. Batter, in fact, he's been a opening batter for the side. Left-hand batsman came into middle, still hanging there in the middle. And now he's dealing with the last and final over of their innings. Now Fall bowls. This starts with a wide delivery down the leg stump. There is a fieldsman there in the back step, so that no question of any extra run. But certainly it's a 1 run in the form of wide. And with that wide, scoreboard moves on to 32 on the board for the loss of 2 wicket to Bandar 11. Now Fall bowls. This time full toss, but mistiming it. The fielder underneath it takes a very good catch. The fielder inside the ring, just going back 2-3 couple of steps back, and judgment is fantastic in the derogation, spot on to dismiss the wicket of Shahrukh. And the left-hand opening batter is back into pavilion of Bandar 11. The wicket number 3 of Bandar 11 back into pavilion. But he played a very important knock of 8 runs, Shahrukh. But he is not really happy with himself, because this is the one delivery he wanted to dispatch over extra cover, as he was mistimed that one. Ball ballooning up in the air, and just number 15, who is standing at backward point, takes a very good catch. Afrim is the new batsman is in non-strikers, and again Naufal bowls. Batsman going for the big shot, mistimed it. Excellent piece of bowling there from Naufal. Quickly is just finding his line and length. Scoreboard now moves on to 33 for the loss of 3 wickets. Amar Jyoti takes on SFC Pakal Pade. So I request both the team's captain and the players, please report here in committee box immediately to sign the official chart. The overthrow, what could be a certain single, they got a couple of runs. They're looking for the third as well. No one there in the non-strikers end to collect the throw. That's why the batsman's quickly interesting for the third as well. But they are going against that one. So couple of runs, very valuable couple of runs. Scoreboard moves on to 35 now. Arif facing Naufal. Round the wicket, right arm. Again, going for the cut shot, mistiming it, looking for the 2. Then in comes the throw, chance of run out, easily done. They have to look for everything, because they're dealing with the last over. They have to run for that. Didn't got that much of enough runs on the board. That's why they're trying their level best to get some runs on the board in the final over. By doing that, wickets are back into pavilion. Arif is the batsman, batter is back into pavilion in the form of run out. The new batter came to middle is Samir Safwan. So far 36 on the board. So far Naufal, after he got first ball as a wide, but he quickly finding his line and length in this final over. Not really settling the batsman for the big shot with this great excellent line and length. Afrim will going to face down the leg stump. This is the second wide of this over. 1+1, 2 more to the total. All we can see that these runs are very, very important for Bandar 11. They're getting some bonus runs in the final over. 38 now. Naufal.
Rolling his shoulder, bounce again across the line of the delivery. Hits that one down to deep backward square. A fumble from the fielder. They're looking for the second. In comes a throw, but not quick enough to stop the couple of runs. They're looking for the third as well. And this time, chance of run. Oh, the batsman almost is fell down. Tried to save his wicket, diving to his crease. Looks like the bat is stuck when he was trying to reach that one. And he's back into pavilion. The wicket number 4 is back into pavilion. The very valiant effort from that batsman, I will tell you. Because he wanted to save his wicket. Not in the form of save his wicket, but more than he wanted to get extra one run for his team. But quite unfortunately, it's short of his crease. And scoreboard moves on to 40 on the board. 40 for the loss of 5 wicket. Ali ದಯಮಾಡಿ ಅಮರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಗೂ SFC ಪಕ್ಕಲ್ಪಾಡೆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Last delivery this time. Good piece of fielding there by the field and behind the stump, but they're not quite able to stop the single from the batsman. They're looking for the second. Still, they're trying for the second, but not interested. Rightly so. So over number 6 is completed. Bandar 11 just completed their 6 overs quota, and similar score what in the which is got in the first match, the 40 target. Now it's 41 is the total score, and 42 will going to be a target for NFC Kuppepadav to win this match, and wait and see how well they will manage to get this 42 to win the match in a stipulated 6 overs. Meanwhile, I request Amar Jyoti as well as SFC Pakkalpade to report here in the commentary box immediately to sign the official chart. And please note that this is all are the local pools, so that as for the rules and regulation of this particular cricket tournament is concerned, no one player can allowed, especially the players playing for the top teams of South Canara will not have any chance to represent in this local pool. Please note, ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಗ ಲೋಕಲ್ ಪೂಲ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಮೇನ್ ಪೂಲಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಟೀಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಚರ್ಚೆಗೆ ಯಾವ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಘಟಕರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಪ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥ ಯಾವ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಈ ಲೋಕಲ್ ಪೂಲಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಮರ್ ಜ್ಯೋತಿ takes on SFC Pakkalpade, so that I request both the teams, please, without wasting any time, and sign your player's name in the official chart as soon as possible. Cooperate with the organizers. This is the second match is going on, so 42 is going to be a target. They bowled very well. Now they have to bat very well against Bandar 11. Wait and see how Bandar 11 will going to defend this total. I think it's a good total to defend. If they for that they need to bowl well, the field well, and wait and see. We're going to win this match. So we'll take a short break. After that short break, and Gopi, my friend Gopi, will going to echo the microphone in our national language, Hindi. Thank you. ಅಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. धन्यवाद सतीश. तो 42 रनों का लक्ष्य, 42 द टारगेट इन 6 overs for NFC Cooper Padao, set by Bandar 11 at batted first. They managed to score 41 runs in the stipulated 6 overs. And they set a victory target of 42 now for NFC Cooper Padao, and their innings now going to start. और पहली गेंद लेकर गेंदबाज अफरीम इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. एरिस इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. नॉन स्ट्राइकर एंड पर ताची इस वक्त मौजूद है. और पहली गेंद अफरीम की. एरिस के लिए ये गेंद हल्के से को चिपकी है इस वक्त. ओह एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, लेकिन आखिरी मौके पर गेंद को लपकने में असफल. अगर इस कैच को वो कन्वर्ट कर लेते तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन कैच यहां पर कहलाता था. लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा काबिले तारीफ डाइविंग उन्होंने लगाई थी. अंतिम क्षण में आगे की ओर छलांग लगाते हुए गेंद को लपकने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवशात गेंद को वो लपक नहीं पाए. लेकिन बेहतरीन प्रयत्न इस गेंद पर उन्होंने किया. एक रन बल्लेबाज को मिला और अगली गेंद स्वीप करना चाहा. बेहतर गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थोड़ी सी उछाल लेते हुए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. स्कोर रुक चुका है 1 रन बिना किसी नुकसान के. एक बेहतर शुरुआत की जरूरत इस वक्त एनएफसी कुप्पे पदाओं को. अगर उन्हें 42 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो निर्धारित 6 ओवर में. और बंदर 11 को एक बेहतरीन गेंदबाजी की शुरुआत की जरूरत है. ये गेंद इस बार बेहतरीन गेंद, स्टंप आउट का मौका, लेकिन आखिरी मौके पर इस मौके को गंवाते हुए विकेट कीपर रिवर्स शॉट खेलना चाहता और गेंद विकेट कीपर के हाथों में पहुंच भी गई थी, लेकिन इस गेंद को वो ठीक तरह से कलेक्ट करने में असफल. और एन मौके पर बल्लेबाज ने अपना बल्ला क्रीज पर वापस रख दिया. और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 1 रन बिना किसी नुकसान के. गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. तैनात राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, लेग स्टंप से काफी बाहर. वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. इस श्रृंखला का दूसरा मैच यहां पर खेला जाता हुआ जैक्स ट्रॉफी 2022 के अंतर्गत. ये गेंद स्वीप किया इस वक्त, पैरों पर गेंद टकराई, जोरदार अपील, लेकिन आई थिंक इट्स गॉट अ बैड ऑन दैट. गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ था और नहीं, गेंद पैर पर टकरा कर निकली थी इस वक्त. लेग बाय का इशारा और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के. एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए अफरीम अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. एरिस सामना करते हुए यह गेंद उछालना चाहा हवे में, फील्डर थोड़े से पीछे मौजूद शॉर्ट कवर पर. और इस बीच बल्लेबाज के पास समय था कि वो 1 रन के साथ अपने छोड़ को बदल सके. और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका 4 रनों पर पहला ओवर, जो कि यहाँ पर प्रगति पर. और अफरीम एक बार फिर से तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए खूबसूरत स्ट्रोक. फॉलो थ्रू में गेंद को पकड़ने में असफल. गेंदबाज जब तक गेंद को बैकअप किया जाता मिड ऑन पर, और बल्लेबाज के पास मौका था तेजी के साथ 1 रन चुराने का. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रन बिना किसी नुकसान के. मुश्किल सा मौका जरूर था फॉलो थ्रू में, और मैं समझता हूं उनके उंगलियों में कुछ हद तक चोट आई है गेंद को लपकते समय, गेंद को रोकते समय. और कुल मिलाकर पहले ओवर के समाप्ति के बाद 5 रन जोड़ चुका है इस वक्त एनएफसी कुप्पे पदाओ बिना किसी नुकसान के. 5 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर स्कोर्ड बाय एनएफसी कुप्पे पदाओ, चेजिंग the victory target of 42 in 6 overs. And now still they have to score 37 more runs for victory in remaining 30 deliveries. That means in remaining 5 overs, and the asking run rate is now gone up to exactly
7.40 runs per over. Still they got all 10 wickets kept intact. 10 wickets they got in their hand. And as far as the victory of this match is concerned, still I must say this match is now evenly poised. शाहरुख गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए दूसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ एनएफसी कुप्पे पदों की पारी में, और फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए बंदर 11 के कप्तान जैक्स पंजिमुगेरू ने इस शानदार श्रृंखला का आयोजन किया है। जैक्स ट्रॉफी 2022 के अंतर्गत श्रीमान एलोशियस डिसोजा इनके सारथ्य में, और ये श्रृंखला जो कि यहाँ पर एक शानदार प्रगति करते हुए, और शाहरुख ये गेंद ड्राइव किया, इस वक्त गेंद पहुंची मिड ऑफ पर, थोड़ी सी मिसफील्ड, बैकअप होता हुआ और बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पर थ्रो पहुंचा नजदीकी मामला, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। पहला रन पूर्ण करने के बाद दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, जो कि काफी जोखिम भरा साबित हो सकता था और जोखिम भरा साबित हुआ। इससे पहले कि नॉन स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज पहुंचे, सीधा थ्रो पहुंचता हुआ लॉन्ग ऑफ फील्डर का गेंदबाज के हाथ में, और गेंदबाज शाहरुख ने थ्रो को रिसीव करने के बाद तेजी के साथ विकेट चटका दी है, और पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। हैरिस आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए, और 5 रनों के ओवर पर अपना पहला विकेट खो चुका है एनएफसी कुप्पे पदो। इट्स 5 for 1, 6 for 1 in fact. तौसीफ नए बल्लेबाज के रूप में, और शाहरुख इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, बराबर का टक्कर यहां पर जारी, और दाहिने ओवर द विकेट, ये गेंद ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक, मिड ऑफ पर गेंद पहुंचे, और जस्ट इससे पहले कि गेंद को फील्डर फील्ड करके थ्रो करें, नॉन स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। जस्ट गॉट एट वन राइट टू द पिच ऑफ दैट बॉल, और गेंद को खूबसूरती के साथ गेंद की लाइन पर बल्ले को लाते हुए गेंद को ड्राइव कर दिया था मिड ऑफ पर। 1 रन बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, शाहरुख का गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार फुल टॉस ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, इस वक्त मिड विकेट पर 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर कुल मिलाकर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर। इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ दर्शकों की संख्या भी यहां पर बढ़ती नजर आती हुई, सुंदर सा यहां का कुलूर का ये मैदान न, और इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, 1 रन जरूर मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 9 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. रन्स सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए एनएफसी कुप्पे पदों के लिए, और शाहरुख एक बार फिर से तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, एक बार फिर से ठीक तरह से खेल नहीं पाए, लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला। इससे पहले किसी लिमिट डाउन पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 10 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 32 और रनों की दरकार विजय के लिए, और इस ओवर के बाद 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी। शाहरुख का एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार चिप किया है लॉन्ग ऑफ पर, कोई फील्डर वहां पर नहीं, गेंद का पीछा करते हुए, और जब तक अपने पीछे की ओर दौड़ कर रहा है, जब तक गेंद को लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर रोकते बल्लेबाज के पास मौका था, 1 रन चुरा चुके थे। तीसरे रन पूरा करने के प्रयास में अपना विकेट खोने के बाद रनआउट के रूप में पेविलियन वापस लौटते हुए बल्लेबाज 2 रन आसानी के साथ पूरा कर चुके थे। तीसरा रन के लिए उन्होंने अपने कदम बढ़ाए, और आखिरकार भुगतान उन्हें अपना करना पड़ा। सीधा थ्रो मिड ऑफ फील्डर का स्टंप्सों पर टकरा था, 1 ऑन स्ट्राइक रेंज पर, और इसी के साथ यह दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। आउट होने वाले बल्लेबाज ताची आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए 6 रन उन्होंने बनाए, और दूसरा विकेट यहां पर खो चुका है एनएफसी कुप्पे पदो 12 रनों के ओवर पर।
It's 12 for the loss of 2 wickets. अगला मैच अमरज्योति और एसएफसी पकलपादे के बीच में खेला जाएगा, तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि कृपया दोनों टीमों के सदस्य अगले मैच के लिए तैयार रहे. प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच. और जहां तक सवाल है इस मैच का, तो बराबर का संघर्ष यहां पर जारी. नए बल्लेबाज आसिफ का आगमन यहां पर हो चुका है और कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 12 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर. 36 रन चाहिए, माफ कीजिए 30 रन चाहिए, बचे हुए 24 के दो पर. 30 रन टू स्कोर इन रिमाइनिंग 24 डिलीवरीज with asking run rate of exactly 7.5 runs per over. अफरीम अपना दूसरा ओवर यहां पर प्रारंभ करते हुए, पहले ओवर में सिर्फ 5 रन उन्होंने प्रदान किए थे और उस सफलता के सिलसिले को इस ओवर में आगे बढ़ाने की कोशिश में वो दूसरा ओवर अपना प्रारंभ करते हुए. फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए 30 रन चाहिए, बचे हुए 24 के दो पर. 30 रन स्कोर इन रिमाइनिंग 24 डिलीवरीज. मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है. दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद चिप किया इस बार. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक अटेम्प्ट. दिस इज एन आउटस्टैंडिंग अटेम्प्ट मेड बाय मिड ऑफ फील्डर. और अंतिम क्षण में गेंद तक हाथ भी उन्होंने गेंद तक ले आए थे, लेकिन गेंद उनके हाथों से छूटी. गेंद को अपने हाथों में दबोचने में असफल, लेकिन बेहतरीन प्रयत्न यहां पर मिड ऑफ के फील्डर ने किया और यहां पर बल्लेबाज को इस बीच 2 रन चुराने का मौका था. अगर इस कैच को वो लपक लेते तो निस्संदेह एक इस श्रृंखला का बेहतरीन कैच कहलाता. और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर. 2 विकेट के नुकसान पर. 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. गेंदबाज अफरीम एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला. लॉन्ग ऑफ पर प्रोटेक्शन रक्षण मौजूद. थोड़ी सी मिसफील्ड, थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं. जैसे ही गेंद लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों से छूटी पहले प्रयत्न में, बल्लेबाज ने अपना दूसरा रन के लिए अपने कदम बढ़ाए और यशस्वीतम दूसरा रन यहां पर पूर्ण करते हुए. और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर. 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स नाउ. एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट मैंगलोर मीडिया द्वारा किया जा रहा है इस श्रृंखला का यूट्यूब के जरिए. और यहां पर कुल मिलाकर इस श्रृंखला का दूसरा मैच प्रगति पर. फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए विकेट कीपर. 26 रन और चाहिए, 22 गेंदें बाकी हैं उनकी पारी में. और गेंदबाज एक बार फिर से ये गेंद ऑफ द टोज गेंद को खेलना चाहा, ठीक तरह से खेल नहीं पाए, लेकिन ये एक रन ना उन्हें जरूर मिला इससे पहले कि गेंद को शॉर्ट फील्डर फील्ड करे. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर. एक साझेदारी की सख्त जरूरत एनएफसी कुप्पे पदों को अपने मंजिल की ओर अग्रसर होने के लिए. और इस बार अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेला मिड ऑफ की दिशा में. निशाना टकरा चुका है. दूसरा रन बल्लेबाज लेना चाहते हैं, दौड़ पड़े हैं, थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका दूसरा रन न प्राप्त करने का. ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन बल्लेबाज ने पूरे किए और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर. रन इस वक्त चाहिए एनएफसी कुप्पे पदों को, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है. और जहां तक बंदर 11 का सवाल है, इस वक्त उन्हें एक चंद विकेटों की इस वक्त सख्त जरूरत इस मैच में वापस आने के लिए. ये गेंद अच्छी गेंद थी, हल्के से गेंद को पुश किया, मिड विकेट पर गेंद पहुंची, लेकिन 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा इससे पहले कि शॉर्ट मिड विकेट फील्डर गेंद को थ्रो करे. नॉन स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. 20 रन बन चुके हैं, 22 रन और बनाने हैं, गेंदें बाकी हैं 19. 22 to get now from remaining 19 deliveries. What a match is now going on here. Afrim आसिफ के लिए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में यहां पर रन प्रदान कर चुके हैं इस गेंद पर वाइड के रूप में. अब 21 रन चाहिए
19 गेंदों पर यह गेंद ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक मिड ऑफ की दिशा में, 1 रन मिलेगा। फील्डर ने थ्रो करना मुनासिब नहीं समझा और 1 रन के साथ ओवर नंबर 3 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति, 22 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट स्कोर्ड बाय NFC Kuppepado, chasing the victory target of 42 in 6 overs. 20 runs to score in remaining 3 overs. And as far as the victory of this match is concerned, still I must say this match is now evenly balanced. 20 runs to score from remaining 3 overs. And let's see what will happen in remaining 3 overs, in the last 3 overs of their innings. और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे काबिल दोस्त सतीश को। तो सतीश, द इक्वल बैटल इज नॉट कंटिन्यूइंग हियर, 20 रन्स टू स्कोर फ्रॉम 3 ओवर्स। और मैं समझता हूं पहले 3 ओवर में एक बराबर का टक्कर हमें यहां पर देखने को मिला है, और 3 ओवर के खेल में क्या होगा ये अब आप बयान कीजिए। और जहां तक विजय का सवाल है, अभी भी मैं कहूंगा सतीश, इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन। Exactly, Gopi. Both the teams are battling hard for the victory, and it's very good to see. The very good entertainment for the spectators out here in cricket ground, as well as those who are watching live telecast of this cricket tournament through Mangalore media. Certainly, they will going to get kind of excitement finish for this match. No doubt at all. Both the teams has got opportunity to win the match. The match is evenly poised, and now. Last 3 overs going to be very important for both the teams. As far as the winning perspective of this match for Bandar 11 is concerned, they needed 3 good overs. They wanted to win the match, and for NFC, if they wanted to win the match, sensible batting required. That because they have to get another 20 required from 18 balls. That 18 balls in the sense excluding wides and no balls, and that's why the chasing team definitely going to be a little bit upper hand. Because they got 8 wickets in hand, and both the batsmen are playing very well. Tausif and Asif are the 2 batsmen, and I request Bandar 11 to make it past to finish this match. This time again the first delivery wide, so that's what I'm mentioning about why the chasing team is upper hand. I just mentioned about the excluding wides and no balls, and these extras will go into really change the complexion of the match, because of one mistake from that bowler, now equation coming very easily. 18 to get from 18 balls. Afraid. Left arm round the wickety balls. Just good piece of fielding there by the fielder, but not quite able to collect that one neatly. If you're not able to collect the ball neatly, then all the chances for the batsman to complete the single. So now batsman quickly realizing that dealing with the singles for the each and every ball takes them into the victory mark. Afraid needed some magical delivery, dotted delivery, the wicket taking delivery is must required. Done. This kind of delivery will not going to help Bandar 11. Look at the indisciplined bowling performance. He couldn't manage to handle the pressure here. This is a really very crucial over for Bandar 11. They needed one bowler who can bowl very good line and length. Now 1+1, straight away the pressure is off from the batsman. Now the deliveries are more, runs are less required. The scoreboard is exactly 27 on the board. 15 more runs required for the victory. (15 required from 17 balls. Afraid balls just straight to the hands of mid-off. This is what really required for the Bandar 11, but not required here for the NFC, because both the batsmen are looking pretty good in the middle. Looks like after that getting some extra runs in this over, both the batsmen are very comfortable. But this time I think the missed time shot there from the batsman. He tried to flick that on off his legs. Because of some extra bounce, he couldn't manage to keep it down, and ball went straight to the hands of short mid-off. And at last Afrid is got the wicket, very important wicket. And this is the right time for Bandar 11 to tighten up the screws here. Because whenever the new batsman is coming to the middle, it's not an easy job for any batsman straight away to get some runs. So that is what the right time for the bowler, the fielding team, to bowl some good deliveries, good line and length. And wait and see how Afrid will going to continue. Can he able to grab the opportunity
can he able to galvanize his level of confidence after getting the wicket? The new batsman in is Harris. After dismissal of Asif, he's played a very good innings for his team. Now new batsman came into middle for him. One at short fine leg, one fielder square leg right to square leg umpire Shiniket. One at deep backward square leg, one at short mid wicket. One at deep mid wicket, one at deep long on, deep long off. Short mid off, short cover point. And altogether for five fielders, five fielders on the offside. This time wicket keeper behind the stump. Excellent job. This is a very good wicket keeping there by the wicket keeper behind the stump. In a fraction, just in a blink of eyes, he complete the job. Straight away, the Mandar 11, they are back into this game. That's what I'm mentioning about. Whenever the new batsman coming into middle, it's not so easy for the batsman. This time Afrid bowled a quicker one. Might be the ball is a little bit down the leg stump. But as the fact that the new batsman came into middle, couldn't manage to take the advantage of the delivery. But all we can say that wicket keeper behind the stump, in a fraction he complete the job for his team. Still 15 required for the victory. So new batsman in is Tachi. (15 required from 15 balls). The match is now again A1 deposed. Before the start of this over, 20 required from 18 balls. Now 15 required from 15 balls. The change here is that the two batsmen are back into pavilion. Now Tachi is the batsman facing Afrid, left arm. Round the wicket. Oh, this is really going to be a bad miss, I will tell you. No signal coming from umpire. That means some bat is involved of the batsman Tachi. So one more addition to total. With that addition of that single, scoreboard moves on to 28 on the board. 14 required from 14 deliveries. What a great match is going on here. Afrid again, searching for the dotted delivery. Left arm, round the wicket, pushing and running. Oh, they're going for the second as well. This is not required. Really a bad thinking there by Afrid. This is not a smart, but it is not a smart. It is a really, I will tell you, extra smart from Afrid, because there is a certain single, no question of run out. Back and throw not required because no one there to collect his throw. And batsmen are grabbing the opportunity to complete that couple of runs. What could be a certain single? They got a 2. Again, NFC back into this game. 12 required. (13) ball remaining. 12 runs required for the victory. Afrid bowls. Left arm, quicker one. Ball is nipped back into the batsman. Wicket keeper fails to collect the ball. Frustration for the bowler. By call by umpire. Now, last 2 hours remaining in this game. Very interesting. Very excitement is left in this game. 11 to get from 12 balls. All we can see that 6 wickets safe of NFC. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಅಮರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಗೂ SFC ಪಕ್ಕಲ್ಪಾದೆ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದುಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ. I request captain of Amar Jyoti as well as SFC Pakkalpade to report here for the tossing ceremony. (11 to get from 12 balls. Very important over for Bandar 11. Needed some experienced bowler who can handle the pressure of bowling one good over. At the same time, NFC needed some sensible batting
11 to get from 12 balls. Equation certainly is favoring batting team, but everybody knows that the cricket is game of glorious uncertainty. We can't say anything in cricket. One good over can change the complexion of this match. That's why after a long discussion, Bandar 11 captain decided to go with Shah Rukh, the experienced campaigner, fantastic all-rounder for the side of Bandar 11. And wait and see how Shah Rukh will going to contribute here for his team. To 11 to get for NFC to win the match. Shah Rukh here, go. Right arm over the wicket. Oh, they're pushing and running, pushing and running. He won the ball. Went to straight to the hands of that forward, little bit silly mid-on fielder there. But still they managed to complete the single. 10 to get from 11 balls. That brings Tachi into strike now. Silly mid-on, silly mid-off. Cover point. Mid-off. There is no protection deep in the offside region. Down the leg stamp. Oh my goodness. Can you believe this? In this condition, in this situation, if you bowl the wide, no excuse at all. One more addition to total. Shah Rukh bowls. Sensible batting, absolutely. Just going over the infield. They're running hard. And they will going to get a couple of runs quite easily. And with that couple of runs, scoreboard is moving now to exactly 35 on the board. That means 7 runs required for the victory. 10 balls remaining. Now equation really favoring the batting team. Bandar 11 have to do something special. Even though they tried a level burst to putting some fielders inside the ring to get some pressure is on. This time chance of run out. And oh my goodness. I don't know why the Shah Rukh is waiting. And he knows that the batsman couldn't manage to complete the single here in the non-striker's end. He took his own time. And when is the batsman running hard towards the non-striker's end, too late. But its result going in favor of Bandar 11. 7 to get. Tachi is the batsman back into pavilion in the form of run out. Aftal is the new batsman walking towards the middle. The batsman in the middle is still there in the middle. Settled batsman Tausif is a big hope of winning this match for NFC, because they needed one batsman who batted till the end. Because if you lose a settled batsman, then it's always going to be opportunity for the fielding team to bounce back. Still 7 to get to win the match from 9 deliveries. Shah Rukh bowling. Right arm over the wicket, he bowls. Oh, beautifully played that one. Glorious shot. That was a declared area. Couple of runs here for the batsman. Fantastic stroke there from Tausif. It's the stroke of the day. With his offer, the batsman outside the line of off time. No protection has been given in the offside region. So that couple of runs, the declared area, that was a really imperious extra cover drive there from the batsman Tausif down the leg stump. Going to be a wide. Frustration and the pressure straight away. Now equation looking very, very easy now. 4 to get to win the match. And they got so many deliveries outside and above time. One more dotted delivery at last. Shah Rukh has got a dotted delivery, but no problem whatsoever. As Tausif looking pretty good sound in the middle. Looks like he's taking all responsibility in his shoulder for his team to take into the victory mark of 42. Far outside and off time. Punishment from the umpire. Shah Rukh disappointing is their captain decisions. Bowled so many extra runs in this over. And now 3 to get to win the match. Now he's bowling a leg spin delivery. And batsman driven firmly right in the gap towards the deep mid-wicket region. And they're running hard in the middle as well. The couple of runs here for Tausif. And now they're coming very close to the victory mark. Now 2 to get from last over. 1 to get from last over. Runs, scores are leveled.
What a great innings came from the bat of Tausif. Is the man leading from the front. Played a shit ankle roll to win the match for his team. But Bandar 11, even though they got a very good score of 41, but still they are lacking in their bowling department. Still they are lacking in their fielding department. Only the magical over can save Bandar 11 because two to get from one to get little correction from last over, and we can see that the fielding set here very unusual. One must say this is not a fielding set of limited over matches. This is a fielding set for the test matches, the 5-day game. The first ball, the batsman fails. Bowler got a success, but he has to bowl another 5 good deliveries. The pressure is on from the fielders of Bandar 11. Ball him, clean him up. Match is not yet over. Safwan kept the hope of at least they wanted to tie this match. 4 balls remaining, 1 run required for the victory. Actually, that kind of over needed earlier in the stage for Bandar 11. The bowler Safwan is the new bowler. I think he might be the better option to bowl the previous over, where Shahrukh is bowled so many extra deliveries, consists some extra runs. And that was really Bandar 11 little bit thinking about that over number 5. The Safwan, the new batsman. Tausif still there in the middle, but he is in non-strikers end. 4 balls remaining, 1 run required. Look at the fielder there, very close to the batsman. If a batsman coming down the track, he can hit that fielder who is very close to that batsman. This time, he's just going that one, play that one over the fielder. There's no protection in the deep, and that's enough for NFC to win the match. So at last, it's a victory for NFC Kuppe defeating Bandar 11 by 4 wickets. And Tausif is the man who leading from the front, played an excellent match-winning knock for the team, and he will get a standing ovation from his teammates. Everybody is gathering, appreciating his effort from the bat because he is the reason for the victory, standing tall in the middle, as strong as a rock, and taking his team into the victory mark of 42. And Bandar 11 little bit unlucky because they have to see, because winning and losing is a part of cricket, but they have to see where the things are went wrong. I think the bowling department is not up to the mark, especially they have to restrict some extras, and otherwise they can win the match. And of course, each and every game is definitely going to be a lesson for learning from your mistakes. When you're going for the next match, have to correct all these mistakes, then you can bounce back at any time. So congratulations for the winners, hard work Bandar 11. So next match, Amar Jyoti takes on SFC Pakalpade, and the news here is Amar Jyoti captain won the toss. They elected to field first. Thank you. We'll take a short break, and after short break, before the innings of Amar Jyoti, SFC Pakalpade will go into comments. It's time to ask Gopi to take over the microphone. Thank you.
ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಗೊಳಿಸಬೇಕು. SFC ತಂಡದ ನಾಯಕ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ. Fielding team already they are in the ground. Umpires are waiting for the opening batsmen of SFC Pakkalpade. Please, the opening batter will go. I request the opening batter, please go for bat immediately. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜರ್ಗಂ ಬಾಯ್ಸ್ ಶಾಂತಿನಗರ್ ಹಾಗೂ KYC ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜರ್ಗಂ ಬಾಯ್ಸ್ ಶಾಂತಿನಗರ್ ಹಾಗೂ KYC ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. राइट, धन्यवाद सतीश. और मैच नंबर 3 इस श्रृंखला का शुरू होने इस वक्त जा रहा है अमर ज्योति और SFC पक्कलपादे के बीच में. और जहां तक सवाल है बल्लेबाजी का, तो SFC पक्कलपादे पहले बल्लेबाजी पर उतर आता हुआ अमर ज्योति द्वारा टॉस हारने के बाद, और उनके दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद. और दोनों आरंभिक बल्लेबाज समंत और समानात और नौफल इस वक्त मौजूद. भूषण गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए. सो अंपायर ने इशारा किया कि मैच की शुरुआत हो, और यहां पर पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार भूषण. समानात इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए. तो पारी की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार गेंदबाज भूषण. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद स्वीप किया इस वक्त. गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है. एक रन सीधे मेरे ख्याल से गेंद वहां पर शॉर्ट फाइन लेग पर सीमा रेखा को पार कर चुका है. एक रन घोषित इस वक्त, और एक रन के 7 रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है SFC पक्कलपादे के लिए. एक रन बिना किसी नुकसान के भूषण एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार स्वीप किया था, और इस बार रनआउट का खतरा, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है. बिना किसी गेंद का सामना किए हुए नौफल इस वक्त पेविलियन वापस लौटते हुए रनआउट के रूप में. और पहला विकेट SFC पक्कलपादे यहां पर खो चुका है 1 रनों के योग पर. जोखिम भरा रन चुराने का प्रयास, और इससे पहले कि स्ट्राइकर रन के बल्लेबाज स्ट्राइकर रन पर पहुंचे, सीधा थ्रो पहुंचता हुआ शॉट स्क्वायर लेग फील्डर का विकेट कीपर के हाथे में, और विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट चटका दिए विदाउट फेसिंग एनी डिलीवरी. नौफल इज नाउ बैकिंग टू पवेलियन and the first wicket gone for SFC Pakkalpade. It's 1 for 1.
अजहर नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए। नौफल का विकेट गिर जाने के बाद नंबर 3 बल्लेबाज की हैसियत से क्रीज पर इस वक्त जाते हुए और भूषण की गेंदों का सामना करने के लिए वो तैयार। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलते हुए वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर एक विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। और भूषण गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, एक बार फिर से वाइड का इशारा, लगातार 2 वाइड इस ओवर में फेंक चुके हैं गेंदबाज भूषण और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर यहां पर पहुंच चुका है 3 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त सख्त जरूरत है एसएफसी पक्कल पादे को, अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो। और भूषण एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद, इस बार गेंद एक बार फिर से वाइड का इशारा, हैट्रिक वाइड यहां पर फेंक चुके हैं, लगातार 3 वाइड इस ओवर में फेंक चुके हैं गेंदबाज अपनी सही लेंथ और लाइन को तलाशते हुए। और स्कोर इस वाइड के रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। भूषण दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव किया, रन के लिए दौड़ पड़े शॉर्ट कवर पर जब तक स्वयं गेंदबाज अपनी बाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड करे। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, 5 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। कुल मिलाकर फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए और गेंदबाज भूषण इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, गेंद को उछालना चाहता लेकिन आखिरी मौके पर गेंद लगभग जमीन के सहारे आई अलोंग द कार्पेट और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में बल्लेबाज को वंचित करने के बाद। और इस बीच रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला इस गेंद पर। धीरे धीरे अपनी सही लाइन लेंथ और लाइन को प्राप्त करते हुए गेंदबाज भूषण ये गेंद हल्के से गेंद को स्वीप करना चाहा, गेंद लगभग बल्ले के टॉप एज पर टकराने के बाद ऑफ साइड पर गई, पॉइंट क्षेत्र पर 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। छह रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। भूषण फुल टॉस फुल किया है इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, लेकिन रक्षण और प्रोटेक्शन वहां पर मौजूद है, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ ओवर नंबर 1 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर एसएफसी पक्कल पादे आफ्टर बीइंग लूजिंग द टॉस एंड पुटिंग टू बैट बाय Amarjyoti cricketers in the match number 3 of Jacks Trophy 2022. They made a mixed start. In fact, 7 runs they scored after their completion of first over for losing the wicket of Naufal. Still 5 overs left in overall calculation in their innings और दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ। मनीष गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए 00 नंबर की जर्सी इस वक्त पहने हुए और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज अजहर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। नई ओवर की पहली गेंद ये गेंद, इस बार गेंद को उछाला, गेंद पहुंची सीली मिड ऑफ पर, रन के लिए दौड़ पड़े यशस्वी, तब 1 रन इस बीच पूर्ण करते हुए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। इन फैक्ट मनीष बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद, इस बार गेंद को हल्के से स्वीप करना चाहता लेकिन एक्स्ट्रा क्विकर गेंद लगभग जमीन के सहारे और
बल्लेबाज को वंचित करते हुए सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में एक्स्ट्रा पेस के साथ। इस पिच रन बल्लेबाज को इस गेंद पर नहीं मिला। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेला, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, शॉर्ट मिड विकेट पर कहना पड़ेगा जब तक गेंद को रोका जाता फील्डर द्वारा। एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। बदली भरा वातावरण मैदान पर इस वक्त छा चुका है। सूरज कुछ पल के लिए बादलों की आड़ में इस वक्त छिप चुका है और यहाँ पर अगली गेंद, ये गेंद खेल दिया स्क्वायर लेग पर, स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया था। अगर रन ऑन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो करते हैं तो निश्चित रूप से वहां पर रन आउट हो सकता था, लेकिन हड़बड़ाहट में थ्रो किया था फील्डर ने स्ट्राइकर एंड की ओर। और इस बीच बल्लेबाज यशस्वी तम्मा 1 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 10 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। रन्स सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए एसएफसी पक्कल पादे के लिए। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहता, ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाए। लगभग गेंद उनके पैरों पर टकराने के बाद जब तक फील्ड और शॉट्स को लेग पर 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। मनीष इस ओवर में अंतिम बार। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर छोड़ दिया गेंद को और इसी के साथ एक बेहतर ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 5 रन इस ओवर में मनीष ने, 4 रन इस ओवर में मनीष ने प्रदान किए। एक बेहतर ओवर उनका समाप्त हो चुका। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस वक्त जोड़ चुका है एसएफसी पक्कल पादेल। 11 रन स्कोर्ड for losing 1 wicket after completion of 2 overs for SFC Pakkal Pade against Amar Jyoti in the match number 3 of this tournament. धनुष इस वक्त गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए, फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए। धूप अब मैदान पर प्रकट हो चुकी है। सूरज जब बादलों की आड़ से निकलकर अपने किरणों को इस वक्त मैदान पर फैलाता हुआ कुछ हद तक, और यहां पर इस मैच का 3रा ओवर प्रारंभ होता हुआ। बाएं हाथ के बल्लेबाज समनाथ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। पहले गेंद स्वीप इस वक्त करने में सफल नहीं हुए। गेंद उनके पहुंच से बाहर थी, वाइड का इशारा। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 12 रनों पर। 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 3रा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है। और ये गेंद हल्के से गेंद को खेला, ओ एक्स्ट्रा कवर पर मिसफील्ड। और आखिरकार जब तक गेंद को वहां पर रोका जाता, डीप एक्स्ट्रा कवर पर बैकअप किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। अगर ठीक तरह से इस गेंद को फील्ड कर लेते फील्डर तो शायद रनआउट का खतरा हो सकता था नॉन स्ट्राइक रन पर, लेकिन गेंद उनके हाथों से चूकी और बल्लेबाज 1 रन के लिए अपना छोड़ बदलते हुए। ये गेंद फुल टॉस, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, उछालना चाहता, गेंद गई जमीन के सहारे, थोड़ी सी मिडफील्ड, वहां पर दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। झट से संभलते हुए अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को उन्होंने फील्ड कर लिया और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 15 मैदान के ऊपर से हवाई जहाज इस वक्त गुजरता हुआ और उस हवाई जहाज की गूंज यहां पर सुनाई देते हुए। और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो गेंदबाज धनुष इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना राउंड द विकेट। ये गेंद हल्के से गेंद को स्वीप करना चाहा, अजीब और गरीब ढंग से गेंद को खेल दिया। इस वक्त हर गेंद पर स्वीप करते हुए इस वक्त बल्लेबाज समानात, और यहां पर इस गेंद पर 1 रन बटोरने में सफल। 16 1 विकेट के नुकसान पर 3रा ओवर यहां पर प्रगति पर धनुष।
दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, प्लम इन फ्रंट, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। शफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, गेंद लाइन पर टिप्पा खाए, मिड स्टंप को कंसंट्रेट केंद्रीकृत कर आती हुई गेंद, और गेंद उनके फ्रंट पैड पर टकराई, फ्रंट लेग पर टकराई, और अंपायर श्रीनिकेत को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई। उन्हें प्लम इन फ्रंट पगबाधा लेग बिफोर विकेट घोषित करने में। 16 रनों पर दूसरा विकेट गिर चुका है। अजहर की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। इट्स 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस फॉर एसएफसी पक्कलपादे। तो कुल मिलाकर तीसरा ओवर राउंड की पारी का प्रगति पर नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। प्रसाद इस वक्त क्रीज पर पहुंचते हुए, और अंपायर से गार्ड लेने के बाद इस वक्त तैयार। गेंदबाज धनुष की गेंदों का सामना करने के लिए। ये गेंद ड्राइव किया, लेकिन फॉलो थ्रू में जैसे ही गेंद को फील्ड करने के लिए फील्डर दौड़े, गेंदबाज दौड़े, नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज उनके आड़े आ गए और गेंद को इस वक्त फील्ड कर लिया गया। स्लिम डाउन पर रन बल्लेबाज को इस गेंद पर नहीं मिला, और एक बार फिर से धनुष दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार उछाला है मिड विकेट पर, फील्डर गेंद के नीचे आते नहीं, गेंद को रोक नहीं पाएंगे, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। छक्का इस वक्त जुड़ चुका है। गेंद को उछाला था मिड विकेट पर, और गेंद सीधे मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, जो कि इस वक्त ट्रॉफी तैनात किया गया है, उस ट्रॉफी पर गेंद जाकर टकराती हुई। जी तोड़ कोशिश जरूर की थी डीप मिड विकेट फील्डर ने गेंद को लपकने की, अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद को रोकना चाहा, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर। एक बेहतरीन छक्का इस वक्त लग चुका है प्रसाद के बल्ले से। 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति। 3 overs completed, 22 for the loss of 2 wicket, 11 runs scored in the last over. Good one in SFC Pakkalpade's point of view came to an end, and still in overall calculation it's going to be 3 overs remaining in the innings. 3 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका, 3 ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं इन 3 ओवर के खेल में उनकी पारी में क्या क्या होता है। और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंग्रेजी में सतीश को। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you, Gopi. So, start of the over number 4. The first delivery, batsman quite nicely swept that one to square leg division for a easy single. And with that single, scoreboard moves on to 23 on the board. Very good going here for SFC Pakkalpade. Even they lost the toss, but asked by the opposition to bat first. They batted really very well. And they lost only 2 wickets, but these batsmen are slowly try to build the partnership, and the one shot which is played by Prasad in the previous over takes accelerating the run rate as well of SFC Pakkalpade. Slash that one over the end of the infield, and trying his level best to take the catch, but just having a fingertips of that fielder at mid-off, the batsman got ample time to complete that couple of runs before the fielder from deep long out to collect that one. So nice looking drive again from Prasad. He's a very good hard hitter of the ball, Prasad, and just looking at the 2 strokes he's played from his bat, absolutely he wanted to hit some big shots. Again, beautifully played that one, coming across the line of the delivery, but when he hits it firmly, there is no hesitation at all, and that's what really required. When you wanted to hit, you have to hit pretty hard, and that's what this man Prasad is having got a very good muscles, as he picked up 9 runs in just 3 delivery faced, and intention is very clear from batsman. He wanted to accelerate. Sensible batting straight to the hands of fielder man, but oh my goodness, the bowler fails to collect the throw from that square leg fielder. There is a certain chance of run out because batsman Samanath really struggling to reach his home. When the throw came to the hands of bowler, he was not in the picture at all. He just survived from that run out. He got a single then. Scoreboard moves on to 27. This one Prasad going for the mighty stroke. The wicket keeper, very lazy moment, I will tell you. Chance of run out
in the non-striker's end, but no damage done. I think the wicketkeeper behind the stump has got a plenty of time to run front and take the catch. Because of he was just sitting behind the wicket, takes a little bit time to get up, and that's why I couldn't manage to reach the catch. But ball is in the air for a while. That much enough time for the wicketkeeper. Any wicketkeeper, quick wicketkeeper, certainly will going to take the catch, because the wicket of Prasad will going to be a really very expensive. If we give this gives any kind of chance for the batsmen like Prasad, they will definitely going to capitalize. So going for the big shot, got outside edge of the bat. Frustration for the bowler after bowling that is such a good line and length, and Manish quite unfortunately he missed the wicket. This time down the leg side, swinging his bat, wait for the umpire signal, leg by, no contact with the bat, just a single. So one more addition. Will it going to be a declared over completed? Is it declared? If it declared means, I think the non-striker, of course, Prasad will be in the non-strikers end, and Samanath will going to take the retain the strike. Score is 28 on the board after completion of over number 4. That means they got exactly 7 runs per over. Actually, good over. The previous over bowled by Manish is a very quiet over indeed. Even batsmen are trying for the batters are trying for the big shot, but still they fails to make any kind of big shot in that particular over. So over number 5 will going to start. Bowler name. Hello. Bowler name. Hello. Fielder. Bowler. Single-handed reverse sweep right in the gap. Just suddenly they will going to get a couple of runs here before the fielder from short back point region to run back. Excellent placement there from the batter to playing a single-handed reverse stroke. Scoreboard now moves on to 30 on the board. 30. Ritesh, very experienced campaigner Ritesh. Very good all-rounder for the side as well for team Amar Jyoti. Ritesh bowls. This time ball is hitting the body of the batter. They completed a single, very quick single in the negation. No signal from umpire, that means it's from the bat of the batter. One more addition to total. Scoreboard moves on to 31 on the board. So far, Ritesh in this over considered 3 runs in 2 balls. Both the batters are in the middle, Prasad, and then Samnath are the 2 batters are in the middle. One is a strike rotator, one is hard hitter of the ball. Now Prasad facing far outside the line of half time. Nothing much to do with the delivery. Watching the ball till the last moment, and left the ball into the hands of wicketkeeper. And Shrinikat has got a little bit exercise here. He signals as a wide. This time lofted, and safely lofted there by Prasad down to long off. One bounce collected by a deep long off fielder. Once the ball is in the air, looks like it might be the chance for the fielder, but the fielder standing a little bit back at long off, so that safely landed that ball. One more addition to total. Scoreboard moves on to 33 on the board. 33 for the loss of 2 wicket. Partnership was slowly building up here. Oh, going for the mightier hit. This time wicketkeeper behind the stump. Fails to collect the ball, trying for the run out in the non-strikers, and again the bowler fails to collect the throw from the wicketkeeper, and batsman got a single there. Strikes are rotated. That brings Prasad into strike now. 34 on the board for the loss of 2 wicket. This time, oh, what a shot! This has been outstanding, and a huge 6 coming from the blade of Prasad. With the direction of the wind, I already mentioned this man has got a muscle power.
Look at the shot, that one. Absolutely. That is the really stroke of the day. How far that ball went. Just passing left of our commentary box with the direction of the wind. This is a really huge six came from the bat of Prasad. The second sixer as well from the bat of Prasad. And scoreboard moves on to 40. 41 on the board now. One more addition to total. So need to be very careful. The bowler, I have to see the direction of the wind. If he walls that line around the legs of the batsman like Prasad will definitely going to take the full advantage of the delivery. So expensive over is completed there by Ritesh. 41 on the board. Completion of over number 5. Now the run rate quickly jumping into over 8 runs per over. And that shows the one big hit. Definitely will going to change the scoreboard as well. Run rate climbing up to 8. And last over remaining. And these two batsmen are really making a lot of damages. Of any score 50 plus is going to be a very good total to depend in this condition. Because if you see that this particular cricket ground, dimension of this cricket ground, not too much opportunity behind the stumps. Just in front of wicket you can get some. Of course there's a little bit square of the wicket. The onside they got opportunity. This time down to deep long off region. Batsman hit that one firmly. But Prasad had to settle for the single. With that single, scoreboard moves on to 42 on the board. Dhanush in his second and last over of his quarter. Now left hand batsman came into middle. Came into strike. Straight away there the backward point fielder coming inside the ring. Not inside the ring, just outside the ring at backward point. Improvisation by playing the reverse stroke. He's so good in it. I think he's doing a good job. Samanath being a very cool customer, doing a great job. He just wanted to give strike as much as possible to Prasad. Because he is the one who got a muscle power. Hitting the ball pretty hard. Ball him, cleaned him up. That's the last thing they doesn't want to see. But certainly the captain of team Amarjyoti want to see this man back into pavilion. After making a lot of damage, is back into pavilion, Prasad. But I think he's played a very good role for his team. Played in a small cameo. The very entertainment innings comes to an end. Played some enterprising cricketing strokes at 2 sixes, which is came from the blade of Prasad. Really very entertainment indeed. He's out for 18, well made 18. A round of applause here from the teammates of their team, SFC Pakkalpade. The Amarjyoti captain must be little bit relaxed, man. This time lofted chance here, lazy movement from the fielder there. What could be a certain chance of catch? Not a good quick movement there from the fielder at mid wicket. And he couldn't manage. Of course he reached there, but not quite able to extend his hands to the direction of the ball. Ball just falling short of him. And they got run. This time again chance of cotton ball, and he's gone. A very good catch taken there by Dhanush, dealing with a fantastic final over. 2 big wickets for him. That's the kind of over is required for Amarjyoti in the final over. He's sending danger man Dhanush back into pavilion. Then he's sending the new batsman back into pavilion as well. Altogether, this is a really good over from Dhanush. Because they knows that any score 45 plus around 50 is definitely difficult to chase down. And very important here for Amarjyoti, after winning the toss they elected to field first. They wanted to restrict the opposition less than 45. But score already 45 on the board. Again excellent delivery indeed. This is a really much better over. Again the batsman going for the big drive, but as line is so good in that occasion there from Dhanu. And a great over. Absolutely great over. Just over the kind of over they wanted to see from very experienced Dhanu
Now it's a 46 target. 46 is the total score. 47 is the target for Amar Jyoti to win the match. And wait and see how Amar Jyoti will going to chase down this total 36 balls and 47 runs to win this match. Just under 8 runs per over is the required run rate for Amar Jyoti to win this match. This is a very good total, I think I will tell you. But seeing the direction of the wind, especially in this afternoon, now time is exactly 12 past 10. Quickly we can see that direction of the wind direction is changing here. The direction of the wind is coming towards the community box and I think if the batsman batted successfully, sensibly, they can chase down this total of 47 to win the match. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಜರ್ಗಂ ಬಾಯ್ಸ್ ಶಾಂತಿನಗರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ KYC ಖಾಟಿಪಲ್ಲ ತಂಡದವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜರ್ಗಂ ಬಾಯ್ಸ್ ಶಾಂತಿನಗರ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುವುದರ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಹಾಗೂ ನಾಣ್ಯಚಿಮ್ಮಿಗೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಘಟಕರಿಗೊಂದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು, ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ಫಾರ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ all the matches will be played of 5 overs. Please note, because of shortage of time, as the organizer decided to reduce the number of overs from 6 to 5 from next match onwards. So please note the change, small changes in the coming matches. Meanwhile, it's time to change in community box as well. So it's going to be one more good match, as seeing the total score of 47 in this particular cricket ground, 47 to win the match for the opposition. It's looks to be one more good match is coming in front of spectators out here in this most beautiful Panjimugeru cricket ground. So we'll take a short break, and after a short break, Gopi will going to take the microphone in our national language. Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा कर चुका है SFC पक्कलपाद है अमर ज्योति क्रिकेटर्स के खिलाफ, और लक्ष्य इस वक्त 47 रनों का, 47th target for them, and their innings now going to start. और पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज अशरफ भूषण ने सामना करने के लिए तैयार किया। गेंद ड्राइव किया, खूबसूरती के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, एक रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। हालांकि निशाना चूकता हुआ इस वक्त मिड ऑन फील्डर का फेंका गया हुआ, और बल्लेबाज भूषण ने एक रन चुराने में सफल। बेहतर स्ट्रोक था इस वक्त, जगह बनाते हुए गेंद को खेला था मिड ऑफ पर तेजी के साथ भूषण ने, और तेजी के साथ एक रन पूर्ण करते हुए। और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार दैविक, और अशरफ दाइना तो बढ़ता विकेट। ये गेंद दैविक के लिए, गेंद को ड्राइव किया उन्होंने, ठीक तरह से जगह नहीं बना पाए,
लेकिन एक रन उन्हें ज़रूर मिला इससे पहले कि सीरीज मिड ऑफ पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं। 2 रन बिना किसी नुकसान के। निस्संदेह एक बेहतर शुरुआत की ज़रूरत इस वक्त अमरज्योति क्रिकेटर्स को, अगर उन्हें 47 रनों के लंबे से लक्ष्य तक पहुंचना है। तो ये गेंद, अच्छी गेंद, बेहतर गेंद, गेंद को ठीक तरह से समझ नहीं पाए, रन के लिए दौड़ पड़े। और इस बार यहाँ पर बल्लेबाज गेंदबाज का जूता जो कि नॉन स्ट्राइक रेंज पर टकराया था और विकेट्स डिस्टर्ब होते हुए और आखिरकार काफी वाइड ड्रोन के पहुंच से बाहर और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। जोखिम भरा रन लेकिन सफलतम अंतिम क्षण में पूर्ण करते हुए दोनों बल्लेबाज और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अशरफ और दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का, दिशाहीन गेंद और कुल मिलाकर 2 रन, 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल। और इन 2 रनों के साथ स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 5 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन सीधे कवर पॉइंट फील्डर के हाथों में। उछालना चाहा था, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं और गेंद हवा में उछली और आखिरकार कवर पॉइंट फील्डर ने कोई गलती नहीं की। तो इसी के साथ ये पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। दैविक आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और 5 रनों पर पहला विकेट यहां पर खो चुका है अमरज्योति क्रिकेटर्स। इट्स 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तो पहला विकेट यहां पर खो चुका है अमरज्योति क्रिकेटर्स 5 रनों की योग पर। दैविक आउट होकर पेविलियन वापस लौट चुके हैं उनका स्थान ग्रहण करते हुए एज ए नंबर 3 बैट्समैन। धनुष का आगमन यहां पर होता हुआ और ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा गया। ओह, मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन। नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज निकल आए थे स्ट्राइकर एंड की ओर और स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज वहीं पर खड़े रहे। फलस्वरूप एक और विकेट यहां पर गिर चुका है इस बार रनआउट के रूप में और धनुष आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और दूसरा विकेट यहां पर खो चुका है अमरज्योति क्रिकेटर्स। इट्स 6 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तो 2 विकेटें पहले ओवर में गिर जाने के बाद सहज रूप से इस वक्त दबाव अमरज्योति क्रिकेटर्स के ऊपर दिखाई देता हुआ और नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है निशांत का। देखना यह है कि निशांत क्रीज पर मौजूद दूसरे बल्लेबाज भूषण के साथ मिलकर इस संकटमय परिस्थिति से किस तरह अपने टीम को बाहर निकालते हैं। और अशरफ इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा था लेकिन गेंद पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। बल्लेबाज को वंचित करने के बाद रन्स इस बीच नहीं मिला तो स्कोर रुक चुका है यहां पर 6 रनों पर। अशरफ दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अच्छी गेंद, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद, अपील एंड अप गोज द फिंगर फ्रॉम अंपायर। 1 मोर विकेट फॉलन, प्लम्ब इन फ्रंट घोषित और तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। और अब ऐसा कहना पड़ेगा इस विकेट के पतन के साथ परेशानियां और बढ़ चुकी हैं अमरज्योति क्रिकेटर्स के लिए। द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर अमरज्योति क्रिकेटर्स। 3 विकेट्स लॉस्ट in the first over and now they are looking deep in trouble. 6 for 3 after the completion of first over. They are just searching for the right track. 6 for the loss of 3 wicket for Amorjyoti cricketers.
And let's straight away coming back to the equation. 47 minus 6, 41 more runs now. They have to score for victory in remaining 5 overs. And now they are asking run rate. Asking run rate is now gone up exactly 8.20 runs per over. और एक पार्टनरशिप साझेदारी की इस वक्त सख्त ज़रूरत अमर ज्योति क्रिकेटर्स को. और गेंदबाज इस वक्त शबीर गेंदबाजी शुरू करते हुए, स्ट्राइक लेते हुए प्रजेश. ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस वक्त ड्राइव करना चाहा, ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाए. 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है 22 का इशारा अंपायर का. और 1 रन के साथ कुल मिलाकर स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर. 7 for the loss of 3 wickets at the start of the second over in fact. और जहां तक सवाल है बचे हुए रन्स का, तो 40 रन और बनाने हैं विजय के लिए. और ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त गेंदबाज एसएफसी पक्कल पादे के यहाँ पर अपना किरदार बाखूबी निभाते हुए. और लेफ्टी बैट्समैन बाएं हाथ के बल्लेबाज भूषण इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइल लेग पर. और इस बीच सिर्फ 2 गेंदें इस ओवर में फेंकी जा चुकी है. और स्कोर इस वक्त पहुंच चुका है बढ़कर 8 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर. निशांत है, माफ कीजिए, स्ट्राइकर, जो कि इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार. बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है. दोपहर के 12:30 यहाँ पर बचते हुए धूप की प्रखरता इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ बढ़ती हुई. ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और गेंद तक पहुंचना चाहा था, लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए. और गेंद विकेट कीपर ने अपने दूसरे प्रयत्न में अपने आगे की ओर आकर फील्ड कर लिया. और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. एक बार फिर से गेंदबाज शबीर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद इस बार शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों में. जो प्रोटेक्शन इस वक्त रखी गई है उस फील्डर के ही हाथ में गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर. और रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला. एक बार फिर से शबीर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. ये गेंद अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद थी और बल्लेबाज को वंचित करते हुए गेंद निकली, ऑफ स्टंप पर जा टकराई. और इसी के साथ एक बेहतर गेंद के जरिए ये विकेट प्राप्त कर चुके हैं शबीर. निशांत की पारी समाप्त. 4 विकेटें गिर चुके हैं, सिर्फ 8 रन स्कोर बोर्ड पर दिखाई देता हुआ. और निस्संदेह समस्याएं और इस वक्त बढ़ते हुए अमर ज्योति क्रिकेटर्स के लिए. It's 8 for the loss of 4 wicket in the over number 2nd in progress. For Amar Jyoti cricketers are now looking deep in trouble. तो इस संदिग्ध मोड़ पर नंबर 6 बल्लेबाज की हैसियत से मनीष का आगमन यहां पर हो चुका है. 8 रन 4 विकेट के नुकसान पर इस वक्त जोड़ चुका है. अमर ज्योति क्रिकेटर्स अभी भी अपनी सही राह को तराशता हुआ, जस्ट सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक. और अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ उभरता विकेट. ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और शॉर्ट फाइन लेफ्ट फील्डर के हाथों में गेंद पहुंची. वाइड का इशारा. 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल. और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन 4 विकेट के नुकसान पर. 10 for the loss of 4 wickets. और एक बार फिर से गेंदबाज की गेंद पैरों पर टकराई. गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर. 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर. 11 for the loss of 4 wicket and second over has been came to an end. Still searching for the right track. 11 for the loss of 4 wicket after completion of 2 overs. और अंतिम 4 ओवर का खेल उनकी पारी में बाकी. और 4 ओवर में 36 रन और उन्हें बनाने हैं. द आस्किंग रन रेट इज नाउ गॉन अप टू एग्जैक्टली 9 रन पर ओवर.
So 36 to get from 4 overs, and the third over is now अशरफ इस वक्त नया ओवर यहां पर प्रारंभ करते हुए, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार अपील, और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। लेग बिफोर विकेट, प्लम इन फ्रंट घोषित, और पांचवा विकेट यहां पर गिर चुका है। हर विकेट के पतन के साथ समस्याएं और बढ़ती हुई इस वक्त अमर ज्योति क्रिकेटर्स के ऊपर। 11 रन 5 विकेट के नुकसान पर 11 for 5। ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜರ್ಗಂ ಬಾಯ್ಸ್ ಶಾಂತಿನಗರ್ ಹಾಗೂ ಕೆವೈಸಿ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So back to this game, 11 for the loss of 5 wickets. A struggling time continuing here for the batsmen of Amar Jyoti Cricketers, and at this situation the bowlers of SFC are now looking right on top. और गेंदबाज की ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद तक पहुंचना चाहता, लेकिन पहुंच नहीं पाया, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। बल्लेबाज को वंचित करने के बाद रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। हर डॉट गेंद के साथ दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ अमर ज्योति क्रिकेटर्स के बल्लेबाजों के ऊपर। ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, बेहतर गेंद थी इस वक्त, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एक बार फिर से गेंदबाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद रक्षात्मक तरीके का खेल, सेंसिबल क्रिकेट यहां पर अपनाते हुए गेंद को ढकेल दिया, पुश कर दिया बल्ले और पैर को एक साथ लाते हुए, और तेजी के साथ एक रन न दौड़कर दोनों बल्लेबाज चुरा चुके हैं। 12 रन सिर्फ सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए, चाहिए कुछ करारे स्ट्रोक, चौके या छक्के के रूप में इस मैच में वापस आने के लिए अमर ज्योति क्रिकेटर्स के बल्लेबाजों को। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है तो गेंदबाज एसएफसी क्रिकेटर्स के बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ उनके गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, अपील एक बार, लेकिन गेंद कुछ हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, और रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज अशरफ इस वक्त तैयार, अपने कोटे की अंतिम गेंद ड्राइव किया, खूबसूरत चौक मिड ऑफ पर रन के लिए। ओ, नॉन स्ट्राइकर एंड पर अगर फेंकते तो निस्संदेह वहां पर रन आउट हो सकता था, लेकिन थ्रो किया था फील्डर ने स्ट्राइकर एंड पर। फलस्वरूप बल्लेबाज एक रन पूरा कर चुके हैं। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜರ್ಗಂ ಬಾಯ್ ಶಾಂತಿನಗರ ಹಾಗೂ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So 13 for the loss of 5 wicket, half the way mark, आधा सफर तय हो चुका। 13 रन 5 विकेट के नुकसान पर 34 और रन चाहिए 3 ओवर में। अब आस्किंग रन रेट जा पहुंचा है ठीक 11.33 रन पर ओवर। 34 टू गेट फ्रॉम 3 ओवर्स, रिमेनिंग 3 ओवर्स, और देखते हैं उनकी पारी में इन बचे हुए 3 ओवर में क्या क्या होता है। और इससे पहले कि चौथा ओवर पर हम माइक्रोफोन पर अब मैं आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे काबिल दोस्त सतीश को आमंत्रित करना चाहता हूँ। आइए सतीश। Thank you very much, Gopi. So start of the over number 4 as the first ball, and batsman completed a single in between because wide call by umpire far outside the line of off stump, and 2 more extras added to totals. With that, extra scoreboard now moves on to 15 now. 15 for the loss of 4 wicket. A really shackling start here for the Amar Jyoti, chasing 47 to win the match. Now once again 1+1. This is really a bonus run. They need to capitalize this extra runs and extra deliveries. The batsmen of Amar Jyoti, if they wanted to back into this game. No fall. The tall man, no fall. Bowling right arm over the wicket, past the umpire, across the line. Ritesh wanted to hit towards the direction of the wind. Intention is
clear that the batsman wanted to hit the ball with the direction of the wind. They can get some maximum, but line is outside the line of off stump. No fall balls. This time batsman going for the off try, not quite able to time that one properly, and he played that one back to bowler, and no question of any run, and there is no possibility of any run. No fall. Right arm over the wicket balls. This time going for the big shot. It's again across the line of the delivery. Missed that ball completely, so that umpire Suresh Mudabidri has signaled one more leg by. Addition of scoreboard moves on to 18 for the loss of 4 wicket. Very good delivery. When now fall balls that line, I think it's very difficult for the batsman, because he's just using his height and generating a lot of pace as well with the direction of the wind. One more delivery, which is misjudged by the batsman. Wanted to play that one on the offside, and quickly he's misjudging that one. Thought that it might be a wide, but ball is just coming back into the batsman, and well within the reach of the batsman. No question of wide. Good comeback there by Naufal after he bowls 2 wide deliveries in this over. Again, this time again one more quicker delivery, beautifully bowled. The batter wanted to umpire to give the wide, but umpire says that well within the reach of the batsman, and no question of wide. One more over completed. Struggle continues here for Amar Jyoti, even though they got some extra runs in this over, but still the bowler Naufal managed to bowl one more good over in this remaining deliveries he bowled. So 4 overs completed. Searching for the right track, still struggling Amar Jyoti to win this match. They got only 18 on the board. Long way to go to win the match, and needed some big shots straight away. 2 overs remaining, 12 balls remaining, but they have to get plenty of runs to win the match. Shabir brought into attack. Shabir. Right, over the wicket balls again. Excellent delivery, excellent line. Very difficult for the batsman when bowler bowling that kind of line, and with the great deal of pace as well in this particular over. Particular deliveries, the batsman mistimed that one. Going for the big shot, Ritesh, but not getting timing what he wanted. Just a single. These singles will not going to help Amar Jyoti. They wanted to get some big shots, at least the boundaries and sixes required. This time beautifully driven, but not more than a single. There is a protection in the deep. They're coming back for the second. In comes a throw, and as the fact that the fielder in the deep long on have to throw the ball against the direction of the wind, so that ball is not really coming quickly to the hands of bowlers, so that give a lot of time for the batsman to come back for the second. And with that second, couple of runs, scoreboard moves on to 20 now. 27 more runs required for the victory. Chance of run out. Lazy running with the wicket. This is not a good technique by the batsman. Why is looking back? Why is looking back to his partner? Your job is to respond to the call of your partner. If you looks back, you are in trouble. So the batsman looking back, and the fielder quickly realizing there's the opportunity of run out in a non-striker's end, and he's back into pavilion. The new batsman in is Sharath. He's in non-strikers and Ritesh will going to take the strike. Shabir balls. Again trying and trying, but still Ritesh is not getting what he wanted from his bat. Very difficult to drag the ball from outside the line of half time to get big strokes on the onside region. The bowler doing great job seeing the intention of the batsman, not settling the batsman for the big shot. Again went for the big shot, beautifully bowled, excellent delivery indeed. Very impressive, the bowler so far in this over. Down the leg stump, going to be a wide. One more addition. Strong breeze was passing out here. In the breeze, in the sense it was a very cool and very fantastic weather condition here in afternoon, because of the river is passing beside this cricket ground. We are having a very cool weather.
The really fantastic weather. The umpires really enjoying this weather, especially Arish Padil. Enjoying this different condition. This is first experience for the officials having that kind of scenario, atmosphere. Beautiful cricket ground. I already mentioned earlier. This is the one ground we never get the kind of scenario where you can see that. Of course, the Mangalore media cameraman will going to catch that the bridge passing there. Very very popular historical Kuluru bridge. Might be it was a 50 to 60 years old Kuluru bridge. MCF we can see. Then of course Mangalore port. The start of the last over. Going for the big shot again. Missed the line completely. And there is no possibility of any run at all in the negation. Still, they have to climb the mountain of runs. The final over. They needed a lot of runs to win the match. Ball aim cleaned him up. That was a great delivery indeed. So new batsman came into middle. All the bowlers of SFC are bowled a very good line and length, and looks like they are very professionalist in the bowling department, in even the batting department. They're winning all the departments against Amar Jyoti. That's why Amar Jyoti are struggling to get some runs. Lovely shot, beautifully played down to deep long on, but not more than a single. I'm just mentioning about this cricket ground, the dimension of this cricket ground. There's no more opportunity for the batsman to get runs behind and square of the wicket in the offside region. There is no opportunity to get a big score. But in front of wicket and in the onside region, you can get some big score like a 6 and boundaries. That's why it's very difficult when it's a 40 to 45 runs in this particular cricket ground, because you can keep the fielders in front of wicket, deep long off, deep mid wicket, deep extra cover. So very difficult to get past that area. This time again he lofted. Again there is a protection in the deep long on, just a single for the batsman. So these singles will not going to help. That's it. The comprehensive victory for SFC. They won the match quite easily. They won the match quite easily in the end, and they qualify for the next round of this Jacks Trophy 2022. Wonderful cricket tournament. Jacks Panjimugeru 25 is the total score, and they won the match by 21 runs margin of victory. 21 is a huge margin, especially in this format of games. The next match, the changes in the number of overs, the format of the games is a little bit changing here. As the organizers decided after having a conversation with the officials that they wanted to reduce the number of overs. They reduced that number of overs from 6 to 5, and now all the matches will be played of 5 overs. 1 hour going to be a power play out of that 5 overs, and that's the one changes which is made after this after 2 matches of the day number 1.
Jagaram boys Shantinagar takes on KYC Khatipalla. One more good match is coming up here, and we'll take a short break. After that short break, we are right back in front of you, live and exclusively, along with my partner, Mr. Gopi, in our national language Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो मैच नंबर 4 इस श्रृंखला का यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। जरगम बॉयज शांतिनगर और केवाईसी काटीपल्ला के बीच। और जरगम बॉयज ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि यहाँ पर उन्होंने लिया। यह गेंद अच्छी गेंद थी, पहली गेंद को ड्राइव किया इस वक्त, लेकिन फॉलो थ्रू में गेंदबाज को बीट नहीं कर पाए और रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। दोनों आरबी के बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद केवाईसी काटीपल्ला के लिए। और
गेंदबाज मनीष इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद थी, एक्स्ट्रा क्विकर, एब्सोल्युटली गुड वन। और विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट जरूर चटकाए गेंद को कलेक्ट करने के बाद, लेकिन बल्लेबाज का पिछला पैर क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। एक्स्ट्रा पेस के साथ इस गेंद को फेंका था मनीष ने, और इस गेंद पर उन्होंने कोई अवसर प्रदान नहीं किया कि बल्लेबाज स्ट्रोक खेल सके और स्कोर रुक चुका। तो दो बेहतर गेंदें मनीष इस ओवर में फेंक चुके हैं। और मंसूर और आफ्ताब आरंभिक बल्लेबाज, मंसूर जो कि स्ट्राइक लेते हुए इस वक्त एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर, बैक टू द बॉलर की दिशा में, और गेंद को खेलते ही काफी आगे निकल आए थे जरूर, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि गेंदबाज की तरफ बढ़ रही है, अपने कदमों को क्रीज पर एन वक्त पर खींच लिए और इस बीच कोई क्षति नहीं उनके लिए। और एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव किया, गेंद पहुंचे मिड ऑन पर, एक रन मिलेगा। तेजी के साथ दौड़ पड़े थे और आखिरकार उन्हें कोई दिक्कत ही यहाँ पर नहीं हुई एक रन प्राप्त करने में, और एक रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है केवाईसी काटीपल्ला के लिए। एक रन 90 लाख से नुकसान के 1 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो ऊपर विकेट गेंदबाजी करते हुए ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेला, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता। शॉर्ट स्क्वायर लेग और शॉर्ट मिड विकेट के दरमियान बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे दोनों बल्लेबाज, फलस्वरूप उन्हें कोई दिक्कत अंतिम क्षण में नहीं हुई एक रन प्राप्त करने में। और एक बार फिर से गेंदबाज मनीष दाहिना तो ऊपर विकेट, ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, मिड ऑफ की दिशा में रन के लिए दौड़ पड़े तेजी के साथ, एक रन पूर्ण कर चुके हैं और इससे पहले और इस बार दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन। पहला रन पूर्ण करने के बाद दूसरा रन चुराना चाहता ओवरथ्रो को देखते हुए, लेकिन जैसे ही कदम बढ़ाए बल्लेबाज ने, गेंद पहुंच चुकी थी शॉर्ट मिड विकेट फील्डर के हाथ में और उन्होंने विकेट कीपर की ओर गेंद को थ्रो कर दिया और आखिरकार यहां पर यह विकेट गिर चुका है रन आउट के रूप में। मंसूर आउट होकर इस वक्त पेविलियन वापस लौटते हुए, और 4 रनों के ऊपर पहला विकेट खो चुका है यहां पर केवाईसी काटीपल्ला। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। इट्स 4 overs in overall calculation remaining in their innings in fact, and 24 balls remaining, still they got 9 wickets kept intact. Just talking about the next match, SNNC Kasaragod will takes over Team Metrics in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart। और जहां तक सवाल है इस मैच का, और गेंदबाज मुस्तफा इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए, 1 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहां पर हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए। हमराज माफ कीजिए, गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई पहले गेंद को छोड़ दिया विकेट कीपर के हाथों में, देखते हुए कि गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकल रही है। 1 रन एक्स्ट्रा अतिरिक्त के रूप में उनके खाते में जुड़ता हुआ 5 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, और इस भी 2 रन, 1+1 2 runs नाउ एडेड टू द टोटल इन द फेस ऑफ वाइड।
लगातार 2 वाइड्स इस ओवर में फेंक चुके हैं। हमराज गेंदबाज अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तराशते हुए। और दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद चिप किया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन पर, लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल। थ्रो पहुंच चुका है लॉन्ग ऑन फील्डर का गेंदबाज के हाथों में और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। ये गेंद हल्के से गेंद को थोड़ी सी मिसफील्ड वहां पर पॉइंट फील्डर द्वारा। और जब तक अपने खुद वो अपने पीछे की ओर दौड़कर जाकर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। अपनी आगे की ओर डाइविंग उन्होंने लगाई थी अंतिम क्षण में गेंद को लपकने के लिए, लेकिन गेंद उनके आगे टिप्पा खाती हुई। इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। और हमराज एक बार फिर से तैयार। ये गेंद नॉट क्वाइट मिडल गेट बट ही गेट्स इन सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रन ज्यादातर सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए। और एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार स्टीयर किया गले की दिशा में। 1 रन का इजाफा 11। दूसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। ये गेंद अच्छी गेंद, एब्सोल्युटली गुड बॉल, मच स्ट्रेट लाइन। परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद थी, लगभग जमीन के सहारे आई और गेंद को इस वक्त ड्राइव करने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन्स यहां पर बल्लेबाज को नहीं मिला। धीरे धीरे अपने सही लय को, रिदम को प्राप्त करते हुए इस वक्त गेंदबाज हमराज 2 वाइड्स फेंकने के बाद और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। और गेंदबाज ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में फील्ड होते हुए 1 रन का इजाफा और लेग बाई के रूप में। और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 12 for the loss of 1 wicket after completion of 2 overs. Still the batsmen of KYC Katipalla just searching for the right track. 3 overs remaining in overall calculation in their innings. 3 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनकी पारी में और कितने रन उनके बल्लेबाज बटोर पाते हैं। तो तीसरा ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ और जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूँ, SNNC कासरगोड और टीम मैट्रिक्स के दरमियान अगला मैच खेला जाएगा। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया वे स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। सो थर्ड ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स और गेंदबाज मनीष जिन्होंने अपना पहला ओवर बेहतर फेंका था और अपने दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए कप्तान जगम बॉयज के और ओवर की पहली गेंद लेकर मनीष तैयार। अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, गेंद को ड्राइव गेंद को बिना देखे रन लेने के लिए 2 कदम उन्होंने आगे जरूर बढ़ाए थे, लेकिन ऐन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिए, ये देखते हुए कि गेंद विकेट कीपर के हाथ में दूसरे प्रयत्न में फील्ड हो रही है और सब कुछ सुरक्षित उनके लिए। और एक बेहतर गेंद इस गेंद पर फेंक चुके हैं गेंदबाज। एक बार फिर से तैयार, ये गेंद अच्छी गेंद थी, एक बार फिर से गेंद को खेलना चाहा, विकेट कीपर गेंद तक पहुंचे, थ्रो किया, निशाना दागा था लेकिन निशाना चूकता हुआ और इस बीच बाई के रूप में 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका है और 1 रन के साथ 13 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। एक लंबी साझेदारी की तलाश में इस वक्त ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद।
दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद चिप किया, स्ट्रोक्स को चेक किया था आखिरी मौके पर, जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम ऑन टू हिज बैट एट द लास्ट मोमेंट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं। 14 रन अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए, और मनीष एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहता, और इस बार प्लम्ब इन फ्रंट घोषित। कुछ सोच विचार करने के बाद अंपायर सुरेश मुड़बिद्री ने अपनी उंगली उठा दी यहाँ पर, और प्लम्ब इन फ्रंट पगबादा यानी लेग बिफोर विकेट के रूप में ये विकेट नंबर 2 यहाँ पर गिर चुका है। अफ्ताब की पारी समाप्त, 14 रनों पर दूसरा विकेट खो चुका है केवाईसी काटीपल्ला। It's 14 for 2 in the over number 3 in progress. जैक्स ट्रॉफी 2022 के अंतर्गत इस श्रृंखला का चौथा मैच यहां पर खेला जाता हुआ, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है जैक्स ट्रॉफी पंजीमुगेर ने, और श्रीमान एलोशियस डिसोजा इनके सारथ्य में ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहां पर करते हुए। और निस्संदेह संदीप उर्फ सैंडी और प्रसाद इस श्रृंखला के सफलता के सूत्रधार यहां पर मौजूद हमारे साथ, और यहां पर इस गेंद को स्वीप करना चाहता, ठीक तरह से खेल नहीं पाए। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर, जबकि तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। करारे स्ट्रोक्स की सख्त जरूरत इस वक्त केएफसी काटीपल्ला के बल्लेबाजों को अपनी टीम के रन की गति को एक्सेलरेट करने के लिए। गेंद हवा में उछली है इस वक्त, लेकिन खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाती हुई थ्रो पहुंचा, और यहां पर यह विकेट गिर चुका है। अपनी उम्मीद छोड़ चुके थे यहां पर बल्लेबाज, और आखिरकार विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड करने के बाद बैकहैंड के जरिए गेंद को थ्रो किया था स्टंप्सों पर, उनका निशाना सही बैठता हुआ, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। एक और विकेट गिर चुका है, तीसरा विकेट, 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 3 ओवर के समाप्ति, 3 overs completed, 16 for the loss of 3 wickets. Still the batsmen of KYC Katipalla searching for the right track. 2 ओवर का खेल बाकी उनकी पारी में, just 2 overs all remaining in their innings. और देखते हैं इन बचे हुए 2 ओवर्स में उनकी पारी में क्या क्या होता है। और इससे पहले कि चौथा ओवर यहां पर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंग्रेजी में सतीश को। धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Gopi. The scoreboard is exactly 16 on the board after completion of 3 overs. Not that much of big score on the board, but they can accelerate in the remaining 2 overs. It is going to be very, very important for them to get some big score. First delivery going to be a bye, as the batsman going for the big shot on the onside region. Missed it completely when wicketkeeper fails to collect the ball. And if it is a declared, I think the batsman will going to retain the strike. Yes. The declared one, so that batsman will going to retain the strike. Samil is the bowler, and jersey number 55 Bashit will going to take the strike. They have to look for some acceleration of run rate. So far it's a very good 3 overs bowled by KYC Katipalla. This time again going for the big swing of the bat, and that ball is almost outside the line of off time. Batsman just wanted to hit that one against the line of the delivery. The intention of the batsman have to get some big score on the onside region, and the fact that ball is got a little bit extra bounce, and batsman nowhere near the pitch of the delivery, and he missed it completely. One more dotted delivery, and score remains on 17 for the loss of 3 wickets. This time again blind attempt, without seeing, without coming to the line, going for the big shot, missed the line completely. One more dotted delivery. That's all always happening when you're playing in the slog overs, when you're looking for the acceleration of run rate.
then almost everything is looks to be very blind, not seeing the line of the delivery, only looking for the big shot, but without moving your feet, it's very difficult to get a big score. One more fantastic delivery indeed, but this time wicketkeeper fails to collect the ball, and batsman got opportunity to cross off for a easy single. With that single, scoreboard moves on to 18 on the board for the loss of 3 wickets. So far, it was a very disciplined bowling performance by the bowlers of KYC. Jangam boys, after winning the toss, they elected to bat first, but looks like the batsmen are not really capitalizing the decision of their captain. Again, down the leg stump. This is a one more delivery, which is really the wide one outside the line of leg stump. One more exercise added to total. Scoreboard moves on to 20 now, 19. Correction for the loss of 3 wicket. Oh, look at the wicket keeper behind the stump. It's been outstanding so far behind the stumps. In a fraction, he completes the job. The quicker one, the batsman little bit coming down the track, out of the crease, as he wanted to hit the ball towards the offside region, but that ball nipped back into the batsman, and wicketkeeper behind the stump done a great job in a fraction. The wicketkeeper behind the stump completes the job. So far, he's been outstanding. As he looking his technique of collecting the ball, and just looks like he's an highly professional behind the stumps. So 19 for the loss of 4 wicket. One more wicket is back into pavilion. The young bowler Sahil, correction, been very accurate in his line and bowled one delivery as a wide. Otherwise, all we can see that he bowled a very tidy line and length. Now left-hand batsman is on strike, so that fielder coming from deep backward point to inside the ring, and there is no protection in the deep backward square because there is no chance of getting any boundary there. That's why not keeping the fielder in the deep square leg. But there is deep long on and deep long off and deep extra cover is there. Going for the big shot again. Missed it completely, mix up. And both the batsmen in the same hand. No reaction coming from the striker. Really not responding. And it was highly disappointment for the batsman. Bashit is a batsman. Is just charging for the single. And left-hand batsman just number 777 has got no idea at all to responding to that single, and one more wicket is back into pavilion of Jangam boys are in deep in trouble. Shantinagar Jangam boys, not only they are losing the wickets, but at the same time very hard to combine the runs against the disciplined bowling performance by little bit correction. Jangam boys are in the field. The Khatipala, KYC Khatipala are really struggling to get the runs against the disciplined bowling performance of Jangam Sports Club Mangalore. Now last over will going to start of the innings of KYC Khatipala. Have to get some runs, at least 10 runs in the final over. It takes them into the respective total. Otherwise, it's really difficult for them to depend. This time, what we are talking about, they need to throw their bat. This time, the batsman throwing the bat to the line of the delivery. Juicy full toss. No ball called by umpire. Suresh Mudibidre, rightly so. What a great hit coming from the blade. Absolutely fantastic one. It's not an easy one, I will tell you. Of course, it's a full toss, but not an easy full toss. The batsman have to climb for that one. And he's lofted that one down to deep square leg boundary for a say. One more full toss. This time batsman lit with early into strokes. Salman, the very young talented batsman for the side of KYC Khatipala. Leg spinner is introduced. This time again lofted, but I don't think this time he will going to get the distance. The fielder, oh what a save! But I wait for the umpire signal. Will it going to be a save? Will it going to be a 6? But you wait for the umpire signal. That is a 6. Absolutely right. The fielder is out of the boundary line.
when he was trying to save that six. He's almost out of the line. And two sixes. Can you believe this? Salman is a hero here in the middle. Two sixes in a three deliveries. All together. Two deliveries, two sixes. One is no ball. And dot. And another six. And scoreboard quickly climbed to 32. One more quality shot. Lofted at one. Deep Exekau fielder. And before the Exekau fielder going back to deep Exekau, the batsman got ample time to complete that couple of runs. What a great innings he's playing. Absolutely fantastic. 34 on the board. This time, went for the big shot. This time, I think the fielder is underneath it. Not quite middling it. But I think he's playing is a fantastic role here. Salman, after hitting two sixes, scoring 14 valuable runs, is back into pavilion and he did the job for his team. The leg spinner has been punished in the last over. Ansar is the bowler. Not the easy condition for the leg spinner, I will tell you, because seeing the direction of the wind, the strong breeze passing, and because of that the runs are coming in front of wicket, square of the wicket. This time, missed timing. That one ball is ballooning up in there. Three fielder behind that one, but deep long off fielder takes the catch. And that was really a comedy of error, one must say. Just if you wanted to see that in the replay, because once the ball is hoisting it over, and looks like that the mid-on fielder will going to take the catch, but ball with the direction of the wind changing and going and at last that the deep long on fielder takes a catch. And one more wicket is back into pavilion. Good comeback there by Ansar after conceding two sixes and 15 runs and 3 overs. Then they are really back in this game. Slash that one. Wicketkeeper missed out. And one more addition to total. So good over for KYC Khatipalla. They got what they really wanted in the last 5 overs. Last over, the 1 hour, which is going to be a very productive. Otherwise, we can see that all the overs, the 4 overs, dominated by the fielding team, Janga Boys, and the final over, bowled by Ansar, is really expensive. That's only because of the Salman hitting 2 sixes in that over. So altogether, 35 is the total score. 36 is target, and they got the score at the rate of exactly 7 runs per hour. Now, just over 7 runs per hour is the required run rate. 36 to win the match, and wait and see how well Jangam Boys Shantinagar, they got some very good batting department in their side, and having that batting department, wait and see how well they're going to get this 35. Altogether, I want to say that the KYC Katipala, the bowlers have to do a lot of hard work in their bowling and fielding department if they wanted to defend this total. And we'll take a short break. After the short break, and Gopi will going to take the microphone in our national language Hindi. Thank you.
धन्यवाद सतीश। और यहाँ पर अंतिम ओवर में लगभग 15 से 16 रन बने और उस अंतिम ओवर की बदौलत केवाईसी काटीपल्ला एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा करने में सफल हो चुका है। और देखना यह है कि 35 रनों का लक्ष्य जो उन्होंने इस वक्त प्रदान किया है जरगम बॉयज के लिए, उन 35 रनों के लक्ष्य तक क्या जरगम बॉयज के बल्लेबाज पहुंच पाते हैं या नहीं, देखना पड़ेगा। और दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद बासित और मुस्तफा, जबकि गेंदबाजी इस वक्त संभालते हुए सलमान। और अंतिम ओवर में 2 छक्के सलमान ने जो जड़े थे, उन 2 छक्कों की बदौलत एक चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करने में सफल हो चुका है काटीपल्ला यूथ क्लब काटीपल्ला यानी केवाईसी काटीपल्ला। और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होती हुई जरगम बॉयज की शुरुआत। और पहली गेंद लेकर सलमान इस वक्त तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त मिड ऑन की दिशा में, रन से नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है। $36 टारगेट फॉर देम और 36 रनों का लक्ष्य, माफ कीजिए। और एक गेंद, अच्छी गेंद, एक्स्ट्रा क्विकर सलमान की बेहतर गेंद थी इस वक्त। आक्रामक स्ट्रोक लगाना चाहा, पावर प्ले का फायदा इस वक्त उठाना चाहा था बल्लेबाज बासित ने, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद उनके बल्ले पर नहीं आई। और 2 बेहतर गेंद इस वक्त सलमान फेंक चुके हैं। दाहिना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद, बेहतरीन पेस का चतुर परिवर्तन करते हुए इस वक्त धीमी गेंद फेंकी थी और इस धीमेपन पर चकमा खा गए बल्लेबाज और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज को वंचित करने के बाद। 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज सलमान फेंक चुके हैं और इस वक्त तैयार। दाहिना तो बड़ा विकेट, आक्रामक स्ट्रोक, लेकिन मिड ऑन फील्डर के हाथों में। गेंद को उछाला था जरूर, लेकिन फ्लैट वर्जन पर गेंद इस वक्त आई थी। मिड ऑन फील्डर जो खड़े हुए थे झुकते हुए जमीन से कुछ ऊपर, उन्होंने इस कैच को लपका एक बेहतर जजमेंट के साथ इस फ्लैटर वर्जन कैच को। और यहां पर यह पहला विकेट गिर चुका है बासित के रूप में। 0 पर पहला विकेट खो चुका है जरगम बॉयज। और निस्संदेह यहां पर पहले ओवर में 4 डॉट गेंदे खेलने के बाद अपना विकेट गंवाकर बल्लेबाज बासित पेविलियन वापस लौटते हुए और एक बेहतर ओवर यहां पर प्रगति पर सलमान का। और नए बल्लेबाज फयाज 0-2 नंबर की जर्सी यहां पर वो पहने हुए इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। सलमान अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद एक बार बॉल्ड आउट, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद उछालने के प्रयास में चूके परिवर्तन के दौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद फेंकी थी और आखिरी मौके पर इस गेंद की गति को समझ नहीं पाए और आखिरकार गेंद सीधे उनके ऑफ स्टंप पर जा टकराती है। पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में यह विकेट यहां पर गिर चुका है फयाज का। और फयाज स्वयं अपने आप से असंतुष्ट इस वक्त अपने नाखुशी का इजहार उन्होंने किया अपने पैर को जमीन पर पटकते हुए विकेट गिर जाने के बाद। और यहां पर दूसरा विकेट यहां पर खो चुका है केवाईसी काटीपल्ला के खिलाफ जरगम बॉयज शांतिनगर। और 2 गेंदों में 2 लगातार विकेट प्राप्त करने के बाद हैट्रिक का मौका इस वक्त गेंदबाज सलमान के पास और देखना यह है कि वे अपना हैट्रिक परिपूर्ण कर पाते हैं या नहीं। कोई भी रन इस ओवर में अब तक उन्होंने प्रदान नहीं किया। हैट्रिक गेंद लेकर तैयार, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेला, मिड विकेट पर रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ रन का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है पहले ओवर की अंतिम गेंद पर। और एक बेहतरीन ओवर यहां पर सलमान का समाप्त हो चुका। सिर्फ 1 रन उन्होंने प्रदान किए, 2 विकेटें उन्होंने प्राप्त किए और जो शुरुआत की जरूरत थी केवाईसी काटीपल्ला को गेंदबाजी के जरिए, वो बेहतर शुरुआत यहां पर सलमान अपने पहले ओवर में दे चुके हैं केवाईसी काटीपल्ला के लिए गेंदबाजी के जरिए। तो जहां तक सवाल है अगला मैच का, SNNC कासरगोड का मुकाबला होगा अगले मैच में टीम मैट्रिक्स के साथ। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया अगले मैच के लिए तैयार रहे। प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। और वहां पर अपने मैदान के बाईं ओर जो कैंटीन इस वक्त
खुला है, वहां पर दोपहर के भोजन की व्यवस्था वहां पर की गई है। मैं दरख्वास्त करता हूँ सर्व क्रीड़ा प्रेमी और खिलाड़ियों से कि कृपया वहां पर भोजन वो ग्रहण करें पैसे चुकाकर। ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ SNNC ಕಾಸರಗೋಡ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। तो दूसरा ओवर यहां पर शुरू होता हुआ 35 टू गेट नाउ इन रिमाइनिंग 24 डिलीवरीज। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए अच्छी गेंद इस वक्त उछालना चाहा था, चूके पूरी तरह रन्स इस बीच नहीं मिलेगा। मुस्तफा अभी भी ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं और गेंदबाज कादर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद उछाला है इस वक्त फील्डर गेंद के नीचे आते हुए लॉन्ग ऑफ पर और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। तफसीर ने गेंद को उछाला था जरूर लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था और गेंद को लॉन्ग ऑफ पर बिना किसी हिचकिचावट के लपक लिया फील्डर ने और यहां पर तीसरा विकेट गिर चुका है। और इस विकेट के पतन के साथ ऐसा कहना पड़ेगा द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर देम, समस्याएं और उनके लिए बढ़ चुकी है। 1 रन 3 विकेट और इस वक्त केवाईसी काटीपल्ला के गेंदबाज हावी होते हुए बल्लेबाजों के ऊपर। एक बेहतर साझेदारी की इस वक्त जरूरत। मुस्तफा इस मैच में पहली बार गेंद का सामना करते हुए। बातिश का आगमन यहां पर होता हुआ। मुस्तफा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। मुस्तफा जरगम बॉयज के प्रमुख बल्लेबाजों में से एक जाने जाते हैं और यहां पर इस वक्त उनको टीम को उनकी ज़रूरत है और देखना यह है कि अपने टीम को अपनी मंजिल की ओर क्या मुस्तफा अग्रसर करते हैं या नहीं। और गेंदबाज खादर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। एक साझेदारी की सख्त जरूरत इस वक्त जरगम बॉयज को इस मैच में वापस आने के लिए। यह गेंद मुस्तफा के लिए और इस बार गेंद को रोकने में सफल तो रहे, फॉलो थ्रू में डाइविंग लगाते हुए, लेकिन एक रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट मैंगलोर मीडिया चैनल द्वारा इस वक्त किया जा रहा है यूट्यूब पर और यहाँ पर शायद अपना बल्ला बैट बदलने के लिए मुस्तफा इस वक्त पेविलियन की ओर बढ़ते हुए और खेल यहाँ पर कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है। 2 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अगले मैच में टीम मैट्रिक्स ने टॉस जीता है SNNC कासरगोड के खिलाफ और देखना यह है कि वो क्या निर्धार लेते हैं। तो इस वक्त नए बल्लेबाज बातिश सामना करने के लिए तैयार और खादर गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। ये गेंद परिवर्तन के तौर पर ऑफ कटर गेंद थी और इस गेंद को हाफ माइंडेडली छोड़ दिया था सीधे विकेट कीपर के हाथों में कि शायद वाइड हो सकता है, लेकिन ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा हद तक गेंद बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा सही निर्णय और स्कोर वहीं पर रुक चुका है 2 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, ये गेंद स्वीप करना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, 1 रन मिलेगा इस बीच और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। रनों के लिए संघर्ष यहां पर करते हुए बल्लेबाज जरगम बॉयज के निस्संदेह, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, एक साझेदारी पार्टनरशिप की इस वक्त उन्हें सख्त जरूरत है। फील्डिंग में जमावट गेंदबाज यहां पर करते हुए। बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है। दोपहर के 1:30 बजते हुए 1:30 बजते हुए और धूप का कहर इस वक्त मैदान पर
और ज्यादा होता। वाह ये गेंद, ओह दैट्स एन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग डिलीवरी। लेकिन अंतिम क्षण में बेहतरीन विकेट कीपिंग विकेट कीपर ने की, लेकिन मैं समझता हूं बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं और एक बेहतरीन गेंदबाजी इस गेंद पर की थी गेंदबाज ने, और एक बेहतरीन विकेट कीपिंग भी विकेट कीपर ने की, लेकिन आखिरकार बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं। दूसरा ओवर समाप्त हो चुका है, सिर्फ 2 रन इस ओवर में कादर ने प्रदान किया। सलमान ने पहले ओवर में सिर्फ 1 रन प्रदान किए थे और 2 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी कहना पड़ेगा जरगम बॉयज जस्ट सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक, 2 for the loss of 3 wicket. And let's straight away coming back to the equation. 36 minus 3, that means 33 more runs now they have to score for victory in remaining 3 overs, and the asking run rate is now gone up to exactly 11 runs per over. 33 रनों की दरकार बचे हुए 3 ओवर में, और ऐसा कहना पड़ेगा अब चौके या छक्के ही जरगम बॉयज को इस मैच में वापस ला सकते हैं। तो गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त सौंपा जा रहा है बासित के हाथों में, और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज बातिश के लिए। तो बासित बातिश के लिए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। चौके और छक्कों की सख्त दरकार इस वक्त जरगम बॉयज को इस मैच में वापस आने के लिए। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए 18 गेंदें बाकी, 33 रन और चाहिए विजय के लिए। 33 more runs now they have to score for victory in remaining 18 deliveries, and the fresh over starts from the bowler. पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद चिप गया एब्सोल्युटली इन फ्रंट ऑफ आवर कमेंटेटर बॉक्स स्टैंड, सीधे मेरे सामने आकर गेंद यहां पर टिप्पा खा चुकी है 6 रनों के लिए, और ये छक्का सहज रूप से मैं कहूंगा बल्लेबाज के आत्मविश्वास को बढ़ा चुका है। मिड ऑफ द बैट कनेक्टेड एंड लॉफ्टेड दैट वन इन अ स्टाइल इन फ्रंट ऑफ आवर कमेंटेटर बॉक्स स्टैंड फॉर 6 रन्स। बेहतरीन स्ट्रोक बातिश का बासित की गेंद पर, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर। इस बार स्ट्रेट अवे प्रेशर दबाव गेंदबाज के ऊपर, ऑप्शन से बाहर की ओर गेंद फेंकी। अब 26 रन चाहिए, 17 गेंदें बाकी। 26 to get from 17 balls, और इस बार एक बार फिर से वाइड का इशारा। अब 25 चाहिए 17 गेंदों पर, 25 to get from 17 balls, और छक्का प्रदान करने के बाद सीधा दबाव गेंदबाज के ऊपर दिखाई देता हुआ लगातार 2 वाइड वो फेंक चुके हैं, और अब सही गेंद की तलाश में अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद चिप किया लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, ओ ये क्या छूट चुका है। कुछ हद तक मुश्किल सा मौका, लेकिन आखिरी मौके पर इस मौके को कन्वर्ट करने में असफल। गेंद उनके हाथों से टकराने के बाद सीधे लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए, और एक बेहतर ओवर यहां पर साबित होता हुआ जरगम बॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए। कुल मिलाकर 12 रन अब तक पहले 2 गेंदों में गेंदबाज प्रदान कर चुके हैं। 21 रन चाहिए, 16 गेंदें बाकी। यह गेंद ड्राइव किया लंबोर की दिशा में, मिड विकेट पर कहना पड़ेगा, क्लीन कलेक्शन नहीं, थोड़ी सी मिसफील्ड, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, नॉन स्ट्राइक रन पर थ्रो पहुंचता तो कुछ बात बन सकते थे, लेकिन थ्रो पहुंचा स्ट्राइक रन पर, और इस बीच बल्लेबाज 2 रनों के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं। 17 The tide is now slowly turning. 19 to get, 15 balls remaining. Still the match is equally balanced. बराबर का संघर्ष यहां पर जारी, और इस बीच गेंदबाज तैयार, यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, लेकिन न सही गेंद इस वक्त, कुछ ज्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, और बल्लेबाज ने गेंद को छोड़ दिया था। इस
उम्मीद के साथ कि शायद वाइड हो सकता है, लेकिन नहीं, गेंद कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। और एक बार फिर से गेंदबाज किया गया, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया लंबों की दिशा में इनटू द गैप, एक रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज 2 रन आसानी के साथ पूर्ण कर चुके हैं। तो 2 रन इस गेंद पर मिले। अब कुल स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर, 19 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, एंड दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ फाइन ओवर so far in Jagam Boys innings. 16 runs already scored in this over. और गेंदबाज इस वक्त तैयार, यह गेंद उछालना चाहा, पैरों पर टकराई, लेकिन लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है लेग बाई के रूप में, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर, 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, और 17 रन इस ओवर में बने, 17 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर, और 2 ओवर का खेल बाकी। अब 17 रन चाहिए, माफ कीजिए 16 रन चाहिए, 16 टू गेट फ्रॉम रिमाइनिंग 12 बॉल, दैट मींस इन 2 ओवर्स, और निस्संदेह ये ओवर जगम बॉयज के लिए कमबैक ओवर साबित हो चुका है, और 2 ओवर में 17 रन चाहिए, 16 रन चाहिए, और आइए सतीश आपको माइक्रोफोन पर बुलाते हैं। 16 रन, और पिछले ओवर में जो 17 रन बने उस ओवर की बदौलत मैं समझता हूँ जगम बॉयज कमबैक कर चुका है इस मैच में, और अब बचे हुए 2 ओवर में निस्संदेह कसी हुई गेंदबाजी यहां पर करनी होगी केवाईसी कृष्णापुर को, अगर उन्हें जरगम बॉयज के बल्लेबाजों पर नियंत्रण प्राप्त करना है तो। Exactly, Gopi. The previous over certainly is going to be a comeback over for Jargam boys. They got 17 runs in that over. That's why now it's required just 16 runs in 12 balls. It's going to be very very interesting indeed. And more than anything else, the batsmen are in the middle. So experienced campaigner Mustafa is another and didn't got that much of strikes, but still he's been a very very useful player, very useful batsman for the side. And wait and see, along with Batish, wait and see how well this batsman will going to get 16 to win the match in the remaining 2 overs. Zunaid he's got a ball in his hand, very important over, and leg spinner has been introduced. Beautifully ball, perfect leg spin delivery, and a perfect line to ball to the left hand batsman. And Mustafa this time really surprised. He's thought that it might be the ball which is coming into him. Of course ball is coming into him, but as the fact that the leg spin bowler bowled outside the line of off time, the delivery which is really pretty good one for the left hand batsman, and he missed it completely. Each and every dot ball, which is definitely opens the gate of winning this match for Kartipala, KYC Kartipala. 11 remaining, 16 required for the victory. Zunaid bowling with the short run up, right above the wicket, coming down the track and using his feet into the occasion, but not quite able to get more than a single. A lot of protection has been given in the in front of wicket. Of course there is a deep long on and wideish long on. The 2 fielders are in the onside region in the deep, and in the offside deep extra cover, deep cover point, and deep long off. The fielders are in the deep. So inside the ring there is a short backward point. One outfielder, especially for the right-hander batsman, one fielder from a deep extra cover coming inside the ring in short mid-off region, and mid-wicket fielder going back to deep mid-wicket region. Altogether, deep backward square leg, deep mid-wicket, deep wideish long on, deep long on, and deep long off are the 5 fielders outside the circle. Short mid-wicket, short mid-off, and short cover point fielder inside the ring. This time delicately played there by the batsman, opening the blade of his bat and gives the direction towards third man region for a easy single by Batish. With that single scoreboard moves on to 22 on the board. 35 is the target, 13 more runs required for the victory. 36 is the target, correction, 14 required for the victory. Zunaid balls, beautifully ball, flum in front of wicket. This is the one delivery that all leg spinner will going to enjoy. That line, very good line indeed, very good line. Fantastic delivery there from Zunaid. This is not an easy job, I will tell you.
especially in this condition when the ball, the direction of the wind is not that much of easy for the leg spinner, because you have to deliver the ball against the direction of the wind. And even though the condition is not favoring the leg spinner, but this man Junaid so far has been really bowled very tidy line and length. And Mustafa tried to, a little bit correction, the Bashir tried to play across the line of the delivery. Ball pitched in the line. Suresh Mudabidre has got a no hesitation in his mind, because he is also a leg spinner. He's been outstanding leg spinner for his team for a long time, who stick with his line and length, and you know exactly that delivery will going to hit the stumps. When the ball missed the stumps, when the bowler, the leg spinner ball around the leg and midline leg stump, that will going to be a wicket taking deliveries if the batsman missed the line. So scoreboard is stationed at 22. So far Junaid has been outstanding in this over. Right over the wicket, balls. This time chance of run out. Bowler's back drive. Opportunity missed out there by the bowler. Collision there between Junaid and the batsman, because the batsman looking for the run and bowler looking for the run out. By doing that, batsmen are really bowler is in trouble now. Batsman almost collision, hitting each other. The time of taking the run, I think the Junaid has been a little bit disappointed. I think he's really in trouble. I wish there will be no major damage for the player. What really happening there? There's a bowler's back drive, and bowler Junaid fumbled in the first attempt. In the second attempt, he tried to hit the stumps in non-striker's hand. Then while doing that, he's coming in the line of the batsman running between the wicket. The batsman only looking for saving his wicket, so that he is not realizing that the bowler is coming in right in front of him. So try to save his wicket. Then I think it's a collision, the bad collision between bowler and the batsman, and resulting in little bit injuries here for Junaid. He's been so far, he's been outstanding in this over. He considered just 3 runs out of 5 deliveries, and definitely he's a one bowled very well in this difficult condition when his team is required some restriction from the bowling. He bowled very well. Now score remains at 23. That means another 13 more runs required for the victory in 7 balls. Oh, I think injuries to his face, injuries to eyes. I think, my goodness, he just survived from that big injuries. Ball is not really hitting and side of his eyes. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೈದಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲೀಸ್ cooperative with the organizer. Looks like he's very fine. Good to see that I really like his level of energy. There need to be a big hand here for Junaid. Even he's getting injury, but he wanted to finish his over. Really to the true spirit of cricket here from Junaid. You know exactly how important this game is. After bowling the 5 good deliveries, he had to finish one more deliveries. Mustafa back on strike. Mustafa ready to face Junaid. Final time in this over. Hits that one firmly.
but not able to get the placement right as a short mid-on fielder fields the ball. Good over there from Zunaid. Excellent over. Excellent stuff. Just a 4 runs he conceded in that over. And then straight away Zunaid is leaving the field. But before that, I think he did a great job. Just over his eyes, that injury is taken place. Eyebrow. Into his eyebrow. So that no damage to his eyes. For the God shake, he's been safe here. Now, last and final over is remaining in the innings of Jargam Boys Shantinagar. And in that final over, they have to get another 12 runs to win this match. 6 ball, 12 runs required for the victory. It's a substitute fielder. Need to replace Zunaid. Twelve to get from last over, and wait and see who will going to ball that last over. 12 required for the victory. Even though 17 runs came in the over number 3. 6 ball 12 runs required for the victory. 6 ಬಾಲಲ್ಲಿ 12 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Salman brought into attack here. One more very young talented player from the region of Suratkal, Krishnapura. The big name as far as the bowling department is concerned. He is a very young talented bowler for the side. And wait and see how Salman will go into ball. The last over, 12 to get. Mustafa, experienced batsman. That was a little bit footwork there from the fielder at square leg, saving it as runs for his team. Quickly realizing he's not able to collect the ball from the hand, so he's just putting his right leg into the line, stopping certain runs for the team. Now 11 to get from 5 balls. The batsman is on strike. Mustafa Jr. 11 required from 5 balls. Salman, right arm over the wicket. Again going across the line off the delivery, but ball is dripping down the leg stump, declared area, so that the batsman will going to retain the strike. The bowler, the captain of KYC Katipala, will not go into bother about that single. They know exactly they need to protect the boundary. They need to protect the 6. 2 runs came, 10 required from 4 balls. Outside the line of off stamp, a wide call by umpire, bonus run. Declared area. The batsman will go into retain the strike. Now 8 to get from 4 balls, and the bowler started to feel the pressure. 8 to get from 4 deliveries. Mustafa, right-handed batsman, will going to take the strike from Salman. Right arm over the wicket, drives that one firmly, but not quite able to beat the infield. Misfield by the fielder, but not more than a single. Excellent fielding there by the mid-wicket fielder. Quickly charging into the ball, denying the second from the batsman. And now 7 to get from 3 balls. The experienced batsman Mustafa is back on strike. He's a danger batsman as far as the opposition KYC Katipala is concerned. The left-hand batsman always going to be danger. But in this particular cricket ground, umpire wanted to change the ball after examining the quality of the ball. They wanted to change the ball. Wait. Wait. Yes, it is. Umpire now changing that ball.
So 7 to get. Three balls remaining, 7 runs required for the victory. Mustafa back on strike. Just coming back to that left-hand batsman, not got a opportunity in the square of the wicket or behind the wicket. Very difficult to get the big shots. But in the offside region, they can clear the extra cover. They can clear the long off. They can clear the long on. That was an opportunity for the left-hand batsman, particularly in this cricket ground, because you can see that strong breeze is passing in front of wicket. And that's very interesting to see that how Mustafa will going to take down the leg stamp. 1+1. Now 5 to get, 3 to go. This is second time the bowler bowling wide. 1+1, 4 gifted runs. It's really the Salman not really able to handle the pressure here. 5 to get from 3 balls. 4 for the time. If the match ends with a tie, the winner will going to decide by toss. Now one fielder coming from deep long on inside the ring. Very interesting field set. Long off removed from and one fielder stationed at mid wicket. I don't really understand. And maybe the strategy that they wanted to save the couple of runs. This time improvising. Reverse sweep comes into play. They're running hard and they complete and get couple of runs easily. Sensible batting there from Mustafa. Now 2 balls remaining. 3 runs required for the victory. That's why I'm mentioning about Mustafa is very experienced, and when the condition like this, when a condition like if the match will going to tie, toss will going to decide the winner. 3 to get from 2 balls. Salman searching for the dot ball. Mustafa searching for the run. Just a rotation of strike he might be looking for. Sub that one. Over that for Winfield. They're running hard. Looking for 2. Before the fielder from the square leg to run back to collect that one. Now Mustafa collecting a very important couple of runs. Now Jangam boys. No chance of course, losing this match. At least they can tie the match. But Mustafa wanted to win this match. 1 ball remaining, 1 runs required for the victory. Salman wanted a dotted delivery. At least he wanted to go to the toss. If they're able to ball a dotted delivery, the last option for KYC Khatipalla. But Zangam boys, especially the Mustafa, after battling hard in the middle, he doesn't want to tie the match. He wanted to pick the single. Very interesting to see. Will it going to be a single? Will it going to be a dot? Will it going to be a victory? Will it going to be a tie? All we can see, the closing fielder tried to save the singles. Needed to be. No question of keeping the field in the deep. The Mustafa coming down the track, down the leg stamp, wide call without an effort from the batsman. Bowler bowls a wide, pays the penalty. Disaster for KYC Khatipalla. That's why it's so important in cricket, the discipline. Discipline in the sense, not balls, wide balls, no balls, extra runs. It's always going to be a key in cricket. The Salman has bowled so many wide balls, not really handling the pressure. Pays the penalty for that, and the effort of Zunaid is gone in vain. The leg spinner, after he's been outstanding performance from the ball, he is, I think, some more disappointment player for KYC, because he is the one takes a match away from the opposition after bowling a fantastic 4th over. And then Salman, the last over bowled. Very disappointment.
So welcome back for the next match. Team SNNC Kasaragod. Sri Namana Kasaragod takes on Team Matrix. It's a good match. And Team SNNC Kasaragod, they came from a long way, from 55 kilometers, our neighboring state, Kerala, the Kasaragod district. They are made an impression in their first appearance in UCCK ground in STC Trophy 2021. They become the runners-up, and now they are in this particular cricket tournament. They came into the favorite of coming into the finals. Of course, even Team Matrix also, they got a very good players in the side. So we are expecting some great battle between these two teams. And before the innings will go into comments of SNNC Kasaragod, I would like to call upon Mr. Gopi to take over the microphone in our national language. Gopi, welcome Gopi. And once again, Gopi, SNNC, very talented players in the side of SNNC, and they are witnessed their level of performance in the STC Trophy 2021, and they came into the finals of this cricket tournament as well. So in this particular cricket tournament, I think Team Matrix also, they got a good team, good players in the side as well, and altogether we're expecting some good battle between these two very good teams, isn't it? एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, SNNC कासरगोड अपने पहले ही अपीयरेंस में उन्होंने रनर्स अप का खिताब प्राप्त किया था उर्वा क्रिकेट मैदान पर STC ट्रॉफी में। और यहाँ पर जहाँ तक सवाल है, वो सफलता के सिलसिले को यहाँ पर भी वो बरकरार रखना चाहेंगे। और जहाँ तक टीम मैट्रिक्स का सवाल है, टीम मैट्रिक्स भी एक बेहतरीन टीमों में से एक जानी जाती है, और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि इस मैच में हमें एक बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगा दोनों टीमों के बीच। और पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। मैच की पहली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त कवर की दिशा में। एक रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और यशस्वी तम्मा एक रन इस बीच पूर्ण करते हुए। और रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। और गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार उछाला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। कोई फील्डर वहां पर नहीं, गेंद का पीछा करते हुए फील्डर, और इससे पहले कि गेंद को लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर फील्डर फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। तो जहां तक टॉस का सवाल है, टीम मैट्रिक्स ने टॉस जीता था और SNNC को पहले बल्लेबाजी करने के लिए उन्होंने कहा था। फलस्वरूप उनकी पारी का पहला ओवर यहां पर प्रगति पर। यह गेंद और बेहतरीन, एब्सोल्युटली गुड वन, और बेहतर फील्डिंग वहां पर डाइविंग लगाते हुए। जिस तेजी के साथ गेंद आए उतनी ही तेजी के साथ गेंद पर डाइविंग लगाते हुए गेंद को रोकने में सफल। स्क्वायर लेग 20 गज के दायरे के अंदर फील्डर, और इस बेहतरीन फील्डिंग की बदौलत सिर्फ एकमात्र रन उनके और एकमात्र रन उन्होंने प्रदान किए। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। गेंदबाज मुस्तफा गेंदबाजी इस वक्त करते हुए, स्ट्राइक लेते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज। यह गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, गेंद पहुंची शॉट्स को लेग पर एक बार फिर से उसी फील्डर के हाथों में। और जब तक दूसरे फील्डर के हाथों से गेंद छूटे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। तो यहाँ पर स्ट्राइकर कार्तिक, लंबे कद के खिलाड़ी, और तो कार्तिक नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद, जबकि प्रीतु इस वक्त लंबे कद के खिलाड़ी स्ट्राइक लेते हुए। इस बार वाइड का इशारा और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 7 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर यहां पर प्रगति पर। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। मुस्तफा 10 से 12 बार गेंद को जमीन पर पटकने के बाद दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, और इस बीच बल्लेबाज को रन नहीं मिलेगा।
तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 7 रनों पर। अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। मुस्तफा एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हुए और दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछाला लेकिन काफी स्क्वायरली, और जब तक गेंद वहां पर कुछ वहां पर टिप्पा खाए, चंद टिप्पों बाद अपने रफ्तार को खो बैठे और जब तक फील्डर उस गेंद तक पहुंचे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन यहां पर प्राप्त करने का। 9 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 9 विदाउट लॉस, pretty good start for SNNC Kasaragod after being losing the toss and put it to bat by Team Matrix in the match number 5 of Jacks Trophy 2022. They made a steady start, in fact. Pretty good start for them. 9 without loss after first over. तो जहां तक अगले मैच का सवाल है, फ्रेंड्स KFC कुंचारी विल टेक्स ओवर चैलेंज कृष्णापुरा इन द नेक्स्ट मैच, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। एक बेहतर शुरुआत यहां पर कर चुका है पहले ओवर के बाद साई नमना कसरगोड। बद्रू इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए दूसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ SNNC कसरगोड की पारी में। नई ओवर की पहली गेंद, यह गेंद स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, डीप मिड विकेट पर रक्षण प्रोटेक्शन मौजूद और सिर्फ एकमात्र रन उनके और टीम को प्राप्त होता हुआ और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर। 10 रन बिना किसी नुकसान के। ये दोनों बल्लेबाज एक बेहतर शुरुआत देने की कोशिश इस वक्त करते हुए, ये गेंद ऑन साइड पर स्क्वायरली, लेकिन 1 डिक्लेयर्ड का जो वहां पर स्टिकर जो चिपकाया गया है उस पर गेंद इस वक्त जाकर लग चुकी है और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 11 रन बिना किसी नुकसान के। 5 ओवर प्रति पारी खेले जाएंगे और उसकी पारी का दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, बद्रू की गेंद, यह गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ फिर स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 12 रनों पर। तो कुल मिलाकर 3 ओवर इस ओवर के बाद और खेले जाने बाकी है उनकी पारी में। यह गेंद लेग स्टंप पर शफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, लेकिन आखिरी मौके पर गेंद उनके पहुंच से बाहर और इस बीच वाइड का इशारा अंपायर द्वारा 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 13 रनों पर बिना किसी नुकसान के। ये गेंद चेक किया लॉन्ग ऑन पर, फील्डर नहीं, गेंद वहां पर वृक्ष पर वहां पर टकरा चुकी है। नारियल के पेड़ पर शायद गेंद टकराई थी वहां पर, वरना निश्चित रूप से यहां पर यह कैच आउट हो सकता था। तो इस गेंद पर रन मिले 2 और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर और बद्रू एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, यही गेंद इस बार पैरों पर टकराई शफल होते हुए, अपील जरूर लेकिन अंपायर ने इसे नकार दिया क्योंकि गेंद कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और इस बीच लेग बाय के रूप में यह रन यहां पर जुड़ चुका है 16-16। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बद्रू इस बार गेंदबाजी करेंगे प्रीतु के लिए। ये गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली गुड वन along the carpet and went into the hands of wicket keeper after beating the batsman and there is no possibility of any run। तो कुल मिलाकर इस ओवर में 7 रन बने मेरे ख्याल से, पहले ओवर में 9 रन बने थे, 2 ओवर के बाद 16 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। एक बेहतर शुरुआत कहना पड़ेगा कर चुका है साई नमना क्रिकेटर्स कासरगोड और कुल मिलाकर अब उनकी पारी में 3 ओवर का खेल और फेंके जाने बाकी। ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ KFC ಕುಂಚಾಡಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ
ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. So back to this game, 16 without loss, 2 overs completed, 3 to go, and the bowler is now brought into the attack is एक बेहतरीन लाइव कवरेज आप देख सकते हैं जो मैंगलोर मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है यूट्यूब पर। और जहाँ तक इस श्रृंखला का सवाल है तो जैक्स ट्रॉफी 2022 इस श्रृंखला का 5वां मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ, और इस श्रृंखला का शानदार तरीके से आयोजन किया है जैक्स ट्रॉफी पंजीमुगर ने, और निस्संदेह ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहाँ पर रख करती हुई। तीसरा ओवर SNNC कासरगोड की पारी में यहाँ पर शुरू होता हुआ, और शाकिर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज कार्तिक के लिए। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार रहा। पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर ने बड़ी मुश्किल के साथ गेंद को रोका विकेटों के पीछे, लेकिन इस बीच 1 रन दौड़कर बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। 1+1, 2 runs now added to the total in the face of extras, and with that couple of runs the scoreboard is now moving up to 18 without loss at the start of the third over in fact। और प्रीतु स्ट्राइक पर आ चुके हैं। गेंदबाज की ये गेंद फुल टॉस, लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए। गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा था, और इससे पहले की गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन पर विकेट कीपर स्वयं अपने पीछे की ओर जाकर अपने दूसरे प्रयत्न में फील्ड करे। बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, 22 का इशारा अंपायर का, और स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 19 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 19 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिना हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद अच्छी एक्स्ट्रा क्विकर, एब्सोल्युटली परफेक्ट वन along the carpet and went into the hands of wicket keeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run, and the scoreboard stays at 19 without loss in the over number 3 in progress in their innings। हवा का रुख काफी तेज, मैदान की दाई से बाई और इस वक्त हवा गुजरती हुई, जिस तरीके से वृक्षों के पत्ते लहरा रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवा का रुख इस वक्त काफी हद तक तेज है। ये गेंद हल्के से गेंद चिप किया हवा में, फील्डर मिड ऑफ पर उनके हाथों में गेंद पहुंची, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 1 यहां पर गिर चुका है। ऑन साइड पर गेंद को चिप करना चाहा था, लेकिन गेंद टॉप पर टकराने के बाद ऑफ साइड पर गई मिड ऑफ पर, और वहां पर एक आसार सा कैच फील्डर ने लपका। तो एक बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है कार्तिक का, और 19 रनों की आरंभिक साझेदारी यहां पर टूट चुकी है कार्तिक के रूप में, और SNNC कासरगोड अपना पहला विकेट यहां पर खो चुका है 19 रनों पर। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तो कार्तिक का विकेट गिर जाने के बाद गिरी का आगमन यहां पर होता हुआ, और वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार प्रीतु, और 19 रनों की आरंभिक विकेट की साझेदारी टूट चुकी है पिछली गेंद पर कार्तिक के रूप में, और गेंदबाज शाकिर गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। यह गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, शॉर्ट फाइन लेग पर प्रोटेक्शन मौजूद, और वाइड का इशारा अंपायर का। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 20 रनों पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। दाहिने हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद उछालना चाहता आखिरी मौके पर, गेंद उनके बल्ले पर नहीं आई, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, थोड़ी सी उछाल लेती हुई, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन्स बल्लेबाज को मिला 1 बाई के रूप में।
तो स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर. इट्स 21 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट नाउ. और एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद चिप किया. इस बार गेंद हवा में, फील्डर शायद गेंद के नीचे आते हुए, नहीं मेरे ख्याल से कोई फील्डर वहां पर नहीं था, और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. तो लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे शायद थोड़ा सा मिस जजमेंट, और वो गेंद को लपकने के लिए आगे की ओर आए, लेकिन गेंद उनके आगे टिप्पा खाकर सीधे उनके सिर के ऊपर से निकल गई. लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर. 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. गुड प्रोग्रेसिंग हियर नाउ फॉर एसएनएनसी कासरगोड. और एक बेहतर स्ट्रोक पिछले गेंद पर प्रीतु ने खेला था, फलस्वरूप चौका वो प्राप्त करते हुए. शाकिर दाहिने हाथ राउंड द विकेट प्रीतु के लिए. फुल टॉस इस बार स्वीप किया है खूबसूरती के साथ, और बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद रुक चुकी है वहां पर कुछ घास पर टकराने के बाद. और इससे पहले कि आगे की ओर आकर फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का. और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर. 27 एक बेहतर पारी इस वक्त खेलते हुए प्रीतु. और 3 ओवर के बाद मैं कहूंगा एसएनएनसी कासरगोड नाउ दे आर लुकिंग राइट ऑन टॉप. 27 for 1 आफ्टर 3 ओवर्स. 2 ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं उनके इन बचे हुए 2 ओवर्स में क्या क्या होता है. और सतीश आइए आपको बुलाते हैं माइक्रोफोन पर. और मैं समझता हूं द फर्स्ट 3 ओवर्स कंप्लीटली बिलोंग्स टू द बैट्समैन ऑफ एसएनएनसी. और खासकर कार्तिक और प्रीतु ने एक बेहतर शुरुआत उन्हें दी थी, और यहाँ पर प्रीतु मौजूद है. और मैं समझता हूँ प्रीतु की उपस्थिति पारी के अंतिम ओवर तक बेहद जरूरी है. अगर प्रीतु पारी के अंतिम गेंद तक रुकते हैं तो मैं समझता हूँ एक बेहतर स्कोर यहाँ पर एसएनएनसी कासरगोड खड़ा कर सकता है. Exactly, Gopi. And just like you're mentioning about the presence of Pritham, here is Giri. He played that quite beautiful shot down to deep cow point region for 3 valuable runs. And with the help of 3 valuable runs, scoreboard moves on to 30 on the board. That was really a possible one when you laid the foundation for the first wicket. 2 opening batter, Karthik and then Pritham. They laid the foundation, and they got a very good start from the bat. Again down the leg stump, but well within the reach of the batsman. Pritham little bit across the line of the delivery, tried to swing his bat but missed it completely, and there is no possibility of any run. Badru, right arm over the wicket, is a lofted high and not handsome. Oh, just looks like when he's hoisting it over, lofted that one down to long off. Looks like by seeing the flow of the bat of the batsman Pritham, it might be going to be a 6 there, but I don't think Pritham is able to middle that one well. I don't think it's coming from the sweet part of the bat. I think it's the middle part of the bat is taken place. That's why it got that much of elevation he's looking for. And long off fielder takes a very good catch in the long off. Good judgment. And the innings of Pritham comes to an end. Both the opening batsmen are back into pavilion. And Pritham played a very good innings of 13 valuable runs, and he's back into pavilion. And Badru has got a very important breakthrough for Team Matrix. 30 for the loss of 2 wickets. This time sensible batting there from Giri there. Replacing the ball. Here comes the throw, but not quick enough to stop the couple of runs from Giri there. Sensible batting from Giri. Quite deliberately he played that one in the air. You know exactly there is no deep cover point. There is extra cover, and it's a long chase here for the extra cover fielder to run across to the direction of the ball. Batsman got ample time to complete that couple of runs. Badru Baus again this time. This is going to be a big one. This is a huge one and monumental. What a great shot coming from the bat of Giri there. Nothing wrong with the line of the delivery, I will tell you. Ball is in the middle stump. And Giri, picked the line and line quite beautifully. Right from the middle of the bat. And the instrumental sound coming from the bat. Swept that one quite beautifully down to spine leg region. Not more than a single here. With that single, scoreboard moves on to
39 on the board. The over number 4 is completed, and SNNC are looking in a commanding position. They are really looking towards the score around 45 to 50. The last over remaining. I'm just mentioning about SNNC. They're coming from long way from Mangalore to Kasaragod. It's almost 60 plus kilometers, and they made an impression. I already mentioned. They got some very good players in the side, especially that opening batsman. After getting opening batter Karthik and then Preetham, one is a little master, one is a very strong, well-built personality. Preetham, the opening batsmen are laid the foundation for the first wicket. The 19 runs they got. Even they lost the wicket afterwards. The Giri taking a full charge of accelerating the run rate. He's the captain of the side. You know exactly what to do. And so far he's been outstanding from the bat. Ismail is going to bowl the last and final of the innings of SNNC. The good score on the board, 39. Going for the big shot, beautifully bowled, excellent delivery, the perfect delivery to ball in the final over. So good start from the bowler. Ismail has got a smile in his face. Ismail after defeating the bat of Giri, bowling right arm round the wicket. Again one more dotted delivery. Again he just defeating the bat of Giri there. Not an easy one. Giri already hit 1-6 in the previous over. Try to hit one more, but two deliveries. Batsman able to handle the pressure, but bowling a very tidy line. This time Giri lofted, handsome. This time it is in a flatter version. Waiting and waiting, and at last he managed to send it over the head of the mid wicket for a maximum 6. That ball came like a rocket and went like a bullet. Second sixer came from the bat of Giri. What a danger batsman he's been. Two dotted delivery, no problem whatsoever. He got a confident in his ability, potential. Outside the line of off stump. Straight away the pressure for the bowler Ismail after bowling two dotted deliveries. Once the Giri is hit that one down to mid wicket, he's lost his all confidence. The scoreboard moves on to 47 now. 1+1. The huge score on the board for SNNC. Team Matrix need to be careful. Again one more wide. Two good deliveries. And you can imagine if one batsman hits a bowler, the one hit will definitely going to affect the level of confidence of the bowler. Two wide balls afterwards. And scoreboard moves on to 48 now. One more dotted delivery, chance of run out. He is sacrificing his wicket. The batsman know exactly. Now it's time to give chance to Giri. Ashit is the batsman is back into pavilion. After he missed the ball completely, fumbled from wicketkeeper, but not quite able to get the single in the negation. Recovered very well by wicketkeeper behind the stump to stop the single. But Giri back on strike now. Two more deliveries left. I request captain of challenge Krishnapura to report here for the toss. Prince KFC Konchadi appeal for leg before wicket. Umpire says not out. Leg by call by umpire. One more addition to total. And with that single, scoreboard moves on to 49. One shot of 50. Friends, KFC Konchadi ಹಾಗೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ನಾನೇ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ. Last delivery remaining in their innings. The new batsman will go into face. Ajju.
one more very quality middle order batsman for the side, but not much delivery is remaining here. Outside edge of the bat, they're going for the single, misfield by the fielder. The 50 comes up here for SNNC. And exactly the 50 runs they scored in 5 overs at the rate of exactly 10 runs per over. And they set a target of 51 to win the match for Team Matrix. It's definitely going to be a big score in this particular kick round. 50 is going to be a good score. And that's it for you. At last, the Team Matrix are not quite really happy with their bowling performance, but they can come back with the bat. They need to bat very well if they wanted to win the match. The run rate required is just over 10 runs per over. If they wanted to win the match, needed some excellent batting performance against some great bowling department. I really want to tell you, the SNNC, they won that, they into the finals of that STC Trophy 2021. The first tournament which is played in the season at UCG Cricket Ground. They won all the matches because of their bowling department. They got a fantastic bowling department, no doubt at all. And against their formidable bowling department, I think Team Matrix has really need to pull their socks in their batting department. They need to bat very well. And of course, in cricket, anything can be possible. And wait and see how it's going to be possible here for Team Matrix. Meanwhile, I request friends KFC Konchadi ಹಾಗೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಿಮಗಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ KFC ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದುಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. And welcome back. And before the innings will going to start of Team Matrix, I would like to call upon Gopi for the further explanation of the match in our national language Hindi. And Gopi, just like what we are mentioning about the potential of SNNC, and they are once again sending the message, strong message that they are the strong contender of coming into the final of this cricket tournament as well, because the way they batted, isn't it? The first it was a combination of a little master Karthik and then Pritham. They laid the foundation for the first wicket, 19 runs. Once Karthik is gone, once Pritham is gone, Gopi, then in the middle order, the Giri is always leading from the front. And still I remember his innings in the UCG cricket ground as well. Whenever this team is required some runs in the middle order, he is the one who is taking a charge. Once again, what a great innings. That two massive sixes which came from the bat of Giri takes their team totally into 50. What do you think about that 50? Will it going to be easy? Will it going to be tougher here for Team Matrix? जैसा कि आपने फरमाया सतीश, 50 रनों का लक्ष्य ज़्यादा कठिन भी नहीं है लेकिन ज़्यादा आसान भी नहीं है. और अगेंस्ट द स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप एसएनएनसी के पास न सिर्फ सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप है बल्कि दे गॉट अ स्ट्रांग बॉलिंग डिपार्टमेंट. तो मैं समझता हूँ उस गेंदबाजी के डिपार्टमेंट के खिलाफ अगर बल्लेबाजी करनी हो तो टीम मैट्रिक्स को कुछ उनके दैट इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट अटेम्प्ट. गेंद पर डाइविंग लगाई थी बाईं ओर, लेकिन आखिरी मौके पर गेंद पर पहुंचने में असफल, लेकिन बेहतरीन प्रयत्न यहां पर उन्होंने किया. 2 रन मिल चुके हैं. और जैसा कि मैंने वन शॉट का इशारा, तो जैसा कि मैं फरमा रहा था कि अगर उस सशक्त गेंदबाजी के डिपार्टमेंट के खिलाफ अगर बल्लेबाजी करनी है तो कुछ विशेष रणनीति, डिफरेंट टैक्टिक्स के साथ बल्लेबाजी करनी होगी टीम मैट्रिक्स के बल्लेबाजों को. और देखता ही है कि वे अपने इस रणनीति को किस रूप में कार्यगत करते हैं. और पहली गेंद पर 2 रन, एक मात्र रन, एक शॉट का इशारा था, तो उस 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. और जहाँ तक का सवाल है स्ट्राइक का, तो स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार रमीज. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद अच्छी गेंद थी. इस वक्त गेंदबाज थे धर्मा जो कि राउंड द विकेट उन्होंने गेंद फेंकी थी. गेंद को खेलना चाहा था, चूंकि गेंद उनके बल्ले पर नहीं आए, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद, और गेंद को फील्ड कर लिया गया. शॉर्ट थर्ड मैन पर रन नहीं मिलेगा. धर्मा एक बार फिर से तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद
एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द अंपायर सिग्नल। लेकिन बेहतरीन तरीके से इस कैच को वहां पर लपका था। मैं समझता हूं नॉन स्ट्राइक रन बल्लेबाज के पीठ पर गेंद टकराई थी और गेंद जैसे ही हवा में उछली, मिड ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने तुरंत भाप लिया कि गेंद उनकी ओर आ रही है। अपने आगे की ओर डाइविंग लगाते हुए इस गेंद को उन्होंने लपका और निस्संदेह ये एक बेहतरीन प्रयत्न कहा जाएगा। क्यों सतीश? Exactly, Gopi. And meanwhile, umpire says it's not out. And but what a great attempt! I think it's ball after one bounce. That ball went to the back of the non-strikers. But a great, valiant effort from that fielder at extra cover. And altogether, very good cricket, Gopi, in the middle. बिल्कुल सतीश, बेहतरीन क्रिकेट पिछले गेंद पर हमें देखने को मिला और यहाँ पर गेंदबाज इस वक्त तैयार, ये गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहा, गेंद ठीक तरह से खेल नहीं पाए, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, एक रन मिलेगा मिड विकेट पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर यहां पर पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। गेंदबाज धर्मा एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद अल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन पर गेंद निकल चुकी है 1 रन के लिए और 1 रन घोषित और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर। निस्संदेह टीम मैट्रिक्स को एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त जरूरत, अगर उन्हें 50-51 रनों के लंबे से लक्ष्य तक अगर पहुंचना है तो। और एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, दाइनात राउंड द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद, एक्स्ट्रा विकेट, दैट इज एन एब्सोल्युटली एक्स्ट्रा विकेट डिलीवरी और स्ट्रोक्स खेलने में चूके और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। बेहतर ओवर धर्मा का समाप्त यहां पर हो चुका है जिसमें सिर्फ 4 रन उन्होंने दिए और पहले ओवर के बाद एक बेहतरीन शुरुआत गेंदबाजी के जरिए वो अपने टीम को दे चुके हैं। पहले ओवर के बाद धीमा शुरुआत यहां पर कर चुका है टीम मैट्रिक्स, 4 रन बिना किसी नुकसान के, 51 रनों का लक्ष्य, 47 रन और बनाने हैं बचे पे 4 ओवर में और अब आस्किंग रन रेट जा पहुंचा है 11.75 रन प्रति ओवर। द रिक्वायर्ड रन रेट इज नाउ गॉन अप टू एग्जैक्टली 11.75 रन पर ओवर, 47 टू गेट फ्रॉम रिमाइनिंग 4 ओवर्स। और इस वक्त गेंदबाज अश्वित गेंदबाजी शुरू करते हुए, जुम्मी इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए, अश्वित की गेंदों का पहली गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए और वाइड का इशारा और वाइड की स्टर्न के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 5 रनों पर, 5 विदाउट लॉस और वाइड के साथ अश्वित गेंदबाजी की शुरुआत यहां पर कर चुके हैं। तो फील्डिंग में जमावट कुछ हद तक यहां पर चलते हुए और अश्वित जुम्मी के लिए एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिना तो ऊपर द विकेट, ये गेंद इस बार बेहतरीन गेंदबाजी, प्लम्ब इन फ्रंट और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। जुम्मी गेंद को उछालना चाहते थे लेकिन गेंद बिल्कुल लाइन पर टिप्पा खाते हुए मिड स्टंप को कंसंट्रेट केंद्रीकृत कर आते हुए उनके पैर पर टकराई और अंपायर हरीश पटेल को कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई उन्हें प्लम्ब इन फ्रंट लेग बिफोर विकेट के रूप में घोषित करने में। और पहला विकेट गिर चुका है, जुम्मी आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और 5 रनों पर पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। इट्स 5 for 1। Faizam comes out to the middle as a number 3 batsman for team matrix और अश्वित इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज फैजाम के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को जाने दिया सीधे विकेट कीपर के हाथों में लेकिन गेंद कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और यहां पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 5 रनों पर। निस्संदेह कुछ करारे स्ट्रोक्स की इस वक्त सख्त जरूरत है टीम मैट्रिक्स को अपने टीम के रन की गति को एक्सेलरेट करने के लिए। यह गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, आई थिंक इज गॉट अ बैट ऑन दैट, 1 रन मिलेगा। इनफैक्ट इट्स अ लेग बाय डिक्लेयर्ड बाय अंपायर, नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द बैट एंड बॉल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रनों पर। रन्स सिंगल्स के रूप में यहां पर बनते हुए और जहां तक सवाल है चौके और छक्कों का, कोशिश तो जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज
करारे स्ट्रोक्स लगाने की, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई। ये गेंद इस बार चिप किया, गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद का इंतजार करते हुए दूसरा रन लेना चाहते हैं, थोड़ी चरबराहट, थ्रो पहुंचा लेकिन थ्रो काफी धीमा, और इस बीच बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। थोड़ी सी हिचकिचाहट जरूर हुई थी दूसरा रन दौड़ते समय शुरू में, लेकिन अंतिम क्षण में थ्रो धीमा पहुंचने की वजह से बल्लेबाज दूसरा रन आसानी के साथ यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। 8 रन 8, और गेंदबाज अश्वित इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद चिप किया, इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद जाती है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, गेंद का पीछा करते हुए फील्डर 1 रन मिलेगा, दूसरा रन भी मिलेगा, और 2 रनों के साथ आखिरकार बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और अश्वित इस वक्त दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद अच्छी गेंद, इस बार अपील जारी है, अपने तीसरे चौथे प्रयत्न में गेंद को उन्होंने पकड़ा था, लेकिन अंपायर ने कहा कि जी नहीं, गेंद आफ्टर फर्स्ट बाउंस आई है, तो यहां पर बल्लेबाज बच चुके, ओवर नंबर 2 की समाप्ति हो चुकी है। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 40 रन चाहिए 3 ओवर में, और आस्किंग रेट अब जा पहुंचा है 13.33 रन प्रति ओवर। 13 the asking rate is now gone up to exactly 13.33 runs per over, 40 required in remaining 3 ओवर। तो सतीश आइए, आपको बुलाता है माइक्रोफोन पर। 40 रन 3 ओवर का खेल बाकी, और मैं समझता हूं इस वक्त टीम मैट्रिक्स को चौके या छक्के ही इस मैच में वापस ला सकते हैं। Exactly, Gopi. That big shots badly required in the remaining overs if they wanted to back in the match, because asking run rate is climbing up for each and every economical overs. 2 great overs bowled there by the 2 opening bowlers of SNNC. Third over will going to start. Right arm over the wicket balls. Batsman drives it on towards the deep, long on protection there in the deep. Just a single for the batsman, and once again the runs are coming in the form of singles only. And the scoreboard now moves on to 11 on the board. The 51 will going to be a target. 40 runs required now in 17 deliveries. Aju, one more experienced campaigner for the side. Right arm round the wicket, he bowls. Drives it and beautifully, straight to the hands of fieldsman. A little bit urgency shown there by the fielder. It just removes his eyes from the ball. Try to collect the ball. He's just looking for the run out, but he's not really looking for the ball, and that's why ball just slipping out of his hand, and batsman got opportunity to cross off for a single. So with that single, scoreboard now moves on to 12 on the board. Faizam, the very well-beaten strong personality, and his time opportunity of caught and ball. That was a powerfully driven back right from the middle of the bat, and bowler tried to take that catch, but very difficult once again for any bowler on his follow through when the batsman hit the ball very firmly back to bowler. Little time to react, and the bowler not quite able to hold the catch as Aju, but he certainly stopped the runs for his team. Aju bowls, right arm over the wicket, he bowls this time again, looking for the big shot, not quite able to get the placement right. The fieldsman then the deep mid wicket region, and just a single for the batsman. Frustration continues here for the batsmen as they're not really getting some boundaries, they're not really getting any sixes, and otherwise it's very difficult for them to win this match. Aju with the short run up. Pass umpire Sriniket, right arm round the wicket balls. This time that was a really good delivery indeed. When you are coming across round the wicket, angling round the wicket, that was a fantastic line to ball, because that will definitely going to confuse the batsman, and batsman just misjudging the line of the delivery. It is well within the reach of the batsman, and there is no possibility of any run. Ajibal system drives it and powerfully down to Vadish long on region. They're looking for the second. In comes the throw, and they settle for the single. Just a single. One more quality over. That's why I mentioned earlier. Even I mentioned about the bowling department of SNNC. They got a strong bowling department.
all we can see that the three bowlers, they managed very well to contain the batsman from the big shots. Once against him, required run rate is about 10 runs per hour. If you are not able to get the big shots like boundaries and sixes, which is badly required in each and every over, and when the boundaries are dried up, then very difficult to save this match. But still, these batsmen are battling hard in the middle, trying hard in the middle. 36 runs required from 12 balls. That means 12 runs per over required run rate. Dharma. And this time again, placement is not enough. And a little bit fumble from Ashwin from the deep mid-wicket region. The batsman got ample time to complete the couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 17. That means 34 more runs required for the victory in 11 balls. Again in dries wet one. I already mentioned when you are having a protection more in front of the wicket, we can see that the bodies out, so many bodies out there in the deep, long on, mid wicket, widest long on. So it's very difficult to get the placement right. There is no deep backward square legs, but one in front of wicket. Dharma. Balls. Oh, look at that athletic work. Oh, fantastic. Oh, the magnificent. Look at that man. He has been outstanding, Karthik, behind the wicket. Diving and gymnastic work collection there from fielder, wicketkeeper behind the stump. Again top edge, but it has safely landed. Not more than a single. One more addition to total. Scoreboard moves on to 20 on the board. 31 more runs required for the victory. Dharma. Bowling right arm over the wicket to Faizam. Going for the big shot. Again not quite getting hold of that one properly. Fielder that in a deep mid wicket, quickly charging towards the ball. Just a single for the batsman. Well, we can see that frustration continues here for Team Matrix, are really not getting any big strokes in the middle. This is over number 4 in progress. Dharma. This time lofted and straight to the hands of long off fielder. You can get the distance if you hit the ball towards a long on region, but very difficult to get the distance when you try to hit that one onto the long off region. That ball just losing that the strength of that strokes because of the direction of the wind is not helping in the long off region, in the offside region. That's why shot selection is going to be very key, especially in the particular cricket ground. And wicket number 2 is back into pavilion of Team Matrix. The frustration, the pressure, the continues here. Nizam is a new batsman. Dharma has got a very important breakthrough. Right arm around the wicket to Faizam. Rise straight to the hands of mid-off. One more wicket is back into pavilion. Back-to-back 2 wickets for Dharma in the final 2 deliveries of his over. Now it's the last over remaining. Still they have to get another 30 runs to win this match in final over. That's why I mentioned when Team Matrix are the bowling in the middle, when they're conceding runs, when hitting 2 sixes, I already mentioned these all runs are really going to be very costly for Team Matrix, because SNNC they got some professional bowling department, and against the bowling department getting 50 runs is not a joke here. And now 30 to get from last over. Rafiq is a new batsman in the left-hand batsman. I think he's been I want to see him early in the stage, because these are the kind of batsmen who can be very, very useful, because when you are getting the 50, you needed some rotation of strike as well, along with some big shots. The rotation of strike is also important, and Rafiq is a kind of batsman who can rotate the strike quite nicely. This time he lofted, one more wicket, so 3 deliveries, the 3 wickets for SNNC. But this time the first delivery of the final over, the batsman back into pavilion. Now 5 balls remaining, 30 required. That means Rafiq need to become Yuvraj Singh. 5 sixes in a row required.
Of course, Yuvraj Singh hits 6 sixes in a row in a T20 World Cup against England. Stuart Broad is a bowler. Now, 4 minutes left in this game because 4 balls remaining, and they have to get 30 runs to win the match. Ajay coming down the track again. Look at the variation in the bowling. Quickly realizing the batsman coming down the track, changing the line. Clever piece of bowling, and there is no possibility of any run. Going for the reverse sweep. Appeal for leg before wicket. Umpire says not out, but here a chance of run out. It's gone. One more wicket is back into pavilion. Now just a formality is left in this game. 2 balls remaining. Long way to go. And that was a really highly disciplined performance there from SNNC. The batting has been outstanding. Pritham, Giri, Karthik, all have done a great job. And the bowling department, look at that. Each and every bowler stuck to their job. This time Rafiq lofted that one handsomely down to long off, but not more than a single. Now last delivery left in this over. Just a 1 ball remaining for the celebration for the victory for SNNC. This time lofted, but not quite enough to beat the fielder. And one more wicket is back into pavilion. Comprehensive victory for SNNC against Team Matrix. They won the match with a big margin of 28 runs. Of course, it's a big margin in a 5 hours format of the games. That 28 runs always going to be a big margin. Congratulations, SNNC. Hard luck, Team Matrix. So you have to be very, very noticeable in your fielding and bowling department. You need to have some kind of improvement, even in the batting department as well. And of course, Team Matrix, they're the new team. I will tell you, there's a particular season they have started their journey in this cricket world. Of course, experience is going to be a big teacher, and you need to learn from experience. That's very important. Once you started learn from your experience, that will definitely take you into successful. And the winning and losing is a part of cricket, but learning from the mistake is always going to be a key for each and every team. And I hope the Team Matrix definitely will go into learn from their mistakes, and hope Team Matrix will definitely going to bounce back in coming tournaments. So congratulations SNNC, and better luck Team Matrix for incoming tournaments. So meanwhile, we'll take a short break, and we are coming back to the next match, and of course one more good match. Friends KFC Konchadi takes on Challenge Krishnapura, and wait and see how Friends KFC Konchadi will going to take the challenge from Krishnapura. We'll take a short break. Thank you.
धन्यवाद सतीश। तो इस वक्त मैच शुरू होने जा रहा है केएफसी कुंचाड़ी और चैलेंज कृष्णापुर के बीच। और टॉस जो कि केएफसी कुंचाड़ी ने जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है, और फलस्वरूप इस वक्त दोनों आरंभिक बल्लेबाज चैलेंज कृष्णापुर के क्रीज पर मौजूद सोहेल और यासीर इस वक्त दोनों आरंभिक बल्लेबाज, जबकि गेंदबाजी इस वक्त संभालते हुए गीतेश। और मैच की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार गेंदबाज गीतेश। अंपायर इस श्रृंखला के रूल्स नियमों के बारे में समझाते हुए बल्लेबाजों को, और इंतजार है मैच की पहली गेंद का। दोपहर का वक्त 2:45 यहाँ पर बच चुके हैं। हवा का रुख काफी तेज, बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर इस वक्त छा चुकी है। बहुत ही सुंदर सा नजारा हमें यहाँ से दिखाई देता हुआ। गुरुपुर रिवर, गुरुपुर नदी मैदान की दाईं ओर से गुजरती हुई, और हमारे कमेंटेटर बॉक्स के ठीक सामने जो कुलूर का पुल ब्रिज जो कि नजर आता हुआ, जिसमें से काफी गाड़ियां इस वक्त गुजरती हुई, और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा इस एक सुंदर सा नजारा हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। और मैच की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, बल्ले का बाहरी किनारा गेंद टकराया था, और इससे पहले की गेंद को गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है। 1 रन घोषित, और 1 रन के 7 रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। सोहेल का खाता यहाँ पर खुल चुका है। 1 रन 90 रन से नुकसान के गेंदबाज गीतेश एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ। गेंद जाती है मिड ऑन पर, बेहतर फील्डिंग वहां पर, लेकिन ठीक तरह से गेंद को फील्ड नहीं कर पाए, और इसका फायदा उठाकर बल्लेबाज ने दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर लिया। गेंद को पहले प्रयत्न में ठीक तरह से फील्ड नहीं कर पाए थे, जब तक दूसरे या तीसरे प्रयत्न में वो दोबारा गेंद को फील्ड करे। बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 3 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। नो बॉल का इशारा इस बीच, और मेरे ख्याल से एक अतिरिक्त खिलाड़ी ऑन साइड पर मौजूद है, तो इस वजह से अंपायर ने इसे नो बॉल घोषित किया। तो 1 रन 2 और 1 3 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे, और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 4 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। अंपायर से कुछ बातचीत करते हुए खिलाड़ी केएफसी कुंचाड़ी के, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। और जहां तक का सवाल है, अगले मैच का, तो अगला मैच जैगुआर कुद्रोली और स्पोर्टिंग कुद्रोली के बीच खेला जाएगा। कुद्रोली के दोनों टीमें अगले मैच में भिड़ेंगी, और इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि जैगुआर कुद्रोली और स्पोर्टिंग कुद्रोली के सर्व सदस्यों से कि कृपया वे स्टेज पर संपर्क करो ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। और इस बीच गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव किया, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, गेंद पहुंची मिड विकेट पर। जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलती हुई, और इस बीच रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, और स्कोर रुक चुका है 5 रन बिना किसी नुकसान के। बेहतर रन लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज गीतेश इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद, इस बार गेंद को चिप किया खूबसूरती के साथ बड़ी स्लॉन्ग ऑन की दिशा में, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। इनटू द गैप गेंद को उछाला था खूबसूरती के साथ मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन के दरमियान, और दौड़ लगाने के बावजूद गेंद को वो रोक नहीं पाए, और गेंद उनकी बाईं ओर से होती हुई उनके सिर के ऊपर से निकल गई। एक टिप्पे के बाद 4 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लग चुका है यासीर के बल्ले से, और कुल मिलाकर स्कोर इस चौके के साथ पहुंच चुका है 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। पावर प्ले ओवर इस वक्त फेंका जाता हुआ
और गितेश इस वक्त तैयार यासीर के लिए, जो कि कुछ हद तक आत्मविश्वास प्राप्त कर चुके हैं। पिछले गेंद पर जो स्ट्रोक्स लगाया था उसके बदौलत दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलते हुए शॉट फाइन लेग की दिशा में गेंद सीधे नेट पर टकरा चुकी है। 1+1 2 रन्स एडेड टू द टोटल, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर बिना किसी नुकसान के। निस्संदेह एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त जरूरत है, सख्त जरूरत कहना पड़ेगा चैलेंज कृष्णापुरा के लिए। अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद थी, पैरा पर गेंद टकराई, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से कुछ हद तक बाहर की ओर निकलते हुए और अपील को नकार दिया सही तरीके से अंपायर ने, और इस बीच स्कोर रुक चुका है 11 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 11 विदाउट लॉस। एक लंबा ओवर यहां पर प्रगति पर गेंदबाज गितेश द्वारा, और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा अभी भी अपने सही लेंथ और लाइन को तराशते हुए यहां पर गेंदबाज गितेश। काफी अतिरिक्त रन इस ओवर में वो अब तक प्रदान न कर चुके अपने जूतों के फीते को यहां पर बांधते हुए, और एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद को ड्राइव किया मिड विकेट पर, गेंद पहुंची, 1 रन मिलेगा। थोड़ी सी मिसफील्ड, बैकअप होता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के। तो एक बेहतर शुरुआत चैलेंज कृष्णापुरा इस वक्त कर चुका है। टॉस हारने के बाद KFC कुंचाड़ी के खिलाफ पहले बल्लेबाजी पर उतरा था, वह 12 रन जोड़ चुका पहले ओवर की समाप्ति के बाद। 12 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच, Jaguar Kudroli will take over Sporting Kudroli in the next match. 13 in fact the total score, and first over has been completed. ಜಾಗ್ವಾರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. और यहाँ पर दूसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ 13 रन बन चुके हैं, 13 विदाउट लॉस, और दे मेड अ गुड स्टार्ट व्हाट दे वांटेड इन द फर्स्ट ओवर ऑफ देयर इनिंग्स फॉर चैलेंज कृष्णापुर। और फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए उपेश गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार यासीर। तो यासीर उपेश की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलते हुए और दिशाहीन गेंद, स्पेक्ट्रा वाइड। 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल, और स्कोर इन 2 रनों के साथ बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 15 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है। उपेश एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते, एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद उन्होंने फेंके थे, और एक बार फिर से वाइड का इशारा अंपायर का। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, 16 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 16 विदाउट लॉस एंड द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। ये गेंद बॉल्ड आउट, बेहतरीन वापसी इस वक्त 2 वाइड फेंकने के बाद बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ उन्होंने गेंद को फेंकी। गेंद को उछालना चाहा लेकिन गेंद कुछ हद तक एक्स्ट्रा बाउंस लेती हुई आखिरी मौके पर बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हुआ, और गेंद बल्ले को वंचित करने के बाद सीधे मिड और ऑफ स्टंप पर जा टकराती हुई, और इसी के साथ यह पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। यासीर की पारी समाप्त, और 16 रनों पर पहला विकेट यहां पर खो चुका है। 16 रनों पर पहला विकेट खो चुका है। 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, एंड दिस इज द सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस फॉर चैलेंज कृष्णापुरा। और एक बेहतर पारी पर यहां पर पर्दा गिर चुका है यासीर का, और
उनका स्थान ग्रहण करते हुए एज अ नंबर 3 बैट्समैन वेयरिंग नंबर 22 जर्सी इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। मुबारिश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है और उपेश गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये बॉल्ड आउट। गेंद को इस वक्त खेलना चाहता, फुल टॉस गेंद को, मेरे ख्याल से गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट वो स्टीयर करना चाहते थे, लेकिन गेंद की इस तेजीपन को समझ नहीं पाए और आखिरकार गेंद उनके बल्ले को वंचित करती हुई सीधे ऑफ स्टंप पर जा टकराए और अजीब तरीके से यहां पर विकेट खोने के बाद बल्लेबाज पेविलियन वापस लौटते अपनी पहली गेंद पर। मुबारिश की पारी समाप्त हो चुकी है गोल्डन डक के रूप में। हालांकि काफी ढीली गेंद थी, चाहे तो गेंद पर करारे प्रहार वो कर सकते थे, लेकिन रक्षात्मक तरीके से गेंद को उन्होंने स्क्वायर ऑफ द विकेट स्टीयर करना चाहा था, लेकिन गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए, फुल टॉस गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे ऑफ स्टंप को बिखेर कर ले जाते हुए बेल्स डिस्टर्ब होते हुए इसी के साथ यह दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। जावेद नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, तो 2 गेंदों में 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त उपेश इस वक्त तैयार रहा और इस बार जावेद सामना करते हुए ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड, सिंगल रन एडेड, नो बॉल इनफैक्ट, तो 1 रन मिलेगा उन्हें नो बॉल के रूप में और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर। 18 इनफैक्ट, 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 18 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर और कुछ बातचीत इस वक्त यहां पर जारी, अंपायर कुछ कहते हुए और कुछ क्षणों के लिए खेल यहां पर रुक चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा एक साझेदारी पार्टनरशिप की इस वक्त सख्त जरूरत है। 2 गेंदें बाकी, तो 2 रन पिछले गेंद पर जुड़ चुके हैं। 18 फ्री हिट गेंद लेकर तैयार रहा और बल्लेबाज जावेद के लिए ये फ्री हिट गेंद और गेंदबाज उपेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद उछालना चाहा, चूंकि बेहतर गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई फ्री हिट गेंद का फायदा नहीं उठा पाए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ये गेंद अच्छी गेंद, बेहतर गेंद, परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद थी, इस गेंद को उछालना चाहा था चूंकि, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। 2 बेहतर गेंदें यहां पर फेंक चुके हैं गेंदबाज। ये गेंद ऑन साइड पर कलाइयों के सहारे मोड़ दिया, खूबसूरती के साथ फील्डर पीछे मौजूद, 1 रन मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा और थ्रो पहुंच चुका है स्क्वायर लेग फील्डर का सीधे विकेट कीपर के हाथों में। 1 रन के साथ 19 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है और कुल मिलाकर अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर, एक लंबा ओवर यहां पर प्रगति पर उपेश द्वारा और यह गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, मिसफील्ड, बैकअप होता हुआ वाइडिश लॉन्ग ऑन पर और 1 रन बल्लेबाज इस दौरान पूर्ण कर चुके हैं। 20 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति। पहले ओवर में 12 रन बने थे और पहले ओवर के मुकाबले ये ओवर बेहतर रहा उपेश का, जिसमें सिर्फ 8 रन उन्होंने प्रदान किया, 2 विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया। 2 ओवर के बाद एक बेहतर स्थिति में नजर आता हुआ 2 विकेटों को खोने के बावजूद चैलेंज कृष्णापुरा 20 रन जोड़ चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स स्कोर्ड बाय चैलेंज कृष्णापुरा। जिस तरह पिच के ऊपर से धूल इस वक्त उड़ रहा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवा का रुख काफी तेज है। मैदान की दाईं से बाईं और इस वक्त हवा गुजरते हुए यह गेंद पहली गेंद थी ऑफ स्टंप पर आते हुए और एक बार फिर से वाइड का इशारा। काफी अतिरिक्त रन, एक्स्ट्रा रन अब तक प्रदान कर चुके हैं गेंदबाज फ्रेंड्स
KFC फ्रेंड्स कुंचाड़ी के अपने सही लेंथ और लाइन को अभी भी तराशते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट ऑफ स्टंप से बाहर चिप किया खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर फीडर के सिर के ऊपर से डीप एक्स्ट्रा कवर पर जब तक इनको रोका जाता 2 रन बल्लेबाज यहां पर दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। ऑफ द बैकफुट गेंद को स्कूप किया था स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर फीडर के सिर के ऊपर से बल्लेबाज ने और 2 रन बटोर चुके हैं। 23-23 for the loss of 2 wickets at the start of the third over. In fact, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर wide, one more wide, 24 8 वाइड अब तक फेंक चुके हैं उनकी पारी में। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर लेकिन ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और सही गेंद यहां पर घोषित स्कोर रुक चुका है 24 रनों पर। इट्स 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। गेंदबाज अपनी अगली गेंद लेकर तैयार था इन्हें तो बढ़ता विकेट। ये गेंद उछालना चाहा आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहता लेकिन गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। बेहतर गेंद एक बार फिर से गेंदबाज की गेंद हल्के से गेंद के इस वक्त स्टीयर कर दिया। गेंद जाती हुई इस वक्त पॉइंट की दिशा में 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स नाउ इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और फिर से गेंदबाज ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा प्लम्ब इन फ्रंट घोषित और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। जावेद का विकेट यहां पर गिर चुका है। शफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहते थे थोड़े से शफल होने के बाद लेकिन गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए उनके पैर पर टकराई और उनका पैर बिल्कुल मिडल स्टंप के सामने रहा और अंपायर को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। और यहां पर जावेद का विकेट गिर चुका है। अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी। ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ हस्ताक्षरಗಳನ್ನು ऑफिशियल हाಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ विनंती दयविಟ್ಟು तक्षण। तो यहाँ पर अंतिम गेंद बाकी इस ओवर की और नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और गेंदबाज इस वक्त तैयार था तो बढ़ता विकेट गेंद को उछाला इस वक्त काफी उम्दा स्ट्रोक गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। धनात्मक शुरुआत अपनी पहली गेंद पर कर चुके हैं अशफाक का ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट एंड डिस्पैच्ड इट इन अ स्टाइल ओवर डीप मिड विकेट फेंस फॉर 6 रन्स। और इस छक्के के साथ स्कोर छलांग लगाकर इस वक्त पहुंच चुका है 31 रनों पर। 31 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स फॉर लूजिंग 3 विकेट दे आर लुकिंग इन ए कमांडिंग सिचुएशन और 2 ओवर का खेल बाकी। और जहां तक सवाल है इस बचे हुए 2 ओवर में क्या क्या होता है ये अब आपको जानकारी देंगे अंग्रेजी में मेरे काबिल दोस्त सतीश। आइए सतीश। So thank you very much, Gopi. And 31 is a very good score on the board for challenge. In the first ball of the over number 4, it's a dotted one outside the line of off stamp. Batsman tried to push the ball on the offside region, missed the line completely, and there is no possibility of any run. Challenge Krishnapura, the batting first against KFC Konchadi. And meanwhile, a single has been taken by the batsman. Of course, the batsman in the middle, the Suhail is opening batsman for the side, still there in the middle, hanging there in the middle in other side, one side, and he was just watching in front of him. 3 wickets fallen, but still he's tried to get some score, try to build some, get some score from his bat. And along with this man, Ashfaq, the previous over he hit one magnificent shot down to mid wicket for a 6, and one more lovely looking drive there from Ashfaq. He's very confident batsman in the middle. Middling the ball very well. One more addition to total. Scoreboard moves on to 33 now. Gitesh.
Right arm over the wicket, he bowls. Beautifully bowled. Excellent delivery. Batsman tried to open the blade of his bat. Try to steer that one down to third man region, but missed it completely. Wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no possibility of any run at all. Again, Gitesh bowling right arm over the wicket. The sensible batting there from Swale this time, quickly realizing that misfield there by the fielder, but batsman not able to take the opportunity of getting a second run in that occasion, because ball is not too far away from the fielder, and that's why the batsman not interested for any extra run. Single is taken, 34 on the board for the loss of a 3 wicket here in over number 4 in frog. Beautifully bowled. That was a quicker one. Ashraf using his feet, coming down the track. And this time the bowler quickly realizing that if he bowls outside the line of off time, ball around the outside the line of leg stump, batsman will definitely going to take the advantage. He just bowled a quicker one on the middle stump and not settling the batsman for the big shot. Great piece of bowling there from Gitesh. So he got a big wicket actually. The wicket of Ashfaq. He looks pretty good in the middle, very dangerous. And he's back into pavilion with the beauty of the delivery of that over. So over number 4 completed. Completion of over number 4. Challenge Krishnapura. 34 on the board. Still the run rate is pretty good, and 8.25 runs per over. The run rate for Challenge Krishnapura. The previous over, umpire Shriniket is mentioning about the wicket keeper, which is the fake action which is not allowed, and that's why he's just asking the wicket keeper behind the stump not to do that, against the spirit of the cricket game of cricket. And 5th over will going to start. Sangamesh is bowls. First ball outside the line of off stump, and umpire just clarifying from the batsman he got a bat or not. Of course, the batsman has got a bat. Sangamesh, right arm over the wicket, he bowls. Beautifully bowled, equally well collected by wicketkeeper behind the stump. This time he is not missing the opportunity, grabbing the opportunity with both the hands by collecting the ball in a fraction, completes the job. The batsman Suhail out of the crease, and he is back into pavilion after playing a very good innings for his team. Suhail is back into pavilion, and slowly KFC friends KFC Konchadi are managed to put some break on the run rate, especially the last 2 overs, previous over and this over. It seems to be the very good comeback over for friends KFC Konchadi. Sangamesh. Shihab. Scoreboard is remains at 34. This time a wide outside line of off stump. Extra run here. In comes the throw, but not able to stop the single. Wide call by umpire. 1+1. Frustration for the captain of friends Konchadi. That extra runs, because you know exactly how costly it's going to be, the conceding extra runs. 36 already on the board. Sangamesh. Right arm over the wicket, bowls, going for the blind hit without seeing the line of the delivery, without moving his front foot to the line of the delivery, going for the cover drive, missed it completely, and one more dotted deliveries. Much required dotted delivery of for KFC Konchadi. Again the similar kind, identical mirror display of previous delivery. The same line, same length, same reaction coming from the batsman. One more dotted delivery. Score remains at 36. Oh, this is a third one, but this time wide outside the line of off stump. But here is a chance of run out. The batsman desperately wanted to come to the strikers and the non-striker, but the striker is not responding. You know exactly that was a wide ball. Wide outside the line of off stump. One more addition to total 37 on the board. One more wicket is back into pavilion in the form of run out.
Shafiq is the new batsman is in non-striker's end. Azib going for the big shot. Chance of run out. And this time bowler missed out. By call by umpire. And Sangamish so far excluding that two extras in this over. Otherwise he bowled very well. And the scoreboard now moves on to 38 on the board. The last over in progress. Going for the big shot. Ball is in there. Chance for the feed-off fielder to take the catch. And the final delivery of the last over. They got a wicket here, KFC Konchad. At last they managed to put some break on the run rate in the last 2 overs of Challenge Krishnapura. They managed to score 38 and 39 to win the match. Just under 8 runs per over is the required run rate for KFC Konchadi to win this match. And still it's a good score from the batsmen of Challenge Krishnapura, and wait and see how well the friends KFC will going to take the challenge, the bowling challenge of the Challenge Krishnapura, and need to be some good batting performance from the friends KFC if they wanted to win the match. Wait and see strategy from both the teams to win this match. And before the innings will going to start, we'll take a short break, and after the short break we are right in front of you with the Gopi in our national language Hindi. Thank you. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಹಾಗೂ ಜಾಗ್ವರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್. So 39 the target for KFC Kunchadi, set by Challenge Krishnapura. At batted for, they managed to score 38 runs in the stipulated 5 overs quota, and they set a victory target of 39. And as far as the required run rate is concerned for KFC Kunchadi, exactly 7.80 runs per over, the required run rate for them at this situation. And their innings now going to start 39 रनों का लक्ष्य, 39 the target. और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई दोनों आरंभिक बल्लेबाज गितेश और कुशल इस वक्त मौजूद, जबकि गेंदबाजी संभालते हुए गेंदबाज उनके
ओवर की पहली गेंद, दाहिना हाथ ओवर द विकेट, पहली गेंद बेहतर गेंद थी। गेंद को इस वक्त ड्राइव करना चाहा लेकिन गेंद कुछ हद तक नीचे रहते हुए और गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं ठीक तरह से और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। अशफक गेंदबाजी, इस बार वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड की रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है केएफसी कुंचाड़ी के लिए। बिल्कुल एक मजबूत शुरुआत की जरूरत केएफसी कुंचाड़ी को अगर उन्हें 39 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद स्वीप करना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, अपील लेकिन अंपायर ने नकार दिया इसे क्योंकि गेंद कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और इस तरह से कोई क्षति नहीं। और फील्डर गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। अशफक गेंदबाज, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। बल्ले का बाहरी किनारा ड्राइव करने के प्रयास में चूके थे पॉइंट पर। जब तक गेंद फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। पहला पावर प्ले ओवर, पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और गेंदबाज अशफक का दाहिना हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। गेंद उछालना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, लगभग जमीन के सहारे गेंद आए थे और गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, अगली गेंद लेकर तैयार। इस गेंद को उछालना चाहा था और चूके और गेंद सीधे मिडल ऑफ स्टंप पर जाकर टकराई, बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ यह पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। कुशल की पारी समाप्त और 2 रनों के योग पर पहला विकेट खो चुका है यहां पर केएफसी कुंचाड़ी। चेतन का आगमन यहां पर होता हुआ एज अ नंबर 3 बैट्समैन, ही इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडल। और यहां पर जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, एक साझेदारी की यहां पर इस वक्त सख्त जरूरत है। पहला विकेट पहले ओवर में खो चुका है और अशफक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। चेतन सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद खूबसूरत स्ट्रोक लंगोट की दिशा में, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और एक बेहतर ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है अशफक की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किए। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 39 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 5 ओवर में पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक धीमा शुरुआत कर चुका है केएफसी कुंचाड़ी। 3 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदें बाकी, 36 रन चाहिए, 36 टू गेट फ्रॉम 24 डिलीवरीज एंड नाउ द आस्किंग रन रेट इज नाउ गॉन अप टू एग्जैक्टली 9 रन्स पर ओवर। शफीक का गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए। दूसरा ओवर यहां पर प्रारंभ होता हुआ और पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार चेतन सामना करते हुए। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए। दोपहर के 3:20 यहां पर बच चुके हैं। धूप की तीव्रता अभी भी बरकरार मैदान पर और सूरज आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छू चुका है, अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ। और गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी इस मैदान पर करते हुए। ये गेंद इस बार गेंद ड्रैग्ड ऑन टू द स्टंप्स। I think it's got a inside edge on that and the ball after hitting is inside of the bat, it sticking to the wickets. और इसी के साथ ये दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। चेतन की पारी समाप्त। 3 रनों पर दूसरा विकेट खो चुका है केएफसी कुंचाड़ी और संकट की स्थिति में यहां पर नजर आता हुआ। एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला जैक्स ट्रॉफी 2022 2022
और इस श्रृंखला के अंतर्गत इस श्रृंखला का छठा मैच यहाँ पर खेला जाता है और इस श्रृंखला का शानदार तरीके से आयोजन किया है जैक्स पंजीमुगेर ने। और ये श्रृंखला जो कि एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करते हुए श्रीकांत का आगमन होता हुआ। एक पार्टनरशिप साझेदारी की सख्त जरूरत है, जैसा कि मैं पहले भी यहाँ पर फरमा चुका हूँ, और उस कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश में क्रीज पर मौजूद है दोनों बल्लेबाज। ये गेंद रक्षात्मक तरीके का खेल, गेंद को इस वक्त गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, एक रन का इजाफा। इज गॉट अ बैट ऑन दैट, बल्ले का बाहरी किनारा टकराया था और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर। इट्स 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज शफीक एक बार फिर से ये गेंद आक्रामक स्ट्रोक, लेकिन फॉलो थ्रू में उतनी बेहतर फील्डिंग। शायद मुश्किल सा मौका जरूर था, लेकिन आखिरी मौके पर गेंद को वो दबोचने में सफल, लेकिन एक बेहतरीन स्टॉप उन्होंने किया और यहां पर बल्लेबाज को रन इस गेंद पर नहीं मिला, तो स्कोर रुक चुका है 4 रन 1 विकेट 2 विकेट के नुकसान पर। 4 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। शफीक एक बार फिर से तैयार, दाहिना ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन का इजाफा, लेग बाई का इशारा और लेग बाई की इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। रनों के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर करते हुए KFC कुंचाड़ी के बल्लेबाज और एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज चैलेंज कृष्णापुर के दाहिने हाथों पर विकेट। ये गेंद इस बार चिप किया है गेंद को लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन मिस जजमेंट और गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए उनके सिर के ऊपर से होते हुए। मौका जरूर था, लेकिन मैं समझता हूं आखिरी मौके पर मिस जजमेंट कर बैठे, काफी आगे आ गए और गेंद उनके सिर के ऊपर से होती हुए टिप्पे के बाद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। और जीवदान के साथ साथ बल्लेबाज चौका प्राप्त कर चुके इस गेंद पर। 9 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी और चौका यहां पर जुड़ चुका है श्रीकांत के खाते में। और एक बार फिर से तैयार शफीक का यह गेंद ऑन साइड पर, गेंद को उछालना चाहता, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, फॉलो थ्रू में दाहिने और दौड़ते हुए गेंद को गेंदबाज ने फील्ड किया और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 2 अंकों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 2 विकेट के नुकसान पर, माफ कीजिए, 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 10 for the loss of 2 wicket after completion of 2 overs, 29 to get from remaining 3 overs. The required run rate is now gone up to exactly 9.66 runs per over. तो जहां तक का सवाल है 3 ओवर में 29 रन बनाने हैं, 29 टू गेट फ्रॉम 3 ओवर्स, और क्या होगा उनकी पारी में देखते हैं। और इससे पहले कि तीसरा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं मेरे एक और काबिल दोस्त जनाब इरशाद कावूर इनको आमंत्रित करना चाहूंगा राज्य भाषा कन्नड़ में आगे का को देकाल सुनाने के लिए। आइए इरशाद साहब, धन्यवाद, थैंक यू। ಧನ್ಯವಾದ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರೇ. ಜಾಕ್ಸ್ ಪಂಚಮುಗರು ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತ ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಉಷಾ ಈ ದಿನದ 6ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ KFC ಕೊಂಚಾಡಿ. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುವಾಗ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ 38 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾ 39ರ ಸವಾಲನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇಲ್ಲಂತೂ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾವೇದ್ ತನ್ಕುಟ್ಟದ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಂಡನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬೇಡದಂತ ಓಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಬಹುಶಃ ರನ್ಔಟಿಗೆ ತನ್ನ ಹುದ್ದರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು 11 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 11 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ KFC ಕೊಂಚಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಜಾಗುವಾರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಧಾವಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ಜಾಗುವಾರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕುದ್ರೋಳಿ. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾವಿಕರುಗಳು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದತ್ತ ಧಾವಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾವೀದ್, ಹೊಸ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ಯತೀಶನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೀತೇಶ್ ಅನುಭವದ ಜೋಡಿ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮೂರನೇ ದಾಳಿ ಬಲವಾದ ದಂಡನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. ಈ ಮಧ್ಯೆ 1 ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಎಚ್ಚಲತೆಯಾಗುತ್ತಾ 12 ಎನ್ನುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 39ರ ಸವಾಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಕೂಟದ 4ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡು ಚಿಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಕೂಟದ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿ. ಐದನೇ ದಾಳಿ ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಗೆರೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾ 18 ಓಟದ ಗೆರೆ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 3ನೇ ಓವರಿನ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 18 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾವೀದ್. ತನ್ಕೂಟದ 3ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಾವೀದ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ, ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಗೆರೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೆ 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾ 24 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 39ರ ಸವಾಲಿತ್ತು. 18 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ ಕೊನೆಯ 18 ಚೆಂಡಿಗೆ ಗಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು 29 ಓಟ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಕೊನೆಯ 12 ಚೆಂಡಿಗೆ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 15. 12 ಬಾಲ್ 15 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 12 ಚೆಂಡು ಉಳಿದಿದೆ, 15 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಪದಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ನಾಯಕ ಯಾರನ್ನು 4ನೇ ಓವರಿಗಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಭರವಸೆಯ ದಾಳಿಗಾರನಾಗಿ ಅಶ್ಫಾಕ್, ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 49ರ ಬನಿಯಾನುದಾರಿ ಅಶ್ಫಾಕ್ ರವರ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚೆಂಡುಗಳು ಚಿಕ್ಕಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಂತೂ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು. KFC ಕೊಂಚಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಎನ್ನುವಂತ ಬಲಿಷ್ಠ 2 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದಿನದ 6ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಿಕದ 7ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ನಾವಿಕರು ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಾಗುವಾರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕುದ್ರೋಳಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆರಂಭದ ದಾಳಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚಿಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಿಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 15. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾವೀದ್. ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. 1 ಓಟ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಛಲತೆ ಕಾಣುತ್ತಾ 25 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ತನ್ಕೂಟದ 2ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಶ್ಫಾಕ್. 2ನೇ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿ. ಬಲವಾದ ದಂಡನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಕ್ಷತ್ರ ಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯತ್ತ ಚೆಂಡು. 1 ಓಟ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 26 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಉಳಿದಿದೆ 9 ಚೆಂಡು. ಆ 9 ಚೆಂಡಿಗೆ 13 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ KFC ಕೊಂಚಾಡಿ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯತ್ತ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸಫೀಕ್ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣುತ್ತಾ 27ಕ್ಕೆ ದಾಪುಗಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 8 ಚೆಂಡು ಉಳಿದಿದೆ. 8ರ ಮುಂದೆ 12 ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಶಫೀಕ್ 5ನೇ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಗೂಟ ಪಾಲಕನ ಕೈ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ಕೊನೆಯ 7 ಚೆಂಡು ಉಳಿದಿದೆ. 7 ಬಾಲ್ ಲೆಫ್ಟ್. 7ಕ್ಕೆ 13
12 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ದಾಳಿ ಬಲವಾದ ದಂಡನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಬಹುಶಃ ಅಡಾಚಣೆ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಒಂದು ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 1+1 ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ 29 ಓಟ. ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡು ಇದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 10 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಗೆದ್ದವರು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ, ಖಂಡಿತ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳುವಂತ ಈ ತಂಡ ಯಾವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ಸ್ ಪಂಚುಮುಗರು ಸಾದರ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಈ ದಿನ ಆರಂಭದ ದಿನೆಯಾಗಿ ಶನಾಲೆಯ ದಿನ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅದೆಷ್ಟೋ ತಂಡಗಳು ಈ ಊರಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗಮಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ಚೆಂಡು ಉಳಿದಿದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 10 ಎನ್ನುವಂತ ಓಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲತ್ರವರು ಈ ಮಧ್ಯೆ ತಲ್ಲತ್ರವರು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರು. ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡಿಗೆ 10 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಯತೀಶ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಗೀತೇಶ್ ರವರ ಜೋಡಿ. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ಬಲವಾದ ದಂಡನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಗೆರೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ನೇರ ಸಿಕ್ಸರ್ ಎನ್ನುವಂತ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತಿರುವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು ದಾಂಡುಗಾರ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಅನುಭವದ ಆಟಗಾರ ಗೀತೇಶ್ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವಿಜಯದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸುವೆ ಎನ್ನುವಂತ ಆ ನಿಶಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಚೆಂಡು ಉಳಿದಿದೆ. ಕೊನೆಯ 5 ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 5ರ ಮುಂದೆ 4 ಎನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಲ್ಲತ್ ತನ್ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚಿಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ವಿಜಯದ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಲು ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ದಲ್ಲತ್ ತನ್ಕೂಟದ 2ನೇ ಚೆಂಡನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿಶಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಗೆ 1 ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಎಚ್ಚಲತೆಯಾಗುತ್ತಾ 36ಕ್ಕೆ ದಾಪುಗಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 5 ಚೆಂಡಿಗೆ 3 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 5ರ ಮುಂದೆ 3 ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕದ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರುಗಳು ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಣಿ ಚಿಮ್ಮಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಗುವಾರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಟ, 1 ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆ, 2ರ ನಿಶಾನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸಮಬಲದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ KFC ಕೊಂಚಾಡಿ. ಕೊನೆಯ 4 ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರ ಪಡೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರರು. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಯತೀಶ್, ಗೀತೇಶ್ ಕೊನೆಯ 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ KFC ಕೊಂಚಾಡಿ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪರಿಸರದಿಂದ ಈ ಊರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನೋಡಿ, ಆ ಬಳಿಕದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಾಗುವಾರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ. 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಬಾಕಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ಆ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಮಯವನ್ನು ತಮಗೆ ನೀಡದೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ತಾವುಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿ.
Welcome back. So Jaguar Kudroli takes on their neighboring team. The teams from same area, the Kudroli. Jaguar Kudroli takes on Sporting Kudroli. The news here is captain of Jaguar Kudroli, after winning the toss, they elected to field first. The umpires are walking towards the middle. Suresh Mudabidre, along with him Harish Padil, two very experienced umpire. Harish Padil has got experience of more than 25 years, both in overarm and underarm format of a game. Even Suresh Mudabidre also is a very experienced umpire, more than 12 years of experience in the field of umpiring. Both are former cricketers, and along with these two experience, one more very young talented umpire, Shriniket, the one more umpire for this wonderful cricket tournament, Jacks Trophy 2021, organized by Jacks Panjimugeru. I request the opening batsman, please go for bat immediately. Sporting Kudroli captain, please send your opening batters. Umpires and fielding teams are waiting for you. Please don't waste the time. So 5 overs game, 1 hour going to be a power play, and where you can keep only 2 fielders outside the circle. Straight away, just coming back to that fielding set, 1 fielder at offside region, 1 backward point. There is no cover point, there is extra cover, there is a mid off, 1 at short mid wicket, 1 at short square leg. And coming back to the fielder are in the deep, 1 at mid wicket and 1 at deep long off. ಭಯಂಕರ ಅಂತೆ ಮಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫೈಟ್ ಅಂತೆ. So opening batsman is now Api, will going to face first delivery. Right arm over the wicket, beautifully driven, but the protection there in the wideish long on region. So batsmen have to settle for the single, and with that single they started their journey of these 5 overs format of games. Now jersey number 18 will going to face his first delivery. Nisar will going to bowl a second delivery. Right arm around the wicket, balls. This time, wow, what a shot! High, and it will going to be clear the ground. What a magnificent struck there from the jersey number 18. Batsman name, please. Batsman name. Rizwan is a striker, striking the ball quite brilliantly. And what a great shot that was, high and handsome. There's a nice piece of fielding there by the fielder, not quite able to collect the ball, but able to stop the speed of that stroke coming from the blade of Rizwan. And batsman settled for the single. With that single, scoreboard moves on to 8 on the board. 8 for the loss, without loss of any wicket. Good start from the opening batsman for Sporting Kudroli. Rizwan again, beautifully played that one. Excellent piece of fielding there by the fielder. And it's not an easy job, especially in the deep, fielder in the deep, because a lot of disturbance in the deep mid-wicket region. And they need to tackle with all this disturbance to collect the ball, because the ball is powerfully driven by the batsman Happy.
And the fielder at the deep mid wicket region able to stop the ball, stop the runs, but in between batsman went for a couple of runs. With that couple of runs, scoreboard now moves on to quickly 10 on the board, double figure. The 10 is came in just a 4 delivery of this over number first. Nasir, right arm over the wicket balls. Again, driven that one. Good piece of fielding. On way of pick up and throw, but the bowler fails to collect the ball. This is a really a bad miss. Excellent piece of, magnificent piece of fielding there by extra short mid off fielder. Picking the ball on hand, releasing the ball in the same action. The bowler not quite able to collect the throw from that mid off fielder. Otherwise, it's going to be a really the fantastic job by the fielder. And single is completed. This time, top edge. Chance here for 3 fielders. Can you believe this? 1 fielder from the square leg, 1 from the short mid wicket, and even bowler himself coming for the catch. All 3 fielders has got a communication gap. And because of that, ball looks like will going to drop between that 3. But at last, the bowler managed to hold that catch. And the wicket number first of Sporting Kudroli is back into pavilion. Rizwan is the batsman, is back into pavilion. Scored 7 valuable runs. 1-6 came from that over. I think he might be a little bit happy with himself that he just completed his job. What he was wanted to do as a opener batsman, especially taking advantage of the power play over. And they got 10 runs in the first, 11 runs in the first over. So new batsman Muhammad Ali, so experienced campaigner Muhammad Ali, busy customer. Muhammad Ali. He represents South Sporting Jaipur for many years. Experience. The player like him, age is just number. Even is above 40, but still is very fit, physically, mentally, and mentally in the sense he is a very friendly nature. Always having a big smile in his face in any situation. Ali will going to face his first delivery. Right arm over the wicket, second ball. Going for the sweep shot, but that ball going down the leg stump. Wide call by umpire. One of his favourite, Muhammad Ali, always starts his innings by picking up the runs, and behind the wicket, the square of the wicket is very strong. And straight away he's stretching his front foot to play the sweep shot, but ball is going down the leg stump further away. Wide call by umpire. One more addition to total scoreboard. Moves on to 12 on the board for the loss of 1 wicket. The bowler Safwan with the short run up. Balls. Oh, beautifully ball. Excellent delivery indeed. And the batsman playing with the wrong line as a Muhammad Ali. Of course, he is a very strong player on the onside, very strong off his legs. But this line is not that much of easy for Ali to work the ball on the onside region. That's why the ball missed the bat completely, and might be that the pace really missed the bat of the batsman Muhammad Ali. And the quicker one there from Safwan. So both the teams they know each other very well. The same area, the Kudroli, they got a lot of teams. They're playing each other many times with the Premier League matches. Often they played in that region. So Muhammad Ali at last managed to open his account by sweeping the ball. It's a declared area, so that Muhammad Ali will go in to retain the strike. He's off the mark, and scoreboard moves on to 13 now for the loss of 1 wicket. So a little bit disappointment for the batsmen who are very strong behind the wicket, sweeping and reverse sweeping, because there is not much of opportunity to get the runs in this particular cricket ground. Because behind the wicket you will get only single, not more than a single. And even in the offside as well, just a couple of runs that declared area.
Beautifully driven down to deep long on for a easy single, striking the ball very well. Muhammad Ali 14 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. Safwan. It's got a very good bowling action. It's a run up as well. Safwan bowls beautifully. Ball chance of from Muhammad Ali. Shown this relatable urgency. That's always happening when striker striking the ball straight back to bowler. In the limited over matches, there is no option at all because non-striker have to start his run. When the batsman striker strikes the ball back to bowler, very difficult for the non-striker to back because that ball went very quickly to the bowler. But it was a very good line there from Safwan, right on the middle stump, and forcing the batsman to go to play that one back to him. And meanwhile, the Muhammad Ali is almost started his run, so that is out of the crease at non-strikers end. Sporting Kudroli has got a mentor. They got the coach Shaukat Ali. Is the one is keeping an eye on the batting department of Sporting. Very experienced player. Of course, I enjoyed playing with him during when he's representing Hanuman Cricketers. Such a fantastic left-hand batsman. Very good fielder as well. Still, just like Muhammad Ali, he is also very energetic. The level of fitness is always going to be a fantastic, and is just encouraging the batsmen of Sporting Kudroli. This time Api flicks that one off his legs, running hard for the second, and they made it quite easily. And that was a really good running between the wickets. Quickly realizing both the batsmen when the ball is went in the vacant area, they completed first run complete very quickly. Then it makes so easy for them to come back for the second as well. With that couple of runs, scoreboard moves on to 16 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. Again, bowler back this bowling mark. Safwan bowls wide outside the line of off time. Nothing much to do with the delivery. Api watching the ball till the last moment, and he quickly realizing that that's going to be a wide, and a wide signal by umpire Arish Padil. One more addition to total. Down the leg stump again, it's going to be a declared area. 1+1, 2 more to the total. The batsman Api will going to retain the strike because that was a declared area, and scoreboard moves on to 19 now. The runs are coming here, and Safwan after he got a very good line and length in the first 2, 3, 4 deliveries, and all in sudden we can see that he's a little bit struggling to get his line and length. 2 consecutive wide deliveries in that over. Safwan again. Alright, over the wicket he balls. Up it drives straight to the hands of mid-off. Lack of placement. And up his intention to play that one down to extra cover, but he is not really able to beat the infield. And the fielder at mid-off is standing in the edge of the circle, takes a catch. The wicket number 2 of Sporting Kudroli back into pavilion at the score of exactly 19 on the board. 3 wickets in fact. The back into pavilion. Api is a third batsman. In the previous Muhammad Ali and then Rizwan are the 2 batsmen are back into pavilion. So at last they managed to pick the wicket here. Safwan. Tausif, new batsman, walking towards the middle. Over completed. Two overs completed. Nothing much wrong with the run rate, I will tell you. They got a very good run rate of 9.5 runs per over. Sporting Kudroli.
Munna brought into attack. And first ball starts with evening warm up delivery. Far outside the run of off stamp. A wide call by umpire. 1+1, 2 more to the total. Lot of extras conceded by Jaguar Kudroli. Need to be very careful because extras, the 5 hours format of the games, any extras more than 5 to 10 is going to be a really the decider one. As much as you concede runs, then very difficult for you to win the match. This time lofted but lack of placement again. Straight to the hands of Deepa extra cover. Inside out cricketing stroke. One of the best batsmen in the side of Sporting Kudroli. Rahil, so experienced batsman, very busy customer. The man who got a potential of playing a long innings is back into pavilion. Thank you very much, Sandy. Sandeep, famously known as Sandy, is a man behind the success of cricket tournament of his hard work. Last 2-3 days he's been very busy man in the cricket ground, and today also from morning to evening he is the one who is taking a full in charge of making this cricket successful one. Thank you, Sandy, for your cooperation for the success of this cricket tournament. So straight away Munna has got a breakthrough, and now it's up to the new batsmen to continue the innings here for Sporting. This time the batsman little bit slipped out while he tried to take the runs. He lost his bat as well from the hands, and very shiny surface, I will tell you, this cricket pitch. I think all each and every the workers of pitchmaker are making a great job to make this pitch very useful one. You can watch, you can see that still this pitch is able to maintain their shiny part. That's only possible because of the curators, the pitchmaker done a great job for this cricket tournament. Nicely bowled, equally well played there by the batsman, just waiting for the turn of the delivery, and with the opening the face of the bat, sending it down to extra cover region. Abid is a very experienced campaigner, and is also one of the most experienced batsmen, technically very sound player for the side. And a wide signal by umpire, one more addition to total. I still remember Abid, one of the top player for Royal Kudroli in the 90s, the 2000. He is one the key player for Royal Kudroli. Abid, even he has represented Hanuman cricketers and 1 or 2 times in a 30 overs format of a games in UCG cricket ground. More than Andram, even he played overarm cricket as well. He's in non-strikers end. Beautifully driven. Oh, that was a valiant effort from that fielder at deep mid-on region. Short mid-on region, in fact. Diving and try to mid-off fielder almost try to take the catch in that occasion. And the ball is just going over the hands of the trying hands of that fielder. And they got a single for that. And scoreboard moves on to 25 now. So far, Munna has bowled a good line and land. Abid has shuffled across the line after delivery off the toes, whipping it down to deep long on mid-wicket region, in fact, for an easy single. With that single, scoreboard moves on to 26 on the board. Completion of over number 3. It's at 26 on the board for the loss of 3 wickets. It's a good run rate. They maintained over 8 runs per over, 8.33 runs per over. And before the next over will going to commence, it's time to ask Gopi to take over the microphone in our national language. Thank you.
धन्यवाद सतीश. सो गुड गोइंग ऑन ईयर फॉर स्पोर्टिंग कुद्रोली. 26 रन जोड़ चुका है 4 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद. चौथे ओवर की पहली गेंद रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेला. इस वक्त दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और यशस्वीतम यहाँ पर पूर्ण करते हुए. वहां पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डरों के बीच और उसका फायदा उठाकर बल्लेबाज ने दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर लिया. तो अगली गेंद, ये गेंद ऑफ द टॉस. गेंद को मोड़ना चाहा. अपील सिर्फ अंपायर सिर्फ गेंदबाज ने अपील की थी और यहाँ पर इस अपील को नकार दिया और इस बीच रन्स 1 डिक्लेयर्ड. तो स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. चौथा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है. गेंदबाज नवाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए. अपील इस वक्त जारी है. शायद विकेट कीपर के हाथों से गेंद टकराने के बाद स्टंप्सों पर टकराई थी. बिल्स डिस्टर्ब हुए थे लेकिन दिशाहीन गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 30 रनों पर. इट्स 30 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. नवाज एक बार फिर से तैयार. ये गेंद स्वीप करना चाहा. गेंद आखिरी मौके पर पहुंची. शॉट फाइन लेग पर एक रन मिलेगा और इस बार एक बार फिर से वाइड का इशारा. 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल. $32 now for the loss of 4 wicket. Good progressing here for Sporting Kudroli against Jaguars Kudroli. ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए और एक बार फिर से वाइड का इशारा. तो अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त वो तराशते हुए काफी रन इस ओवर में प्रदान कर चुके हैं अब तक एक्स्ट्रा अतिरिक्त के रूप में. इस बार उछालना चाहा और चूके पूरी तरह. इस बार सही लाइन और गेंद पर स्ट्रोक्स खेलने में सफल और स्ट्रोक रन संख्या इस वक्त रुक चुकी है 33 रनों पर. 33 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. और गेंदबाज नवाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. दाहिना हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी और इस बार ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को खेलना चाहता चूके और गेंद सीधे शॉट थर्ड बैट फील्डर द्वारा फील्ड कर ली गई. रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. धीरे धीरे अपनी सही लय रिदम को यहां पर प्राप्त करते हुए गेंदबाज इस बार चिप किया है मिड विकेट पर लेकिन फील्डर वहां पर पकड़ने में तो असफल रहे लेकिन छक्का बचाने में वो सफल रहे. तो जीतोड़ कोशिश उन्होंने वहां पर की थी ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद को लपकने की लेकिन आखिरकार गेंद को लपक नहीं पाए लेकिन छक्का उन्होंने जरूर बचाया इस छलांग की बदौलत. और सिर्फ 2 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ. 35 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. 5th ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स. इस बार इस बार अपना संतुलन खो बैठे लेकिन मैं समझता हूं अपना विकेट को वो बचाने में सफल रहे हैं. हालांकि स्ट्रोक खेलने के प्रयास में वो फिसल कर गिर पड़े लेकिन उनका पैर क्रीज में मौजूद था जब विकेट उखाड़े गए थे. विकेट चटकाए गए थे विकेट कीपर द्वारा और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित था. तो 4 ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर. और जहां तक अगले मैच का सवाल है क्लास 11 चोक्काबेट्टू और ब्रदर्स तन्नी रुबावी के बीच में अगला मैच खेला जाएगा. तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया अगले मैच के लिए तैयार है. प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच. 5वां और अंतिम ओवर यहां पर शुरू होता हुआ और गेंदबाज सफवान इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार.
दाहिने हाथ ओवर द विकेट, फुल टॉस, गेंद को चिप किया इस वक्त मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, गेंद का इंतजार करते हुए दूसरा रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और आखिरकार दोनों बल्लेबाज एक रन के साथ संतुष्ट और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 36 रनों पर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। अंतिम ओवर उनका शुरू हो चुका है उनकी पारी का। इस बार छिप किया है लॉन्ग ऑन पर, लेकिन फील्डर वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। गेंद तक एक टिप्पा खाने के बाद उन्होंने गेंद को फील्ड किया और आखिरकार बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। पहले लॉन्ग ऑन के फील्डर ने सोचा कि गेंद पर लपका जाए, लेकिन आखिरी मौके पर जैसे ही उन्होंने भापा कि गेंद उनके आगे टिप्पा खाने वाली, अपने आप को रोक लिया और एक टिप्पे के बाद गेंद को फील्ड कर लिया गेंद का इंतजार करते हुए और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर। इट्स 37 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। दाहिने हाथ तो पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए स्वीप किया इस वक्त, नॉट क्वाइट मिडल गेट है लेकिन गेंद गैप पर गई है इस वक्त। दूसरा रन लेना चाहते हैं, थ्रो पहुंचा है और इस बार डाइविंग लगाकर विकेट उखाड़े विकेट कीपर ने और इसकी बदौलत ये विकेट यहां पर रनआउट के रूप में गिर चुका है। तो काफी वाइड थ्रो था और जैसे विकेट कीपर ने भापा कि विकेटों तक वो नहीं पहुंच पाएंगे, डाइविंग लगाई उन्होंने अपने पीछे की और विकेट चटकाने में वो सफल और विकेट नंबर 5 यहां पर गिर चुका है। 38 फॉर 5। 3 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में। Just 3 balls now left in their innings और गेंदबाज इस वक्त तैयार। सफवान नए बल्लेबाज, मोटे कद के खिलाड़ी इस वक्त क्रीज पर मौजूद। खलील उर्फ खल्ली इस वक्त मौजूद। दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 39 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। स्टिल 3 बॉल्स लेफ्ट इन देयर इनिंग्स और ये गेंद इस बार उछाला, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन पर, बेहतर फील्डिंग एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर। कुतरोली परिसर के 2 बेहतरीन टीमें यहां पर भिड़ रही है इस वक्त, जागवार कुतरोली और स्पोर्टिंग कुतरोली और मुकाबला यहां पर जारी है ऑफ स्टंप से काफी बाहर वाइड। 41-41। स्टिल कपल ऑफ बॉल्स रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। That one good one, absolutely terrific one. एक्स्ट्रा क्विकर स्ट्रोक खेलने में चूके और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंचे बल्लेबाज को वंचित करने के बाद और अंतिम गेंद अब उनकी पारी का शेष। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। सफान दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद ड्राइव किया, फॉलो थ्रू में मिसफील्ड, रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना दागा लेकिन निशाना चूक चुका है और दूसरा रन यहां पर नहीं मिलेगा। रन आउट हो चुका है पारी की अंतिम गेंद पर और इसी के साथ द इनिंग्स इज अप फॉर स्पोर्टिंग कुतरोली। दे फिनिश्ड वेल विद 42 फॉर द लॉस ऑफ 6 wickets in the stipulated 5 overs and now they set a victory target of 43 now for Jaguars Kutroli, and as far as the required run rate is concerned, exactly 8.60 runs per over they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them, and let's see can they reach the target or not. 43 रनों का लक्ष्य, 43 द टारगेट इन 5 ओवर्स, 5 ओवर में उन्हें बनाने हैं और देखते हैं वो लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं। और इससे पहले कि उनकी पारी की शुरुआत हो, एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे राज्य भाषा कन्नड़ में जनाब इरशाद काऊर के साथ, जब जैगुआर्स कुतरोली की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक।
ಧನ್ಯವಾದ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರೇ. ಜಾತಿಹೀನನ ಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿತಾಹೀನವೇ, ಜಾತಿ ವಿಜಾತಿ ಎನ್ನಬೇಡ, ದೇವರನ್ನೊಲಿಸಿದಾತನೇ ಉತ್ತಮ ಜಾತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಬಹುಶಃ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ವರ್ಣ ಪಂಗಡ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬದಿಗೆ ಇಡುತ್ತಾ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ, ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಏಕತೆಗಾಗಿ, ಐಕ್ಯತೆಗಾಗಿ, ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಎನ್ನುವಂಥ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜಾಕ್ಸ್ ಪಂಚಮುಗರು ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022. ಈ ದಿನ ಆರಂಭದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅದೆಷ್ಟೋ ತಂಡಗಳು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಈ ದಿನದ 7ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ನೋಡುವಾಗ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪರಿಸರದ ಒಂದೇ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡುವಂಥ ಎರಡು ಒಂದೇ ಊರಿನ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗುವಾರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಜಾಗುವಾರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 42 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾ 43 ಎನ್ನುವಂಥ ಆ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ 2 ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಂದು 7ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಚಾಲನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ 43ರ ಸವಾಲನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ 2 ಜೋಡಿ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಈ ಒಂದು ಪಂಚಮುಗರು ಪರಿಸರದ ಜಾಕ್ಸ್ ತಂಡ ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳು, ಇಲ್ಲಂತೂ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರಥಮ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿ. ನೋಡಿ, 2 ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿಕೊಡಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆವೇಸ್, ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ನವಾಸ್. ಪ್ರಥಮ ದಾಳಿ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 43 ಎನ್ನುವಂಥ ಆ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕುದ್ರೋಳಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆರಂಭದ ದಾಳಿಯನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪಿ. ತನ್ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ದಾಳಿ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಬಲವಾದ ದಂಡನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ರು ವೈಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಆ ಬಳಿಕ ದಾಂಡುಗಾರನಂತೂ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಪಾಯದ ಆ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಪಾಯದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, 43 ಎನ್ನುವಂಥ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಅದೃಷ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಕೂಟದ 2ನೇ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿ ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಿಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ 7 ಓಟ. 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪಿ. ತನ್ಕೂಟದ ತೃತೀಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಸೆತಗಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 2 ಚೆಂಡನ್ನು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ತನ್ಕೂಟದ 4ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹರೀಶ್.
ಪಡೀಲ್ ಇವರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿ. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೈಗಲಗಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 8 ಓಟವನ್ನು ಕಳೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಓಟವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ವೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಗಲ್ ಎಚ್. ಕ್ಷಮಿಸಿ, 8 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಕೂಟದ ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಟಗಾರನ ಅರ್ಭಟ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಳಸಿದ್ರು. ಆ ಬಳಿಕ ತನ್ಕೂಟದ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆದಂತ ಅಪ್ಪಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ಅಪಾಯದ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ದಾಂಡುಗಾರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 77ರ ಬಣಿಯಾನುದಾರಿ ನವಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 14 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಕೂಟದ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಪಂಚಮ ಬಾರಿ. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರ ಗೂಟ ಪಾಲಕನ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಆರಂಭದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ, ದಾಂಡುಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ ಎನ್ನಿರತಕ್ಕಂಥ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಲಾಭದಾಯಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಂತೂ ದಾಂಡುಗಾರರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ 5 ಚೆಂಡಿಗೆ 14 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಜಾಗುವಾರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ 1 ದಾಳಿ ಬಾಕಿ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ, ನೇರ ಅದೃಷ್ಟ ಎನ್ನುವಂತ ಪದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ದಾಂಡುಗಾರನ ನಿರ್ಗಮನದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಬಹುದಿತ್ತೇನೋ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಆತನಿಗೆ ಜೀವದಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆರಂಭದ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 14 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಗುವಾರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಒಂದೇ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವಂತ ಒಂದೇ ಊರಿನ 2 ತಂಡಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಟದಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅದೃಷ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇಂದು ಜಾಕ್ಸ್ ಪಂಚಮುಗರು ತಂಡ ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಜಯಗಳಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸವಿರುವಂಥ ಈ 43 ಓಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂದು ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಕೊನೆಯ 24 ಚೆಂಡು ಇದೆ. 14 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಯಾಗಿದೆ. 43 ಎನ್ನುವಂತ ಆ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗುವಾರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ. ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತೌಸೀಫ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ದಾಂಡುಗಾರ 1 ಓಟವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 15 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ತೌಸೀಫ್ ತನ್ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸುಡು ಬಿಸಿಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ. 2 ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿದಂಥ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿಶಾನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಲೆಗ್ ಬೈ ನಿಶಾನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 17-2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೌಸೀಫ್ ತನ್ಕೂಟದ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಸುಂದರತೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರು ಫಲವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಓಟಗಳು ಬರುವಾಗ ಗೂಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಂತೂ ಒಂದೇ ತಾನಾಡಿನ 2 ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಸೆಣಸಾಟದಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 3 ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಗುವಾರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಆರಂಭದ 1 ಓವರ್ ಬಿಂದು 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುವಾಗ 17 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 07 ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಹಮನ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇಂದು ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಕ್ಸ್ ಪಂಚುಮುಗರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಂದರತೆಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಿದು. ಗಾಳಿಯ ಲಾಭದಾಯಕವಂತೂ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ ಎನ್ನುವಂಥ ಮೈದಾನ. ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಿಂದ ತೌಸೀಫ್. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅಮನ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಫಲವಾದ ದಂಡನೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕೂಟದ 2 ಚೆಂಡಿಗೆ 2 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿರಾಮದನ್ನು ಓಟಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 17 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 43 ಎನ್ನುವಂತ ಆ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಾ ಆರಂಭಿಕರ ಜೋಡಿ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 17 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವಾಗ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ 2 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಗುವಾರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 3 ಫೈಜಲ್ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆರಂಭದ ಓವರಂತೂ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದರ ಬಳಿಕ ತೌಸೀಫ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಸೂಚನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಟ್ರಿಕ್ ವೀರನಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರ ಚಪ್ಪಾಲೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ ನೀಡಿದ್ದು ಓಟ 5ರ ಮುಂದೆ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಾಗ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 3 ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಇಲ್ಲಿ 17 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವಿಜಯದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸುವ ಆ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಕಸಿಯುತ್ತಾ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರ ತೌಸೀಫ್. ಕಾರಣ 5ರ ಮುಂದೆ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕೈಚಲತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಇಲ್ಲಂತೂ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಇವರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ತೌಸೀಫ್. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರವೋ ಅಥವಾ ಆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕಗಳಿಯಾಗಿದೆ. ಸಮಾಲೋಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅದ್ಭುತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ 2ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕ್ರಮ ಹೋದ್ರು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಂತೂ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 17 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಹುದ್ದರಿ
ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರನ ನಿರ್ಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾದ ಕೆಮರಾದ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಂತ ನೋಟ ನೋಡುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 8 ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರನ ನಿರ್ಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ ಆರಂಭದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀನಿಕೇತ್. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ 3 ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ 17 ಓಟ. ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಊರಿನ ಒಂದೇ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವನದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು, ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತವರು ನಮ್ಮವರಂತೆ ಕಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಊರಿನ 2 ತಂಡಗಳು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಸೋಲಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎನ್ನುವಂತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಖಲೀಲ್ ಆರಂಭದ ದಾಳಿಯನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು, ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ 1 ಓಟ ಎಚ್ಚರತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 2ರ ನಿಶಾನೆ ಇರುವಾಗ ತೀರ್ಪುಗಾರರ 2 ಓಟ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಬೌಂಡರಿ 4 ಓಟಗಳ ಗೆರೆ ದಾಟುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ರೋಚಕತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ ಸಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2.1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ 21 ಓಟ. 21 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 43 ಎನ್ನುವಂತಹ ಸವಾಲಿನ ಗಂಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಆರಂಭಿಕರು ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತ 3 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ಪಡೆಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ 2ನೇ ಓವರನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು ಎಸೆತಗಾರ ತೌಸೀಫ್. 4 ಉದ್ದರನ್ನು ತನ್ನ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಖಲೀಲ್. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮನವಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪುರಸ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಖಲೀಲ್ ಯಶಸ್ವಿಯ ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಸಾಧಿಸಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಯತ್ನವನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 21 ಎನ್ನುವಂತ ಓಟಗಳ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಕ್ಸ್ ಪಂಚಮುಗೆರೆ ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತ ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ 7ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 222 222 ಬನಿಯಾನುದಾರಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ನಾಸೀರ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ 22 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತ 16 ಚೆಂಡು, 16ರ ಮುಂದೆ 22 ಎನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾಂಡುಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ ಎನ್ನಿರತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೈದಾನವಿದು. ಎಸೆತಗಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಚಾಣಾಕ್ಷ, ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೈಚಲತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತ ಅದೃಷ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದು. ಖಲೀಲ್ 3ನೇ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡು 6 ಗೆರೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ನಾಸೀರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚಲತೆಯಾಗುತ್ತಾ 27. ಖಲೀಲ್ 4ನೇ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ದಂಡನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹಿತ್ತಗಡೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವೇ ಹೀಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹತ್ತೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಲವಿದ್ದರೂ ಸೊಸೆಗೂ ಒಂದು ಕಾಲ ಬರಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ 33. ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ 33ರಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಖಲೀಲ್. ಪಂಚಮ ಬಾರಿ
ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ನಾಸೀರನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 33 ಬಂದಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗಳು, 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. 13ರ ಮುಂದೆ 10 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರರ ಪಡೆಗಳೇ ಮೈದಾನವಂತೂ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಎನ್ನುವಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೈದಾನ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೊಂದೊಮ್ಮೆ ತೆರೆದು ಕಂಡರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮಿಂದ ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂಥದ್ದೆಷ್ಟೋ ದಾಖಲೆಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೆ 13 ಎನ್ನುವಂತ, ಕ್ಷಮಿಸಿ 13ಕ್ಕೆ 10 ಎನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 13ರ ಮುಂದೆ 10 ಓಟವನ್ನು ವಿಜಯದ ನಗೆಗಾಗಿ ಬೀರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೈಚಲತೆಗೆ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಒಂದೇ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಟದಲ್ಲಿ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಗುವಾರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ. ಉಳಿದಂತ 10 ಚೆಂಡು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, 13 ಚೆಂಡು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, 10 ಓಟ. ಖಲೀಲ್ ತನ್ಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನೌಸಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಆಟ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟ, ಜಾನ್ಮತನೆಯ ಆಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಓಟಗಳು ದಾಂಡುಗಾರರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ 12ರ ಮುಂದೆ 9 ಎನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ 6 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ, 4 ಉದ್ದರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪರವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಮಧ್ಯೆ ತಂಡದ ನಾವಿಕ ಯಾರನ್ನು ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ದಿನದ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 11 ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ. 2 ತಂಡದ ನಾವಿಕರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣಿಚುಮಿಕೆಗಾಗಿ ಧಾವಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 11 ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು. ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣಿ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಗೆ ತಾವುಗಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕದೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯ ಆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ತಾವುಗಳು ಭಾಜನರಾಗಿ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರತೆಯ ಆಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. 35 11 ಚೆಂಡು ಉಳಿದಿದೆ, 8 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೌಸೀಫ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ಆಟ ಈ ಮಧ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾಲಕ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 36 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಸುಂದರತೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ನಾಸೀರ್. 7ನೇ ಉದ್ದರಿ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಚೆಂಡು ಉಳಿದಿದೆ, 10ರ ಮುಂದೆ 7 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ತೌಸೀಫ್ ತನ್ಕೂಟದ 3ನೇ ಚೆಂಡನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಇವರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟ, ಸುಂದರತೆಯ ಆಟ. ಚೆಂಡನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ತಂದಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಈ ಮಧ್ಯೆ 2 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳತೆಯಾಗುತ್ತಾ 38. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟ, ಸುಂದರತೆಯ ಆಟ, ಜಾನ್ಮತನೆಯ ಆಟ, ಗೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಹೆಚ್ಚಳತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 39ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೌಸೀಫ್. ಅದ್ಭುತ ಆಟ, ಜಾನ್ಮತನೆ ಆಟ. ಈ ಮಧ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 40. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ 7ರ ಮುಂದೆ 3 ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 7 ಚೆಂಡು ಇದೆ, 3 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬಳಿಕದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ 2 ತಂಡಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೌಸೀಫ್ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4. ಆರಂಭದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 40 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ
ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಹಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಎಸೆತಗಾರರ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪ್. ಸತ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ತನಾವುಗಳಲ್ಲಿ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡಿಗೆ 3 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಎಸೆತಗಾರರು ಇಲ್ಲಂತೂ ಜಾನ್ಮತನೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಸುಂದರತೆ ಆಟ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ವೈಫಲ್ಯ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಹಿಡಿತ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿಯಬಹುದಿತ್ತೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಅಜಾಜ್ ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿ ಸುಂದರತೆ ಆಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾನ್ಮತನೆ ಆಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಇದೆ, 4ರ ಮುಂದೆ 1 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಜಾಜ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 1 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿ. ಸುಂದರತೆಯ ಗೂಟ ಪಾಲಕ ಅಲ್ಲಂತೂ ಉದ್ದರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 3 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 1 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬಳಿಕದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ 2 ತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆ ತಾವುಗಳು ಖಂಡಿತ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ನೀವುಗಳು ಭಜನರಾಗಿ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನವಾಜನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಇದೆ, 3ರ ಮುಂದೆ 1 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಜಾಜ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಟೈಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಿತ್ತೇನು, ಆದರೆ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕುದ್ರೋಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ 2 ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೋಡಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೋಡಿ ಎನ್ನುವಂತ ಹಿರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ 2 ಅದ್ಭುತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗೋಪಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ. ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಮೈಕನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಮೈಕನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀನಿ
So thank you very much, Irshad Kaur, and thank you very much for your inspirational word. Of course, he is the one who really entertained the crowd with his very fluent Kannada commentary, state language, sweet language, and it's very, very good to see you in this commentary box as well, because last 3 days me and Gopi really not having a very good time in the mic because of the cold and fever, and we are really having a tough time. And even in the Mangalore media, someone is mentioning about the Satish sir has having some illness. Absolutely right, because not having that much of 100% in mic because of toughness, the cough problem. And thank you, Irshad, for your cooperation, because of you we are certainly having some kind of relaxation here in commentary box. And coming back to the match number 8, the match between Class 11 versus Brothers Tanir Babi. And Class 11, after winning the toss, they elected to field first, and Brothers are in their batting first here. Second delivery, right arm over the wicket. And this time batsman going for the big shot on the onside region, but he managed to get the single down to mid-on. And with that single, scoreboard now moves on to 2 on the board without loss of any wicket. Iqbal, Imtiaz, 2 batsmen are in the middle. Brothers Tanir Babi. Even though the captain lost the toss, they got a chance, opportunity here to bat first. This time again, bowler's back drive, good piece of fielding there by the bowler, and on his follow through, the bowler takes the catch and quickly is appealing for cotton ball. But Harish Patil, you know exactly, ball is after one bounce, and of course ball hit the boot of the batsman. But after ball is grounded, then ball hits his boot, and the bowler a little bit excitement shown that it going to be a cotton ball, but umpire unmoved, rightly so. This time again, opportunity of run out. Not an easy ground to the fielders to collect the balls. A little bit uneven. Ground is not even, especially in the outfield and infield. Right arm over the wicket, he bows. This time again, beautifully driven down to deep, wide-ish mid-wicket region for a easy single. And with that single, scoreboard moves on to 4 on the board. So far, it's a steady start from this. Opening batsmen are dealing with a single in this power play over. And bowler so far is doing a good job, Sahil. Beautifully bowled. Excellent delivery with the pace, and batsman going for the off drive. Missed it completely, Iqbal. And a very good over. Perfect first over ball there by the bowler Sahil in that first over of power play. He managed to contain the batsman in this power play. 4 without loss of any wicket in the over number first completed. Jacks Panjimugeru organizing this Jacks Trophy 2022 under the great leadership of Aloysius D'Souza, leading from the front, and along with Aloysius D'Souza, we can see that Sandeep, Sandy, Prasad, all are really backing up for the success of this cricket tournament. It's not an easy job, isn't it? Organizing the cricket tournament, the 3 days is not an easy one, and of course so many teams, actually the 16 teams in Group A and 16 teams in Group B. Altogether it's really not an easy job to organize a huge tournament like this. Needed someone good leadership, is badly required if they wanted to make this possible. All we can see that we are inching towards the successful day number 1 of this prestigious Jacks Trophy 2021. Meanwhile, the second over will going to start here from Dawood will going to bowl the first delivery, second over of the innings of Brothers Tanir Babi. Starts with the delivery, which is outside the line of leg stump.
Sriniket, the umpire, no hesitation in his mind to signal as a wide. With that extra scoreboard, moves on to 5 on the board without loss of any wicket. Again, across the line of the delivery, batsman try to hit the big shot. Again, not really getting that timing behind the shot because he's almost dragged that one. Imtiaz to play the across the line of the delivery. One more addition to total. With the addition of that single, scoreboard moves on to 6 on the board without loss of any wicket. This time opportunity is created. Yes, it is. No chance at all for any run. But Imtiaz in non-striker end, he already starts his runs. But it's too late for Iqbal because he's the one. He's in the striker's end. When you're going for the drive, then very difficult you to start the run. And because that ball is not really cross that infield. Ball went straight to the hands of short mid-on. So it's very difficult to complete the single. The neat collection from the mid-on fielder. And wicket number 1 is back into pavilion of brothers Tanir Bobby. The 6 for the loss of 1 wicket. Afreed is a new batsman in. Replacing Iqbal is back into pavilion in the form of run out. The Imtiaz will going to take the strike. Dawood. Right above the wicket. Oh, what a shot! That was a mighty one. A huge one. That ball went a long way. It was certainly might be the 60 to 65 meters. Big 6 came from the bat of Imtiaz. What a great shot there from the batsman. Beautifully driven right from the middle of the bat, and with that 6 score jumped into 12 on the board for the loss of 1 wicket. Again the ball, beautifully bowled, good comeback there by Dawood, quickly realizing the bowling around the bat of the batsman is going to be punishable, so he bowled outside the line of off stump. Quickly just learning from the mistakes. That was good to see that bowler Dawood is not really bowling that to the bat, and again a good piece of bowling there by Dawood. Again he's seeing that strength of the batsman, which is around the midland leg stump. He balls, batsman will go into hit the big shot, so he bowled outside the line of off stump. 2 times he bowled that line, and Imtiaz completely fails to make a contact with the bat. Dawood again. Right arm of the wicket he balls. Oh, beautifully bowled. Slower one. Change of pace. Really working out. Good comeback. Even though the 6 came from that over, but still I think it's a tidy over. Just 8 runs came from that over of Dawood. And as completion of over number 2, Tanir Bobby brothers managed to score 12 at the rate of exactly 6 runs per over. I request the fielding team little bit make it fast. We are having a shortage of time. Now the bowler is been introduced. Jersey number 11 for class 11 Chocobetu. Sahil to continue. Bowled first very good over actually in the power play. Now the captain wanted him to continue. Right arm over the wicket he bowls. Beautifully bowled. Yorker one outside the line of off stump. Batsman going for the drive, but very difficult when that's the line. Very difficult for the batsman in the negation. Afreed is the batsman. Not happy with this bat. He wanted to change his bat and asking his partner Imtiaz to give the bat. But in this more than the bat, I think the line is pretty good in that occasion from the bowler. And there is no possibility of any run. Sahil bowls. This time outside to the hands of fielder, and it's going to be a second run out. Yes, it is. Excellent work there by the extra cover fielder. That kind of commitment required, because whenever the fielder standing inside the ring, they need to have some quick fielder like that.
That was a very very important position in the cricket field. Backward point, cover point. Always a good fielder standing in this direction. Cover and extra cover. And that was an excellent piece of collection and return coming from that young fielder at extra cover. Sarfraz is a new batsman walking towards the middle. The second wicket of brothers Tanir Bawi is back into pavilion. Hafrid is back into pavilion, but Imtiaz still there in the middle. Came as an opener for the side of brothers. Again Sahil. Right arm over the wicket he balls. Oh, beautifully bowled. This is a clean him up by the beauty of the delivery. He's just going for the expansive off drive. Left the gap between bat and pad. Ball is nipped back. Jagging back into the right-hander batsman. No clue at all for the batsman. Like what kind of delivery this is going to be, as the bowler batsman try to play that extra cover drive. Left the gap between bat and pad. And ball is really doing the trick here. Great piece of bowling there from Sahil. So wickets are tumbling here for brothers Tanir Bawi. They're 12 for the loss of 3 wickets are back into pavilion. Just number 18. Kaif. The new batsman in. Again, excellent delivery. Wicketkeeper, little bit fumble behind the stump, but not too far away from wicketkeeper. No question of any run at all. Sahil just enjoying his bowling performance. So far, he's been very effective in this particular over. In the previous over also, Sahil balls. Driven, beautifully driven, right in the gap. Chazia for the fieldsman there in the deep wideish long off fielder to run across towards the extra cover region. Batsman got ample time to complete that couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 14 on the board for the loss of 3 wicket here in over number 3 in progress. Sahil again back to his bowling mark. Right arm over the wicket to Kaif. So one more dotted delivery. Excellent over there from Sahil. Just 2 runs came from that over. And 2 wickets altogether. Fantastic bowling figure here for Sahil. And Satya Sarup, our scorer, will going to explain the bowling figure of Sahil. 2 overs. There is no maiden. 6 runs. And he picked up 1 wicket. Look at the economy. It's been really outstanding. 3 runs per over is going to be a fantastic bowling figure for any bowler, especially when he's bowling his first over as a power play over. I think it's a really good match-winning bowling performance there from Sahil. Wait and see how many runs they will going to score in the remaining 2 overs. And before that over will go into commence, I would like to invite Sarvagni Cricketers captain I request Sarvagni Cricketers as well as SFC Pakalpa, the captain, to report here to play the next match. And the time to ask Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. धन्यवाद सतीश। और यहाँ पर चौथे ओवर की पहली गेंद पर बाल बचे और जहां तक रनों का सवाल है, रन्स मिलेंगे 15 रन बन चुके। एक धीमी प्रगति यहां पर करती हुई ब्रदर्स तनीर बावी और करारे स्ट्रोक्स की इस वक्त उन्हें सख्त जरूरत है। गेंद चिप किया खूबसूरती के साथ मिड विकेट पर और गेंद इस वक्त बेहतरीन तरीके से रोकी गई है वहां पर सीमा रेखा के अंदर। एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग फील्डिंग परफॉर्मेंस। अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए
अंतिम क्षण में डाइविंग लगाते हुए गेंद को रोका डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर, और इस बेहतरीन फील्डिंग के बदौलत सिर्फ 2 रन बल्लेबाज ने इस गेंद पर प्राप्त किए। तो इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर, 17 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, शॉट स्क्वायर लेग पर थ्रो पहुंचा, लेकिन थ्रो को रिसीव नहीं कर पाए गेंदबाज, और ओवर थ्रो हो चुका है, लेकिन एकमात्र रन से ही बल्लेबाज को संतुष्ट यहां पर होना पड़ेगा। और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर। एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए क्लास 11 चोक्काबिट्टू के गेंदबाज, फलस्वरूप रनों के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर करते हुए बल्लेबाज फ्रेंड्स तंडीर बावी के। और इस बीच दाहिना हाथ ओवर द विकेट ऑन साइड पर उछालना चाहा, बल्ले का भीतरी किनारा शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, और 1 डिक्लेयर्ड और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19। ब्रदर्स तंडीर बावी को कम से कम 35 से 40 के आंकड़े तक पहुंचना होगा अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो। और गेंदबाज इस बार तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए साहिल जूनियर, और अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट चिप किया इस वक्त, लेकिन गेंद हवा में और फील्डर गेंद पर पहुंचने में सफल, बेहतर कैच, और इस कैच की बदौलत यहां पर विकेट गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट एट द लास्ट मोमेंट, बल्ले के बीचों बीच गेंद को कनेक्ट करने में असफल, और एक बेहतर कैच अपने आगे की ओर दौड़ कर आते हुए फील्डर ने लपका, गेंद पर अपनी नजरें उन्होंने गड़ाई रखी, और आखिरकार उन्हें कोई दिक्कत यहां पर महसूस नहीं हुई इस कैच को लपकने में। बेहतरीन कैच, और इस कैच की बदौलत एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 19 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अंतिम गेंद बाकी, तो नंबर 6 बल्लेबाज ब्रदर्स तंडीर बावी की ओर से इस वक्त मैदान पर उतरते हुए जाफर, और वो इस वक्त नॉन स्ट्राइक लाइन पर मौजूद, और इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज साहिल जूनियर तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज कैफ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार चिप किया है लॉन्ग ऑन पर, और गेंद मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। लगभग फ्लैट वर्जन पर ये छक्का इस वक्त झड़ चुके हैं कैफ, ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट कनेक्टेड दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट and scooped that one in a style in a flatter version over deep mid wicket fence for 6 runs. Absolutely perfect struck. He picked that one from the right spot and dispatched it in a style. 25 for the loss of 4 wicket, and 4th over has been came to an end. 4 ओवर की समाप्ति, और कुल मिलाकर मेरे ख्याल से इस ओवर में रन बने 11 रन इस ओवर में बने, और इस ओवर की बदौलत कुछ हद तक संभल चुका है ब्रदर्स तंडीर बावी एक धीमी शुरुआत के बाद। अंतिम ओवर बाकी उनकी पारी का। राजिक गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए नंबर 00 की जर्सी यहां पर पहने हुए, ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा। Wow, extra quick. That is an absolutely outstanding delivery, and he just beaten completely by the pace. और एक बेहतर तेज रफ्तार के साथ इस गेंद को फेंकी थी गेंदबाज ने, और तैयार अपनी अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार स्कूप किया है, गेंद को एक्स्ट्रा कवर फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की ओर, और जब तक दौड़ लगाने के बाद लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को फील्ड करके थ्रो करे वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ के फील्डर, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 27 रनों पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5th and a final over progressing here in their innings. और
गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद अंदर क्यों आती हुई, जगह बनाते हुए गेंद को खेला, लेकिन ठीक तरह से जगह नहीं बना पाए, लेकिन एक रन उन्हें जरूर मिला। इससे पहले कि शॉर्ट मिड विकेट फील्डर का फेंका गया वह थ्रो गेंदबाज के हाथों में पहुंचे और गेंदबाज विकेट को चटकाने में वो असफल रहे थे, तो इस वजह से बल्लेबाज एक रन के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। 28 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। जस्ट 3 बॉल्स नाउ लेफ्ट इन द इनिंग्स। 3 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी। धूप, सूरज मैदान के दाईं ओर इस वक्त अपना अस्तित्व का प्रदर्शन करता हुआ समंदर की ओर अपना सफर तय कर चुका है और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ रोशनी भी इस मैदान पर कम होती नजर आती हुई। 5:05 बज चुके हैं शाम के। ये गेंद अच्छी गेंद, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद। गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके लगभग लॉन्ग द कार्पेट जमीन के सहारे गेंद आई थी और आखिरकार इस गेंद को खेलने में असफल। और एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार विकेट कीपर के पहुंच से बाहर, एक रन मिलेगा। आई थिंक इज गॉट इनसाइड एज ऑन दैट और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 29 रनों पर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और पारी के अंतिम गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज राजिक तैयार। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। राजिक दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद, ओह दैट इज अ टेरिफिक वन, एक्स्ट्रा क्विकर और अंतिम गेंद पर यह विकेट यहां पर गिर चुका है रन आउट के रूप में। द इनिंग्स इज अप फॉर brothers Tanirbavi. They finished with 29 for the loss of 5 wickets in the stipulated 5 overs, and they set a victory target of exactly 30 for class 11 Chokabetu. And class 11 Chokabetu have to score exactly 30 runs in the stipulated 30 deliveries. That means in the stipulated 5 overs. With the help of 10 wicket, the present equation shows for them. And let's see can they reach the target or not. उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी चंद लम्हों बाद और तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। We are just taking a short break. और राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे हमारे एक और काबिल दोस्त प्रतिभान्वित कमेंटेटर कन्नड़ में जनाब इरशाद कावूर के साथ, जब क्लास 11 चोकोबेटू की पारी की शुरुआत यहां पर होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। ಧನ್ಯವಾದ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರೇ. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುವಾಗ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ 29 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 30ರ ಸವಾಲನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 30 ಚೆಂಡಿಗೆ 30 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗುವಂತ 2 ತಂಡಗಳು ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಉರುವ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SFC ಪಕ್ಕಲ್ಪಾದೆ. 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಬಾಗುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಯುವುದಾದರೆ ಬಾಗಿಬಿಡು, ಬಾಗುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಯುವುದಾದರೆ ನೀನು ಬಾಗಿಬಿಡು, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನೀನೇ ಬಾಗುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಬಾಗುವುದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ 30 ಓಟವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಾ ಆರಂಭಿಕರ ಜೋಡಿ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಹಿಲ್ ಜೂನಿಯರ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಫ್ವಾನ್. ಆರಂಭದ ಓವರಣಿಸೆಯಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಜರ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಫರಾಸ್. 30 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 30 ಓಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದೇ
ಈ ಒಂದು ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ. ಸರ್ಫರಾಜ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ದಾಳಿಯನ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಶಾಹಿಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಕ್ಸ್ ಪಂಜಿಮುಗರ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. 2022 ಪ್ರಥಮ ದಾಳಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ದಾಳಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿಶಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಗೆ 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ತನ್ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರ್ಫರಾಜ್ ಆರಂಭದ ದಾಳಿ. ಸುಂದರತೆ ಆಟ, ಜಾನ್ಮತನೆ ಆಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಓವರಿನ 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ ಎನ್ನುವಂತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 5 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಕೂಟದ 2ನೇ ಚೆಂಡು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2. ಸುಂದರತೆ ಆಟ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ. ಈ ಮಧ್ಯೆ 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತನ್ಕೂಟದ 4ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿ. ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ವೈಫಲ್ಯ. 2 ಓಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಳತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 30ರ ಸವಾಲು. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ತನ್ಕೂಟದ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಹಿಲ್, ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಫ್ವಾನ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೋಡಿ. 30ರ ಮುಂದೆ 30 ಎನ್ನುವಂತಹ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತ. ಈ ಮಧ್ಯೆ 4ನೇ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಫರಾಜ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಸುಂದರತೆಯ ಕ್ಯಾಚ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆರಂಭದ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 1 ಉದ್ದರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ 6 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮನರಂಜಿಸುವಂತ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಲಿಯಾಸ್ ಶಾಂತಿನಗರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲಿಯಾಸ್ ಶಾಂತಿನಗರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಇಲಿಯಾಸ್ ಇವರಿಗೆ. ನೋಡಿ, 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಸುಂದರತೆ ಆಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5, 25ರ ಮುಂದೆ 6, 25ರ ಮುಂದೆ 24 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 25 ಚೆಂಡು ಇದೆ. 24 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಫರಾಜ್ ತನ್ಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೋಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಆರಂಭದ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. 30 ಎನ್ನುವಂತ ಆ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಾಗ ಆರಂಭದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ. 7 ಓಟವನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿಗಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಛತ್ರಪಾಲಕರ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರೇ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡಿ. ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಕೂಡ ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಾವುಗಳ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಭರವಸೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭರವಸೆ ಎಸೆತಗಾರನಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. 24ರ ಮುಂದೆ 23 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ
ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ತೌಫೀಕ್ ಶಾಂತಿನಗರ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಸಾರ್ ಶಾಂತಿನಗರ, ಇರ್ಫಾನ್ ಶಾಂತಿನಗರ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಉಳಿದಂತ 24 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 23 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಸೆತಗಾರರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳು ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ 24 ಬಾಲ್ ಲೆಫ್ಟ್, 23 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ ತನ್ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಸಿದ್ದೀಕ್, ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಫ್ವಾನ್. ಅನುಭವದ ಜೋಡಿ. ಆರಂಭದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು, ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡನ್ನು ಚಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರು. ನೋಡಿ, 23 ಚೆಂಡು ಉಳಿದಿದೆ, 23 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 23ರ ಮುಂದೆ 23 ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ ಎನ್ನುವಂತ ದಾಂಡುಗಾರರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಜಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಿದು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟ, ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಸೆದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್. ನೋಡಿ, ನಾಯಕ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ ಆ ನಾಯಕನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 2 ಚೆಂಡನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ಚಿಕ್ಕಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೆಂಡು. ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ 3ನೇ ಚೆಂಡು, ತೃತೀಯ ಬಾರಿ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೂಟಪಾಲಕನ ಕೈಚಲತೆ ನೋಡಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತವನ್ನು ತನ್ನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7ಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ 21 ಚೆಂಡು ಉಳಿದಿದೆ, ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತ 21ರ ಮುಂದೆ 23. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರರ ಪಡೆಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೈಚಲತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ. ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತ 21ರ ಮುಂದೆ 23 ಬೇಕು. ತನ್ಕೂಟದ 4ನೇ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ ನಾಯಕನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಜಾನ್ಮತನೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯುವಂತ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಇವರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತನ್ಕೂಟದ 4ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿ, ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿಗಾರ, ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕೈಗಲಗಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದೃಷ್ಟದ ಖಾತೆಗೆ 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 4ನೇ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸೂಚನೆ. ಕಾರಣ ಆರಂಭದ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 7 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಬಳಿಕದ 4 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಖಾತೆ ಮೂಲಕ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ತನ್ಕೂಟದ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್. ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೀಕ್ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ. ಸುಂದರತೆ ಆಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಹೆಚ್ಚಳತೆಯಾಗುತ್ತಾ 9 ಎನ್ನುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆಯತ್ತ ದಾಪುಗಾಲುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಸಫ್ವಾನ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಜೊತೆಯಾಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಪರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಆರಂಭದ 12 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥಾತ್ 12 ಚೆಂಡಿಗೆ 10 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ಸ್ 11 ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು, ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಜಾಕ್ಸ್ ಪಂಜಿಮುಗೆರು ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, 18 ಚೆಂಡು ಉಳಿದಿದೆ. 18ರ ಮುಂದೆ 20 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಧ್ಯೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಯಾರನ್ನು ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ ಎನ್ನುವಂತ ಮೈದಾನ. ಇಲ್ಲಂತೂ
ಎಸೆತಗಾರರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಆ 30 ಓಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ 18, 18ರ ಮುಂದೆ 20 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೈಫ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು, ಅರ್ಥಾತ್ 3ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಆರಂಭದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಫ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತ, ಸುಂದರತೆಯ ಗೂಟಪಾಲಕ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಚೆಂಡು ಚಿಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತದ ಮೂಲಕ ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರರ ಪಡೆಗಳು ತನ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆ ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಂತ ಎಸೆತವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 17 ಚೆಂಡು ಉಳಿದಿದೆ, 17ರ ಮುಂದೆ 20 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ಕೂಟದ 2ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಫ್ ತನ್ಕೂಟದ 2ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಫ್ವಾನ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ರವರ ಜೋಡಿ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ಕೂಟದ 2ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೈಫ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ 2ನೇ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವಿದ್ರು ಕೂಡ ದಾಂಡುಗಾರರುಗಳು ಗೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಓಟದ ಮೂಲಕ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಹೆಚ್ಚಳತೆಯಾಗುತ್ತಾ 12ಕ್ಕೆ ದಾಪುಗಾಲಿಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರಿನ 3ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೈಫ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ 30 ಎನ್ನುವಂತ ಓಟದ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು. ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ ಪರಿಸರದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಫ್ ತನ್ಕೂಟದ 3ಯ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಸ್ಫಾನ್. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು, ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜಾನ್ಮತನೇ ಎಸೆತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಥಾತ್ 15 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತಹ 15ರ ಮುಂದೆ 18 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ನೋಡಿ. 4ನೇ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಫ್ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 13 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಜಾಕ್ಸ್ ಪಂಚಮುಗರು ತಂಡ ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಂದರತೆಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕರೆತರುತ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ಎನ್ನುವಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಆ ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸರ್ವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕ್ರಮ ಹೋಗುವಾಗ ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಔಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ
ಆಟಗಾರನ ನಿರ್ಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದ್ರೋಣ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 13 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತ 13 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 17 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಡಬಲ್ ನಂಬರ್ 11ರ ಬಣಿಯಾನುದಾರಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಹಿಲ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವಿಜಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಾದ್ರೋಣ ಉಳಿದಿದೆ 13 ಚೆಂಡು, ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 17. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಫ್ ತನ್ಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇಲ್ಲಂತೂ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ನೋಡಿ, ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ತಾವುಗಳ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಫ್ ರವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಶಾಹಿಲ್. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವಂತ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಕೈಫ್. ಇಲ್ಲಂತೂ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 2 ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆರಂಭದ 3 ಓವರ್ ಅರ್ಥಾತ್ 18 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುವಾಗ 13 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತ 12 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 17 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, 12ರ ಮುಂದೆ 17 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ಎಸೆತಗಾರರ ಪಡೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ 30ರ ಮುಂದೆ 30 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತ ಆ ಮೊತ್ತ ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾಂಡುಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ ಎನ್ನುವಂತ ಮೈದಾನ. ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವಂತ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಆರಂಭದ 18 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಾಗ 13 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕದ 12 ಚೆಂಡಿಗೆ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 17 ಓಟ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ನಿಭಾಯಿಸಿದಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರರ ಪಡೆಗಳೇ ಅರ್ಥಾತ್ 60% ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 40% ದಾಂಡುಗಾರರ ಪಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ 40-60 ಆಗುವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಂತೂ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಆರಂಭದ ದಾಳಿಯನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಸುಂದರತೆ ಆಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೋಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು. ನೋಡಿ, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಜರ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ. ಉಳಿದಿದೆ 11 ಚೆಂಡು, ಬೇಕಾಗಿದೆ 11ರ ಮುಂದೆ 17. ಚೆಂಡು ಉಳಿದಿದೆ. 11ರ ಮುಂದೆ 17 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರ ನಿರ್ಗಮನವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಾಶೀತ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ 11 ಬಾಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ 17 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನೋಡಿ, 11ರ ಮುಂದೆ 17 ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅದೆಷ್ಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಈ ಒಂದು ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ತಂಡದ ಆರಂಭದ ಓವರನ್ನು ಎಸೆದಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಈತನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕರೆ ಬಂತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಎನ್ನುವಂತ ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ಫಾರೂಕ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ 10 ಚೆಂಡು ಇದೆ, 10ರ ಮುಂದೆ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 16. ತನ್ಕೂಟದ 3ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಖಾತೆಗೆ 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಅದೃಷ್ಟದ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ನೋಡಿ, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಪುಟಾಣಿ ಯುವಕರು ತನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರದ ಆ ಸೈಕಲ್ ಬಂಡಿಯನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಚೇತನ್
ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಾಗೂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೇತನ್ ರವರೇ, ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಾವುಗಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 17 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್. 17 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಸುಂದರತೆಯ ಆಟ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. 1 ಓಟ ಪೂರ್ತಿ 2ರ ನಿಶಾನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಸದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಕೂತಂತ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಇತ್ತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 2 ಓಟಗಳು ಬರುವಾಗ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದುಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಎಚ್ಚಲತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 19. 8 ಚೆಂಡು ಉಳಿದಿದೆ. 8ರ ಮುಂದೆ 11 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಗೂಟ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು, ಸೋಲುವವರು ಯಾರು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಕೈಫ್, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ, ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಗುರಿ ಇದ್ದರೆ ಅಪಾಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ಅರಿತು ಓಡಿದ್ರು ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 2 ತಂಡದ ಸೆಣಸಾಟ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 7 ಚೆಂಡು ಉಳಿದಿದೆ. ಕೊನೆಯ 7 ಚೆಂಡಿಗೆ 10 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 10 ಎನ್ನುವಂತ ಆಪತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ನೋಡಿ. 7ಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 10. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್. ಏಳು ಚೆಂಡು ಉಳಿದಿದೆ. 7ರ ಮುಂದೆ 10 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ. ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ. ಬಲವಾದ ದಂಡನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. 1 ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚಲತೆಯಾಗುತ್ತಾ 21 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡಿಗೆ 9 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅದೃಷ್ಟದ ಕ್ರೀಡೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವ ತನಕ ಕಿವುಡನಾಗು, ಸಾಧಿಸುವ ತನಕ ಕಿವುಡನಾಗು, ಸಾಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮೂಗನಾಗು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎನ್ನುವಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದಂತ ಆ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ತಂಡ 29 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಆ 30ರ ಸವಾಲನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವಂತ ಯತ್ನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 9 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡಿ ನೋಡಿ. ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡು ಉಳಿದಿದೆ. 6 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 9 ಓಟ. ನಾಯಕನ ಭರವಸೆ ಎಸೆತಗಾರನ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ 14 ಬನಿಯಾನುದಾರಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ರವರ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಬಾಶೀತ್, ಅದೇ ರೀತಿ ದಾವೂದ್ ಎನ್ನುವಂತ ಜೋಡಿ. 6 ಚೆಂಡು ಉಳಿದಿದೆ. 9 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಆರಂಭದ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವಂತ ಯತ್ನದಲ್ಲಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡಿ. 6ರ ಮುಂದೆ 12 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್, 6ಕ್ಕೆ 2 ಓಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂದು ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 6ಕ್ಕೆ 9 ಬೇಕಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಚಿಕ್ಕಿಗೊಳಿಸಿದಂತ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕೊನೆಯ 5 ಚೆಂಡಿಗೆ 9 ಓಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಹುದೇ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. 1 ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 4 ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 8. 4ರ ಮುಂದೆ 8 ಯಾರಿಗೆ ಉಂಟು ವಿಜಯದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವಿಜಯದ ನಂಟು ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. 4 ಚೆಂಡು ಉಳಿದಿದೆ. 4ರ ಮುಂದೆ 8 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಕ್ಬಾಲ್
ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ದಾವೂದ್, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಗೆದ್ದಿಸಿದ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡು ಉಳಿದಿದೆ. 8 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ದಾಂಡುಗಾರರ ಪಡೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ರೋಚಕತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದಾಗಿದೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾವೂದ್. ಇಂದು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಂಬಿಕಾಸ್ಥ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ, ಅದೃಷ್ಟದ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದೃಷ್ಟದ ಪದಗಳು. ಅದೃಷ್ಟ ಎನ್ನುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಚಿನ್ನ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಸುಣ್ಣ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡು ಉಳಿದಿದೆ, 3ಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 7. ಫಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಗೆದ್ದಿಸಿದ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಓಟ, 1 ಓಟ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡಿಗೆ 6 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಬಾಲ್ 6 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 2 ಪಂದಿಲ್ 6 ವೇಣಂ ವಿಜೇತ ಲಕ್ಷತೆ ನಾಯಕ. ಅದು ನೋಡೋಣ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2ರ ಮುಂದೆ 6 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಸ್ಥಗಿತ. ರೋಚಕತೆಯ ಕದನ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ಸುಂದರತೆಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ನೋಡಿ, ಎರಡೂ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರ ಹೆದೆಬಡಿತ ಜೋರಾಗಬಹುದು ಖಂಡಿತ. ಕಾರಣವಾಗಿಯೂ 2 ಚೆಂಡು ಉಳಿದಿದೆ, 6 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ರವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಫ್ವಾನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರುಗಳ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಂತ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡಿಗೆ 6 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಬಾಲ್ 6 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇಕ್ಬಾಲ್ 5ನೇ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಭದ್ರಬೋಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೋಡಿ, 1ಕ್ಕೆ 6 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾಂಡುಗಾರರ ಪಡೆಗಳೇ 1ಕ್ಕೆ 6 ಗಳಿಸಿದಂತ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ನೋಡಿ, ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಪುತ್ತೂರು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ 1 ಚೆಂಡಿಗೆ 11 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂದು 1 ಚೆಂಡಿಗೆ 6 ಓಟವನ್ನು ಪಂಚಮುಗರು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಗಳಿಸಬಹುದೇ? ರಾಹಿಲ್ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. 1 ಚೆಂಡು ಇದೆ, 6 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು? ಇದಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣು ನೇರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಂತೂ 6 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾಕ್ಸ್ 11 ಪರವಾಗಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ರಾಹಿಲನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಬಾಲ್ 6 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 2 ಆಟಗಾರರ ಹೆದೆಬಡಿತದ ಸದ್ದು. ಒಂದು ಚೆಂಡು ಉಳಿದಿದೆ, 6 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾಂಡುಗಾರರ ವೀರ ಇಂದು ಆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 11 ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರನಾಗಬಹುದೇ ರಾಹಿಲ್? ನೋಡಿ, 1ಕ್ಕೆ 6 ಕೊನೆಯ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಬಲವಾದ ದಂಡನೆಗೆ ಯತ್ನ, ಆದರೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಕ್ಕೆ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ಪರಿಸರದ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಆ ಬಳಿಕದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವುಗಳು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಗಮಿಸಿ ಸರ್.
So thank you very much, Irshad Kaur. So what a finish for the previous match. That was a really very good match indeed. And at last, Brothers Tanir Babi defending that small total very well. And the final over, which is bowled by Dawood, has been outstanding. Handling the pressure very well and containing the batsman not to get that required run in the final over. So meanwhile, Jeevan will go into start the proceedings for Sarvagni Cricketers. They won the toss. They elected to field first. The opening batsmen are in the middle for SFC Pakalpade. And first ball itself is an appeal, loud appeal for leg before wicket, but more than confident. It just looks like it was optimistic appeal coming from the bowler, and there is no possibility of any damage, but the possibility of rotation of strike in the form of leg by. The first run comes up here for SFC Pakalpade. They won without loss of any wicket. One more good delivery there from G1. He's so good in that. That's why he's been always asked to bowl the power play over. It's not so easy to come and bowl in the power play overs when you're having only 2 protection in the deep. The line and length is so crucial for the opening bowler, and so far G1 bowled 2 good deliveries. Right, a more wicket balls. This time down the leg stump, looking for extra pace in that occasion. By doing that, ball is going down the leg stump further away, and one more extra is added to total. 2 without loss of any wicket in the over number first in progress. G1 again. Right, a more wicket balls. This time again, lovely delivery indeed. Again the pace is, which is really going to be very impressive indeed. Ball defeating the bat of the batsman. The wicketkeeper Yatin has got a deflected from his hand, but there is a short third man region fielder to fields the ball. Vijay there in the third man. G1 again the beautiful delivery indeed. Excellent delivery. So far he's been outstanding. I requested Jargam boys Shanti Nagar to report here. This time down the leg side, batsman going for that delivery, and before the fielder from short square leg region to run back, the batsman got ample time to complete that couple of runs. So again that couple of runs added to total. Scoreboard moves on to 4 on the board without loss of any wicket here in over number first in progress. G1 again bowling with a short run up. Past the umpire Shiniket. Oh, lofted that one, but fielder there in the right position, and just at couple of yards in front of that boundary line down at deep long off. It takes a comfortable catch, and it's not an easy job, I will tell you, especially in the evening, to get the distance right. Nothing wrong with the strokes. He played that one right from the middle of but placement is not good from the batsman. He pays the penalty for that. And back into pavilion. Naufal, a little bit disappointed with himself. He exactly hit that one firmly, but he didn't got that much of distance what he was looking for. The first wicket is back into pavilion of SFC Pakalpade against Sarvagni Cricketers. Sarvagni Urva played their first match, the inaugural match against Bandhouse. They chased down 41 runs quite easily. The opening partnership between Pradeep and Dhanu, that makes the thing so easy for them to get that 40. Dakshit is the new bowler, has been introduced. Dakshit, very young talented bowler for the side of Sarvagni Cricketers. He will go into ball to the left-hand batsman Samanath. Samanath in the previous match played a very good knock, responsible knock for his team when they defeated Amar Jyoti in their first match. This man has played a very good role, and now he's facing his
delivery, the first delivery. Dakshit bowls. This time looking for the improvisation by playing the reverse sweep. Got a top edge. He got a single there. And with that single, he's off the mark and scoreboard moves on to 5 on the board. Samanath is a kind of batsman who is very strong in the square of the wicket, behind the wicket, walking the ball towards the gap. That kind of batsman is needed for each and every teams, especially in the smaller format of the games. Of course, even the big wicket is much required, and between that, the rotation of strike is so important. This time off the toes, lofted at one, but not more than single, I think so. The declared area. Quite unfortunate. He will get a single for that. I already mentioned that the behind the wicket, not so much opportunity for the batsman, especially the left-hand batsman, not having the big opportunity in this particular cricket ground, because they will get only couple of runs in the onside region. Again, beautifully bowled, excellent delivery with the pace, and this almost ball is in the off volley, but because of that got a lot of pace in the ball, he couldn't manage to hit the ball properly, missed it completely, and there's no possibility of any run. Dakshit balls. This time off the toes. Chip that one quite beautifully. No one there in the deep. And they're coming back for the second quite easily. And with that, a couple of runs, scoreboard moves on to 8 on the board. Good looking stroke there from Samanath. Dakshit again. Right arm over the wicket balls. This time is lofted. And just out of the reach of that long off region. The fielder there in the deep long off quickly. Coming into that ball, the batsman only got a single for that. Samanath with that single, scoreboard moves on to 9 on the board. That brings new batsman Prasad, one more a very good striker of the ball. A very good striker Prasad. The previous match also has played a magnificent innings for the team. The right time when his team is required some big shot, he delivered one glorious innings. Now he is facing Dakshit. Dakshit, get ready to bowl the next delivery, right arm over the wicket to Prasad. Prasad again looking for the big shot. Try to drag that one to hit the ball towards the mid-wicket region, one of his favorite area. But this time Dakshit really bowled a very good line, fantastic line in the 2 hours completion of 2 hours, searching for the right track, but still struggling to get a big score here. SFC Pakalpade managed to get 9 runs. The one more good over is completed. 4.5 runs per over so far. The run rate for SFC Pakalpade. Opening bowlers of Sarvagni cricketers almost they completed their job. Now a lot of discussion is going on here. We'll go into ball the 3rd over, and at last they wanted to go with the Vijay. He's got a very good bowling in the first match. So wait and see how Vijay will go into ball the 3rd over of the innings of SFC Pakalpade. Before that, we're only going to commence. It's time to ask Gopi to take over the microphone. Thank you. धन्यवाद सतीश। और जहां तक सवाल है, 2 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका है। एक धीमी शुरुआत यहां पर कर चुका पीएफसी पकलपादे, और इस गेंद को उछाला लॉगआउट की दिशा में गेंद जाते हुए, और एक टिप्पे के बाद जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। स्कोर 2 अंकों पर पहुंच चुका है। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद अच्छी गेंद, इस बार गेंद लेग स्टंप को छूकर निकल चुकी है। बिल्स डिस्टर्ब हो चुके हैं और इसी के साथ विकेट यहां पर गिर चुका है।
प्रसाद का विकेट गिर चुका है। एक बेहतरीन गेंद के जरिए विजय ने ये विकेट प्राप्त किया। और जहां तक सवाल है स्कोर का, तो स्कोर इस वक्त 10 रन पर रुक चुका है। और निस्संदेह पक्कलपादे क्रिकेटर्स के लिए समस्या है इस वक्त बढ़ते हुए। एसएफसी पक्कलपादे क्रिकेटर्स के लिए द प्रॉब्लम्स आर नाउ बिल्डिंग अप फॉर देम। शाम का वक्त 5:50 बचते हुए सूरज का अस्तित्व इस वक्त मौजूद मैदान की दाईं ओर अपना अस्तित्व का प्रदर्शन हो करता हुआ समंदर की ओर अपना सफर तय कर चुका है। और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर रोशनी भी कम होती दिखाई देती हुई। और दाहिने हाथ तो ओवर द विकेट विजय गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। ये गेंद अच्छी गेंद थी, गेंद को इस वक्त उछालना चाहता, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में। और इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 11 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 in progress. Tidy bowling performance continuing here from the bowlers of Sarvagni Urva. And because of that, the batsmen of PFC Pakalpade just struggling for the runs. Around the wicket, Vijay अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, चार्जिंग डाउन द विकेट और गेंद को स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड खेल दिया। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान स्ट्रेट हिट एरिया पर। और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। दाहिने हाथ के बल्लेबाज है इस वक्त सामना करते हुए। ये गेंद फॉलो थ्रू में कैच छूट चुका है, लेकिन रनआउट का मौका जरूर है, लेकिन रनआउट का मौका भी गवा चुके हैं। फॉलो थ्रू में कैच वहां पर छूट चुका था और गेंद को छोड़ने के बाद रनआउट करने का मौका भी था जरूर। निशाना दागा विजय ने नॉन स्ट्राइकर एंड स्टंप्सों पर, लेकिन उनका निशाना चूकता हुआ। और बल्लेबाज इस बीच 1 रन सफलतम सुरक्षितम यहां पर पूर्ण करते हुए। 13 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 13 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। 4 ओवर्स पर साइड टू बी प्ले, 4 ओवर प्रति पारी में खेले जाएंगे। दूसरे दौर का पहला मैच यहाँ पर खेला जाता है। गेंद का दबा का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद को इस वक्त खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए थ्रो पहुंच चुका है इस वक्त, लेकिन थ्रो में इतना पर्याप्त दम नहीं कि वो बल्लेबाज से पहले नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंच सके। और इस बीच 2 रनों का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 15 रन और समानात इस वक्त जिन्होंने स्ट्रोक से खेला था पिछले गेंद पर लॉन्ग ऑन पर, और 2 रन वो बटोरने में सफल। तो 3 ओवर की समाप्ति, 3 overs completed. And after completion of 3 overs, still the batsmen of PFC Pakalpade searching for the right track. It's 15 for the loss of 2 wicket after completion of 3 overs. And now just a last over remaining in their innings. अंतिम ओवर का खेल बाकी। और गेंदबाज गणेश इस वक्त अंतिम ओवर प्रारंभ करते हुए। 5:55 यहाँ पर बच चुके हैं। इट्स 5:55 इन द इवनिंग। और रोशनी यहाँ पर ढलते हुए वक्त के साथ साथ कम होती हुई। और इस बीच पीएफसी पकलपादे की पारी का अंतिम ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ। फील्डिंग में जमावट करने के बाद गेंदबाज तैयार। काफी मात्रा में दर्शक इस मैच का मुआयना यहाँ पर करते हुए इस ढलते हुए शाम में। और लेगा तैयार, गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर खेल दिया। मिड विकेट की दिशा में गेंद पहुंचे, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। और थ्रो इस वक्त पहुंचता हुआ नॉन स्ट्राइकर एंड पर फील्डर द्वारा। और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4th एंड लास्ट इन प्रोग्रेस। और गणेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। समानात सामना इस वक्त करते हुए गणेश की गेंदों का। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले। और विकेट कीपर यतिन ये स्टंप आउट के मौके को यहां पर गवा चुके हैं, पूरी तरह चूके थे। और मौका जरूर था स्टंप आउट का, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद विकेट कीपर यतिन के हाथों से छूटती हुई। और बल्लेबाज अपने क्रीज पर अपने स्वस्थान पर वापस लौटते हुए
और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 16 रनों पर 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स नाउ इन द ओवर नंबर 4th एंड लास्ट इन प्रोग्रेस। ये गेंद के साथ समानात के लिए गेंद को इस वक्त खेल लिया खूबसूरती के साथ, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकलते हुए दूसरे के लिए बल्लेबाज और पत्थरों पहुंचा, निशाना टकराता स्टंप्सों पर तो निस्संदेह बल्लेबाज की पारी पर पर्दा गिर सकता था, लेकिन निशाना नहीं टकराया और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। 18-18 लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। तीन गेंदे अब बाकी उनकी पारी में, जस्ट 3 balls नाउ लेफ्ट इन देयर इनिंग्स और गणेश समानात के लिए अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, गेंद जाती इस वक्त लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन का इजाफा, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन मिलेगा और 2 रन इस बीच पूर्ण करते हुए 20 for the loss of 2 wickets and just a couple of balls now remaining in their innings. अंतिम 2 गेंदें इस वक्त बाकी, समानात इस वक्त एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार गणेश की गेंदों का। गणेश दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर और वाइड का इशारा, ऐसा कहना पड़ेगा गेंदबाज ने पहले ही भांप लिया था कि समानात विकेट से आगे निकल रहे हैं, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी और आखिरकार ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद निकल चुकी थी और वाइड का इशारा इस बीच अंपायर का। जैक्स ट्रॉफी 2022 के अंतर्गत इस श्रृंखला का 9वां मैच यहां पर खेला जाता हुआ, दूसरे दौर का पहला मैच, द फर्स्ट मैच ऑफ सेकंड राउंड इज नाउ गोइंग ऑन हियर। ये गेंद चूंकि एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बिहाइंड द स्टंप्स बाय विकेट कीपर यतिन और इसी के साथ समानात की पारी पर पर्दा यहां पर गिर चुका है। 21 रनों पर तीसरा विकेट खो चुका है, एक बेहतर पारी समानात ने खेली, कुल मिलाकर 13 रन उन्होंने बनाए, स्कोर 13 runs into his credit and after being playing a good knock for their side he is backing to pavilion and now the last ball, just a last ball remaining in the innings। अंतिम गेंद अब बाकी सिर्फ उनके पारी में। So the last ball of their innings is now coming up. और बल्लेबाज नए बल्लेबाज इस वक्त तैयार, शबीर उनकी पारी की अंतिम गेंद का सामना करने के लिए। गणेश दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए शबीर के लिए, यह गेंद शबीर ने गेंद को खेल दिया बैक टू द बॉलर की दिशा में और इसी के साथ यहां पर रन आउट हो चुका है पारी के अंतिम गेंद पर। शबीर की पारी समाप्त हो चुकी है पारी की अंतिम गेंद पर और इसी के साथ द इनिंग्स इज अप फॉर पीएफसी पक्कलपादे and they finished with 21 for the loss of 4 wickets in the stipulated 4 overs and now they set a victory target of 22 for Sarvagni Urva and as far as the required run rate is concerned, exactly 5.5 runs per hour they have to score for victory. That means 5.50 runs they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them 22 the target and let's see can they reach the target or not। और उनकी पारी सर्वाग्नि उर्वा की पारी यहाँ पर चंद लम्हों बाद शुरू होगी, तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद आज अंतिम बार हमारे काबिल दोस्त राज्य भाषा कन्नड़ में जनाब इरशाद काउर के साथ हम उपस्थित होंगे जब सर्वाग्नि उर्वा की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक, थैंक यू, धन्यवाद। ಧನ್ಯವಾದ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರೇ। ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ಪಕ್ಕಲ್ಪಾದೆ
ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಾಗ ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ 21 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾ 22ರ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕರ ಜೋಡಿ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ 64 ಬನಿಯಾನುದಾರಿ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ 19 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಆಟಗಾರ, ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಧನೂರವರ ಜೋಡಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಾಫ್. ನೋಡಿ 24 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 22 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಅಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥ ಪದದಿಂದ ತೆರೆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥ ಪದ ಆ ಅಸಾಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೊಂಡರೆ ಇಲ್ಲಿ 22 ಓಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 1+1 ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. 2 ಓಟಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಆರಂಭದ ದಾಳಿಯನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಾಫ್ ತನ್ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಸುಂದರತೆ ಆಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 2ರ ನಿಶಾನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಜಿಂಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುವಾಗ ಅರ್ಥಾತ್ 4 ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. ತನ್ಕೂಟದ 2ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಶ್ರಾಫ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರ ಗೂಟಪಾಲಕನ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 4 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರುವ ತಂಡ. ಕದನೋಡನ 22ರ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಾ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ 2 ಆಟಗಾರರು. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಧನೂರ್ ಅವರ ಜೋಡಿ. ತನ್ಕೂಟದ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಎಸೆತಗಾರರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಿಟ್ಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರರು. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4 ಓಟ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತ 21 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 18 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವಿಜಯದ ನಗೆಬೆ ಇರುವಂತ 3ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ತನ್ಕೂಟದ 4ನೇ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಾಫ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ 1 ಓಟ ಗೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಕೂಟದ 5ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಶ್ರಾಫ್. ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಕ್ಸ್ ಪಂಚಮುಗರು ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತ ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022 5ನೇ ದಾಳಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ದಾಳಿ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿರಿಷ್ಟದ ಖಾತೆಗೆ 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಹೆಚ್ಚಳತೆಯಾಗುತ್ತಾ 6 ಎನ್ನುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ದಾಪುಗಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಕೂಟದ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಶ್ರಾಫ್. ಅಶ್ರಾಫ್ ಟು ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಪ್ರದೀಪ್, ಧನು. ಸುಂದರತೆ ಆಟ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ, ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಓಟ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವೀಪ್ ವಿಭಾಗದ ಚೆಂಡನ್ನು ತಳ್ಳಿದ್ರು. 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಓಟ ಬಂದಾಗಿದೆ. 22ರ ಸವಾಲು ಅಶ್ರಾಫ್. ತನ್ಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಉಲ್ಟ ದಾಂಡಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಆರಂಭದ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆರಂಭದ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆ 7 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 22 ಎನ್ನುವಂತಹ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಾ ಆರಂಭಿಕರ ಜೋಡಿ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಆರಂಭದ 6 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 7 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬಳಿಕದ 18 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 18ರ ಮುಂದೆ 15 ಓಟ.
18 ಬಾಲ್ ಲೆಫ್ಟ್, 15 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಕದ ನೋಡೋಣ, 18ಕ್ಕೆ 15 ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಸೆತಗಾರರ ಪಡೆಗಳು ತನ್ನ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಅದೃಷ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟವನ್ನು ತೆರೆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಗೆದ್ದಂತ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುವವರು, ಯಾರು ಸೋಲುವವರು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ 6 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಿಕದ 18 ಚೆಂಡಿಗೆ 15 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಓವರಿಗೆ 5ರಂತೆ ರನ್ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡ ತನ್ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ದಾಳಿಯನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಬೀರ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಇವರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ದಾಳಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟ, ಸುಂದರತೆ ಆಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8. ತನ್ಕೂಟದ 2ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಬೀರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ರೈಟಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿ, ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ 1+1 ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಎನ್ನುವಂತ 2 ಅಂಕೆ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಓವರಿನ 2ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಶಬೀರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ 2ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ, 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ನಿಶಾನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ 24 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 22 ಎನ್ನುವಂತ ಸವಾಲಿನ ಗಂಟು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ 8 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 11 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಿಕ ತೃತೀಯ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಬೀರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಕೂಟದ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಬೀರ್ ಟು ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಧನೂರ್ ಅವರ ಜೋಡಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ 2 ಅನುಭವದ ಆಟಗಾರರು. ತನ್ಕೂಟದ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಶಬೀರ್ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಬಲವಾದ ಮನವಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪುರಸ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭದ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಧನು ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬುದ್ಧರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಆರಂಭದ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತ 15 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 10 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜಯಂತ್ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಧನು ಇವರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಯಂತ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 15 ಬಾಲ್ 10 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 10 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 15ರ ಮುಂದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟ, ಉಲ್ಟ ದಂಡಿನ ಮೂಲಕ 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 13 ಓಟವನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ SFC ಪಕ್ಕಲ್ ಪಾದೇವಶ ತನ್ಕೂಟದ 2ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ 13. ನೋಡಿ, ಜರ್ಗುಂ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಬಳಿಕದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರಿ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು, ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್.
ಕೊನೆಯ ದಾಳಿ ಫಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಎದ್ದಿಸಿದ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 13 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದ್ರೋಡೋಣ, 12 ಚೆಂಡಿಗೆ 9 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ರೋಚಕತೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥಾತ್ 4.5ರಂತೆ ರನ್ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಸೆತಗಾರರು ಚಾಣಾಕ್ಷವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 12ರ ಮುಂದೆ 9 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕದ 2 ತಂಡಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಗುಂ ಬಾಯ್ಸ್ ಶಾಂತಿನಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ NFC ಕುಪ್ಪೆಪದವು. 2 ತಂಡ ಆ ಬಳಿಕದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು. 12 ಬಾಲ್ 9 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 12 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 9 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೌಫಾಲ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಆರಂಭದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಅದೃಷ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ನೋಡಿ, ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ದಾಳಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು, ಸುಂದರತೆಯ ಆಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಎಚ್ಚರತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಬಾಲ್ 8 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 11 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 8 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ, ತನ್ನ ಕೂಟದ 2ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೌಫಾಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿ. ಅನುಭವದ ಆಟಗಾರರು ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಧನು, 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಜಯಾಂತ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ 2ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ. ಆಫ್ಸಿಕ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು 1+1 ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಎಚ್ಚರತೆಯಾಗುವಾಗ 16ಕ್ಕೆ ದಾಪುಗಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, 6 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂತ 11 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ. 11 ಬಾಲ್ 6 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ತನ್ನ ಕೂಟದ 2ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ನೌಫಲ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಖಾತೆಗೆ 1 ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಎಚ್ಚಲತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. 17ರಲ್ಲಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ನೋಡಿ, ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳು 6:10ರಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಆ ಬಳಿಕದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿರಿ. ಬಲವಾದ ಆಟ, ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ದಂಡನ್ನ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ 1 ಓಟ ಪೂರ್ತಿ. 2ರ ನಿಶಾನೆಯೊಂದಿಗೆ ಶರವೇಗವಾಗಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 19. 3 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 10 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 10 ಬಾಲ್ 3 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಶಬೀರ್ ನೌಫಲ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಫಲವಾದ ಹೊಡೆತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ 1 ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 1ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ. ಬಹುಶಃ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನೀರನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ, ದಯಮಾಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದಾಂಡುಗಾರ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ. ನೋಡಿ, 9 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 2 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 9 ಬಾಲ್ 2 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೌಫಾಲ್ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆ ಆಟ. 1 ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬಳಿಕದ 2 ತಂಡಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ. 2 ತಂಡಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ
ಒಂದು ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವಿಜಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬಳಿಕದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿರಿ. ನೋಡಿ, ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. So welcome back for the last and final match of the day number 1 of this most prestigious Jacks Trophy 2022, and wonderfully organized by Jacks Panjimugeru under the great leadership of Aloysius D'Souza and Sandeep Sandy Prasad leading from the front. They are taking this day number 1 very successfully. This is the 10th match of the day number 1 of this prestigious cricket tournament, and Jargam Boys Shantinagar takes on NFC Kuppepadau. So NFC, the batting fast. It looks like it's going to be a first wicket for the first delivery itself. The batsman going for the lofted off drive, not quite getting hold of that one properly. He got a top edge, and ball is ballooning up in the air, and short cow point fielder making no mistake at all. The very good start from the opening bowler. The first ball itself is strikes. Bowler name plays 15. Manish, who got a first wicket in the first ball. Harris is a batsman back into pavilion now with the second delivery. One more fantastic stuff there from Manish. He's just creating some problem for the batsman straight away with this good line, and then 3 overs game because of the shortage of time. A very good start there for Manish. 3 very good deliveries bowled. This time a wide ball, and previous delivery. This time nice looking drive towards the long off region. They're running hard, looking for the second. In comes the throw, but it's not a good end to throw. Wall party there in the deep long off region.
Not really returns that one in the right direction. It's a long distance for the fielder to return the ball into the hands of wicketkeeper. The batsman quite easily completed a couple of runs. Manish again, right arm over the wicket, he bowls. Lofted! And Walpadi just watching the ball going over him into the fence for the maximum. That was a really outstanding struck from the bat of Asif. It's not an easy stroke to play, I will tell you. The condition is not that much of easy for the batsman in the evening. Of course, still there is the breeze out here, but not a strong breeze. But clearing long off is not an easy job. It was a mighty struck there from Asif. So experienced campaigner Asif came into the right from the middle of the bat. That ball is struck firmly over deep long off for a maximum. Manish again, right arm over the wicket. Asif beautifully bowled. Excellent comeback. Nip back too much as batsman expecting that one. As compared to the previous delivery, this time ball is jagging back into the batsman, and Asif after getting 6, little bit in aggressive frame of mind, try to hit one more, but this time Manish is too clever to bowl that good line with the pace. The wicket number 1 is back into wicket number 2 is back into pavilion, and scoreboard is 9 on the board for the loss of 2 wicket. ದಯಮಾಡಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್. So new batter Aftal. Manish. Final time in this over. Right arm over the wicket, he bowls. Appeal for leg before wicket. One more wicket is back into pavilion. One more fantastic delivery there from Manish. Just excluding that 1-6 which came from the bat of Asif. Otherwise, this is really going to be a fantastic over from Asif. Picked up 3 valuable wickets. But in this format of a games, small format of a games, I think more than the wickets, I think the runs are so important. And they got 9, even though they lost 3 wickets, but no problem whatsoever. As far as the run rate is concerned, they got 9 valuable runs. Ashwit Kumar is a new batsman in. Little bit correction, Ashwit Kumar is the bowler. Ashwit is a new batsman. Sahil is the bowler. Second time in this over. Pass umpire Suresh Mudabidri. Down the leg stump, going to be a wide. With that extra scoreboard moves on to double figure 10. Any score around 25 to 30 is going to be a very good total to depend in this condition. Right, beautifully played that one down to mid wicket region. Running hard, pummel from the fielder. They're looking for that mistake from the fielder to convert that single into 2. Then couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 12 on the board for the loss of 3 valuable wickets. NFC Kuppipadau, they desperately wanted to get some runs. Again, lofted that one down to wideish long on, but this time just a single for the batsman. Scoreboard moves on to 13 now. So far in this over, Sahil conceded 4 runs in 3 deliveries. Sahil again. To Ashwit. Ashwit tried to flick that one off his legs. He got a single down to short fine leg region for an easy one. With that single, scoreboard moves on to 14 now. 14 for the loss of 3 wickets. Sahil again bowling with the short run up, right arm over the wicket. 3-1 that one. Straight to the hands of fieldsman, but a throw is not quick enough. It's an undrummed throw. It's very slow indeed.
You can't get result for that. That will give a lot of time for the batsman to reach his home quite safely. Little bit quick throw is required. And the fielder then the short mid wicket region is got allow the batsman to cross off for a single. With the addition of that single, scoreboard moves on to 15 on the board. Drives that one again down to Voidish long on. Again they're running hard. Again the misfield by the fielder. In comes the throw from the... Oh, what a fantastic job. He's gone. Oh, unrumped wicket Dhoni. Wicket keeper behind the stump without seeing the stump. Just a back and throw and accuracy. That was really a spot on there from the wicket keeper behind the stump. The Bashit is did a good job here to make that run out. 16 for the loss of 4 wickets, and even Gopi 2 overs completed, but not problem whatsoever. They lost 4 wickets, but they got 16 runs in this condition. I think 16 runs is definitely going to be a very good score in this condition. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, इन हालातों में 2 ओवर में 16 रन बनाना एक बेहतर शुरुआत कहलाएगी। और खासकर जो छक्का पिछले ओवर में बल्लेबाज ने लगाया था, उस छक्के की बदौलत यहाँ पर रन की गति में कुछ हद तक तेजी आ चुकी है। अब अंतिम ओवर उनकी पारी का बाकी, और देखते हैं सतीश इस अंतिम ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन बटोर पाते हैं। बेहतर शुरुआत गेंदबाजी के जरिए इस वक्त गेंदबाज ने की है बैक टू द बॉलर की दिशा में। और जहां तक गेंदबाज का सवाल है, अंसार जो कि इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं। दाहिना तो ऊपर द विकेट, ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त लंगआउट की दिशा में। गेंद जाती भी कोई फील्डर, हाँ फील्डर जरूर वहां पर मौजूद है। एक रन दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े लेकिन नहीं बच पाएंगे। और यहां पर विकेट गिर चुका है, विकेट नंबर 5, जबकि 17 रन बन चुके हैं। 17 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, और कुल मिलाकर 4 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी। रोशनी मैदान पर काफी हद तक कम हो चुकी है, शाम के 6:30 बजते हुए, और धूप बिल्कुल गायब हो चुकी है मैदान से, और धीरे धीरे अंधेरा सा यहां पर छाता हुआ, और हवा का रुख भी काफी हद तक धीमा पड़ चुका है इस ढलते हुए शाम में। यह गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया खूबसूरती के साथ है, लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल। और इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड करे, पॉइंट और कवर पॉइंट के दरमियान बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। मंगलूर मीडिया द्वारा इस श्रृंखला का सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यूट्यूब पर। और जहां तक सवाल है, ये गेंद रिवर्स शॉट इस वक्त खेलना चाहा, और यहां पर वाइड का इशारा, और विकेट भी गिर चुका है। विकेट नंबर 6 गिर चुका है, जबकि वाइड का रन भी यहां पर जुड़ चुका है। 19 नाउ, 19 रन 6 विकेट के नुकसान पर, 19 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। आज का अंतिम 10वां और अंतिम मैच जैक्स ट्रॉफी 2022 इनफैक्ट के अंतर्गत खेला जाता हुआ इस ढलते हुए शाम में। और कुल मिलाकर तो कल सुबह पहला मैच खेला जाएगा ठीक 8:30 पर। द फर्स्ट मैच ऑफ टुमारो विल बी स्टार्ट्स एग्जैक्टली 8:30 AM। और इस बार गेंद को खेल दिया लगौन की दिशा में, 1 रन दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, और इस बार गेंद को रिसीव करने में, थ्रो को रिसीव करने में असफल। 2 रन मिला, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर। इट्स 21 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, एंड नाउ जस्ट 2 balls रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। सिर्फ 2 गेंदें बाकी अब उनके पारी में। और जैक्स पंजीमुगुर ने इस शानदार प्रतियोगिता का यहां पर आयोजन किया है। यह गेंद बेहतरीन, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बिहाइंड द स्टंप्स, flicking the wickets very quickly after receiving the ball, and because of this brilliant stumping, 1 more wicket fallen. For NFC Kupe Padao, and now it's 21 for 7, and now the last ball remaining of their innings. अंतिम गेंद बाकी,
और अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज अंसार इस वक्त तैयार दाहिने हाथ के नए बल्लेबाज के लिए। ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त मिड विकेट पर, हाफ स्टॉप, और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता दूसरे के लिए बल्लेबाज दौड़ पर थ्रो पहुंचा, एब्सोल्युटली एक्यूरेट, और विकेट कीपर ने थ्रो को रिसीव करने के बाद विकेटों पर शाइन किया और उनका निशाना सही बैठता हुआ। एक शॉट का इशारा इस बीच, यानी कोई रन नहीं जोड़ा जाएगा। द इनिंग्स इज अप फॉर NFC Kuppe Badau. They finished with 21 for the loss of 7 wickets. And they stipulated 3 overs. And now they set a victory target of 22 now for Jergam boys. 22 they have to score just over 7 runs per over. That means in exactly calculation it's going to be 7.33 runs per over they have to score for victory. 22 of their stipulated 3 overs with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. And let's see can they reach the target or not. Or आज का अंतिम सत्र, अंतिम पारी आज की यहाँ पर शुरू होती हुई चंद लम्हों बाद, जब बल्लेबाज जरगम बॉयज शांतिनगर के यहाँ पर बल्लेबाजी पर उतरेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और आज अंतिम बार मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा जनाब इरशाद काउर को राज्य भाषा कन्नड़ में इस अंतिम पारी का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। आइए इरशाद, धन्यवाद, थैंक यू। ಧನ್ಯವಾದ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರೇ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗೋಪಿ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ನೋಡಿ 18 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 18ಕ್ಕೆ 22 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕರ ಜೋಡಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ 22ರ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಾ ದಂಡನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದ ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ಅನುಭವದ 2 ಆಟಗಾರರು. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನೋಡಿ, ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಬಾತೀಶ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ, 2 ಅನುಭವದ ಆಟಗಾರರು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಆರಂಭದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಂತೂ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 18ಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 22 ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಸೀತನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. 22 ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಸವಾಲು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಿದೆ. ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವಿಜಯದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜರ್ಗುಮ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಶಾಂತಿನಗರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಾಂತಿನಗರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತಾ ಆ ಶಾಂತಿನಗರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಕೂಟದ 2ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸಾರ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿಯನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರತೆ ಆಟ, ಜಾನ್ಮತನೆ ಆಟ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೇ ಆಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ 22 ಎನ್ನುವಂತಹ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬುದ್ಧರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ದಾಂಡುಗಾರ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಸಿತ್. ನೋಡಿ 16 ಚೆಂಡು ಉಳಿದಿದೆ, 21 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಆಟಗಾರ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ, ಸುಂದರತೆಯ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಂತ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ. 3ನೇ ಚೆಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಎಸೆತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಗೂಟಪಾಲಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಬೊಗಸಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ನೋಡಿ
3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 15ಕ್ಕೆ 21 ಎನ್ನುವಂತ ರೋಚಕತೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವಂತ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರರ ಪಡೆಗಳು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಓವರಣೆಸೆಯಲು ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಲ್ತಾಫ್. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಆಟ. 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2. ಆರಂಭದ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. 20 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂತ 14 ಚೆಂಡಿಗೆ. 14 ಬಾಲ್ 20 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾಂಡುಗಾರರ ಪಡೆಗಳೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ದಾಂಡನ್ನು ಬೀಸಿದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಯತ್ನವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲವಾದ ಆಟಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಗೂಟ ಪಾಲಕನ ವೈಫಲ್ಯ. 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಹೆಚ್ಚಳತೆಯಾಗುತ್ತಾ 3. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು? 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ದಾಳಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ತಾಫ್ ಟು ಅಲ್ತಾಫ್. ವಾಲಪಾಡಿ ಪರಿಸರದ ಪ್ರತಿಭೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಎನ್ನುವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಭೆ, ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ಪರಿಸರದ ಪ್ರತಿಭೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಅಲ್ತಾಫ್ ಕೊನೆಯ ದಾಳಿ ಫಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ದಂಡಿನ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1. ಆರಂಭದ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 4 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಉಳಿದಂತ 12 ಚೆಂಡಿಗೆ 18 ಎನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಕತ್ತಲೆ, ಸೂರ್ಯರಾಯನ ನಿರ್ಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಒಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವಟ್ಟು ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಖಂಡಿತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳು 6:35ಕ್ಕೆ ದಾಪುಗಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಬಾಲ್ 18 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 12 ಪಂದಿಲ್ 18 വേണം ವಿಜೇತ ಲಕ್ಷ್ಯത്തിനായി. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 16ಕ್ಕೆ 18 ಎನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 15 ಬಾಲ್ಗೆ 18 ಮಾಡು. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀಫ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಅನ್ಸಾರ್. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ, ಚಪ್ಪಾಲೆಯ ಸದ್ದುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 11ಕ್ಕೆ 18 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನ್ಸಾರ್ ನಿರ್ಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಾಶೀತ್, ಅನುಭವದ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ, ಪರಿಸರದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಾಶೀತನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಪಾಯದ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ರವರಿರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲು 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಾಶೀತನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತ 11 ಚೆಂಡಿಗೆ 18 ಎನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾಂಡುಗಾರರಂತೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂದು ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು, ಸೋಲುವವರು ಯಾರು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಫಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಗೆದ್ದಿಸಿದ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಹೆಚ್ಚಳತೆಯಾಗುತ್ತಾ 5ರಲ್ಲಿದೆ. 10 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 10ಕ್ಕೆ 16 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 10 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10ಕ್ಕೆ 16 ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ. ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿ, ತೃತೀಯ ದಾಳಿ, ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಎಸೆತ. ನೋಡಿ, ನೇರವಾಗಿ ದಂಡಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ ಅಲ್ತಾಫ್. ಇದಾಗಿದೆ ಅಲ್ತಾಫನ ಅರ್ಭಟ. ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಪಾಯದ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವಂತ ಅಲ್ತಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಆ ಜರ್ಗುಂ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರ ಚಪ್ಪಾಲೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂತ 8 ಚೆಂಡಿಗೆ 11 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 8 ಬಾಲ್ 11 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 8ರ ಮುಂದೆ 11 ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡು
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಂದು ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಪಾಯ ಆಗಬಹುದೇ, ಅಥವಾ ಆ ಸೋಲಿನ ಆ ವಿಜಯದ ಕಹಿಯನ್ನು, ವಿಜಯದ ಆ ಸುಹಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಲಿಸಬಹುದೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. 8 ಚೆಂಡು ಇದೆ, 8ಕ್ಕೆ 11 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀಫ್ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬೇಡದಂತಹ ಓಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ 2 ದಾಂಡುಗಾರಿಗೂ ಕಾರಣ 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಕೊನೆಯ 7 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 7 ಬಾಲ್ 10 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 7 ಪಂದಿಲ್ 10 ವೇಣಂ ವಿಜೇತ ಲಕ್ಷತಿನಾಯ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಊರಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಪರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತ ಅನುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಜರ್ಗುಂ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟದ ಸವಿರುಚಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ, ದೂರದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತ ಜರ್ಗುಂ ಬಾಯ್ಸ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಲಿಯಾಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲಿಯಾಸ್ ಶಾಂತಿನಗರ ಇವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ 7 ಚೆಂಡಿಗೆ 9 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 7 ಬಾಲ್ 9 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬಲವಾದ ಆಟ, ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ, ಈ ಮಧ್ಯೆ 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 1ಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 6 ಬಾಲ್ 8 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 6 ಪಂದಿಲ್ 8 ವೇಣಂ ವಿಜೇತ ಲಕ್ಷತಿನಾಯ್. 6 ಬಾಲ್ಗೆ 8 ಅವನ್. ನೋಡಿ, 6 ಚೆಂಡು ಇದೆ. 2 ತಂಡದ ಮಾಲಕರ ಹೆದಬಡಿತದ ಸದ್ದುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸೋಲುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನೆ. 6 ಬಾಲ್ 8 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬಾಲ್ ಕೊರಡಿಗೆ ಬೇಗ ಮಲ್ಗಿ ಕತ್ತಲಂಡ್. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡಿ. 6 ಬಾಲ್ 8 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ, ಈ ಊರಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ದೂರದ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅನುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ, ಅದರ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ಗಳಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ 6 ಚೆಂಡಿಗೆ 8 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಾಸೀತ್ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಸೀತನ ಉದ್ದರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, 5 ಚೆಂಡು ಉಳಿದಿದೆ. 5 ಬಾಲ್ 8 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಆದರೆ ಈ ಅಲ್ತಾಫ್ ಎನ್ನುವಂತ ಅಪಾಯದ ಆಟಗಾರ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಪಾಯ. 5ಕ್ಕೆ 8 ಎನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಕಾರ್ಕಳ ಪರಿಸರದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಸುಂದರವಾದ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಉಳಿದಿದೆ 5 ಚೆಂಡು 8 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 1ಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಸೀತನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ಅಲ್ತಾಫನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ದಂಡು. 4 ಬಾಲ್ 7 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 4ರ ಮುಂದೆ 7. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸೋಲು ಯಾರಿಗೆ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗಾಗಿದೆ ಸೋಲು, ಯಾರಿಗಾಗಿದೆ ಗೆಲುವು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೂಟದ 3ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಾಸೀತ್. 3ನೇ ಬಾರಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನ, ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇತ್ತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಲೆಯ ಸದ್ದುಗಳು. ಖಂಡಿತ ಆ ಚಪ್ಪಾಲೆಯನ್ನು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಬಾರಿಸುವಂತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ. 3ಕ್ಕೆ 7 ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳನ್ನೊಮ್ಮೆ ತೆರೆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮಿಂದ ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎನ್ನುವುದೇ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು, ಸೋಲುವವರು ಯಾರು, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನವರೆಗೂ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗದಂತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವೆಂದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 3 ಇದೆ ಬಾಕಿ. 3 ಚೆಂಡಿಗೆ 7 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ಫಯಾಜ್. ಇಂದು ಜರ್ಗುಂ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ
ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೋಡಿ, 3 ಚೆಂಡು ಇದೆ, 3ಕ್ಕೆ 7 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು. ಕತ್ತಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3ರ ಮುಂದೆ 7, 3 ಬಾಲ್ 7 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 3 ಪಂದಿಲ್ 7 ವೇಣಂ. 3 ಬಾಲ್ಡ್ ಎಜ 7 ಔಟ್. ಬಹುಶಃ 4ನೇ ಚೆಂಡು, ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಸಿತ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವಾಹನದ ಚಾಲಕರು ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಕೊಡಿ. 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 3ರ ಮುಂದೆ 7 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಖಾತೆಗೆ 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಅದೃಷ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಖಂಡಿತ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು, ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಹೀಗೆ ಈ ಅದೃಷ್ಟ ಎನ್ನುವಂತ ಪದವಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ. ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರು ಚಿನ್ನ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರು ಸುಣ್ಣ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3ಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 6, 3 ಬಾಲ್ 6 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅರ್ಥಾತ್ ಎತ್ತ ಕಡೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ, ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನ ಆದರೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಬಾಲ್ 6 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 2 ಚೆಂಡಿಗೆ 6 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಕಾರ್ಕಳ. ನೋಡಿ, ಮನ್ಸೂರ್ ಕಾರ್ಕಳ ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರತಿಭೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವಿಜಯದ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಿಸಿದಂತ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರನಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜರ್ಗುಂ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗೆ ಬರಿಸಬಹುದೇ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಾಶೀತ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಬಾಣಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕೆಲಕಾಲ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಸುಂದರತೆಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಚೆಂಡಿನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಿದಂತ ಮನ್ಸೂರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಲೈನ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆದ್ರು, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಉದ್ದರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳುತ್ತಾ ಔಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ನಿಶಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ನಿಶಾನೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಇದೆ, 6 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಯಾಸ್ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ 1ಕ್ಕೆ 6 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು? 1 ಬಾಲ್ 6 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವಿದು. ಸುಂದರತೆಯ ಕ್ರೀಡೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕತ್ತಲೆ ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಅಡಚಣೆ, ಅದರ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನ್ಸೂರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು. ಖಂಡಿತ ಕೊನೆಯ ದಾಳಿ, ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ವಿಜಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಜಯದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ NFC ಕುಪ್ಪೆ ಪದವು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜರ್ಗುಂ ಬಾಯ್ಸ್ ಶಾಂತಿನಗರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆಯ ದಿನ ಆರಂಭ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸತೀಶ್ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಹಗಾರ ಸತ್ಯ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿದಂತ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನೋಡಿ, ನಾಳೆ 2ನೇ ದಿನ 8:30ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳಿಕದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾಳೆಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2 ತಂಡಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು. 8:30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸರಿ ಸಮಯ 8:30.